welcome. Welcome to Unacademy Live NTA UGC Net with AKSRajveer. So hey guys, audio and video please let me know on comment box. Hurry up. If audio, video, everything is clear guys, so चलिए जल्दी से बता दीजिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में और फिर शुरू करते हैं गाइज इस क्लास को. यू ऑल आर मोस्ट वेलकम. और कैसे हैं आप, क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में? सो सबसे पहले गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग रिगार्डिंग द सेशन, और इसके बाद जो भी बातें होंगी आगे की वो करेंगे. So guys, this one class is important for every single aspirant. You are preparing for UGC NET exam, SET exam, GATE exam, or guys like TGT, PGT, DSSV, NVS, KVS, GIC lecturer, any exam guys of literature. If you are preparing for any of the exam guides, so then this class is important for you, because in this class I'm going to cover forms of poetry and different kind of poetic devices guys. And believe me, after going through this one marathon session, you will get something guys. You will never regret the time you are going to invest in this session. So guys, first of all, before starting this one session, I would like to introduce myself. I am AKSRajveer, your educator on Unacademy platform. Unacademy is India's largest learning platform that provides you live interactive classes of India's top educators on both the papers of UGC NET paper 1 and paper 2 as well. If you want to watch free special classes on Unacademy platform, so then guys, download Unacademy the learner app from Google Play Store and then apply code Rajveer Live to access free special classes on the platform. And another one important information guys, we also are offering paid courses for UGC NET, for UPHESC courses guys. So do not forget to take Unacademy Plus subscription. What you will get guys on Unacademy Plus subscription? On Unacademy Plus subscription, you will get live interactive classes by India's top educators and doubt solving sessions and everything. Another information is guys, you have just guys, I think a few hours. This is the last day to go, because guys, price hike is going to take place on 1 month subscription and 3 month subscription. So if you want to take Unacademy Plus subscription, so this is the right time to choose Unacademy Plus and enjoy live classes by educators. So let's get started with this one session. Okay guys, yeah. Now guys, because I'm going to talk all about the forms of poetry. और जब भी guys हम बात करते हैं ना forms of poetry की, so we have different forms guys. हमारे पास बहुत सारे forms हैं. Here forms refers to types: ode, ballad, lyric, epic, mock epic, haiku, and ballad, and guys other forms of poems are there. So in this session guys, I'm going to discuss with you different forms of poem guys. What are the different forms of poems? So guys, stay tuned रहे मेरे साथ. एक और information guys मैं आपको दे दूं. In this session you are also going to learn the metrical pattern and बहुत कुछ learn करेंगे अगर आप tuned रहेंगे तब. और by the way, अगर tune नहीं रह पाए so then नहीं learn करेंगे. Simple है guys. So let's get started. सबसे पहले guys हम बात कर लेते हैं the very first guys जो टॉपिक आज मैं लेने वाला हूं. So I'm going to start with the sonnet. Sonnet guys, I think you all are familiar with the sonnet. But guys, क्या sonnet को पढ़ने से पहले हमें ये नहीं जानना चाहिए what the poetry is? According to Samuel Taylor Coleridge, poetry is what guys? The best word in the best order. Guys, spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquility. It means guys, we have another one definition of poetry by
William Wordsworth, a great romantic poet. And in my slide, as you can see, the definition. What the definition is? Poetry is a type of literature that conveys a thought, describes a scene, or tells a story in a concentrated lyrical arrangement of words. And poems can be structured with rhyming lines, meter, and the rhyming and emphasis aligned based on syllabic beats. Poems can also be free from which follows no formal structure. It means guys, दो टाइप की poems हो सकती है. Those bounded with rhyming pattern, with the syllabic structure, and another types of poem is also there that are free from rhythmic structure, and another one thing guys, from syllables. It means poetry is a kind of composition. In the composition you can see a scene, a story, or a particular thought guys that is arranged in words in order guys. और ये order rhythmic हो सकता है, नहीं भी हो सकता. बहुत सारे लोग इस समय सोच रहे होंगे गाइस कि पोइट्री एंड विदाउट रिदम, या गाइस पोइट्री विदाउट रिदम पॉसिबल है. एंड हाउ गाइस पोइट्री विदाउट रिदम इज पॉसिबल? तो इसका मेरे पास आंसर है. यू हैव फ्री वर्ड्स, नो राइम, नो मीटर, नो राइम, no meter guys, and we also have prose poetry guys, a kind of poetry that is written in prosaic way. So let's get started with forms guys. So सबसे पहले हम कवर करेंगे sonnet. What does a sonnet mean guys? क्या होता है sonnet? Basically ये sonnet है तो बहुत easy, but guys आप एक चीज तो समझते ही होंगे, बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन मिलता है इसका सोनेट का. या गाइस वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सोनेट्स, बट मैं दो टाइप की सोनेट्स की बात करूंगा यहां पर. ओनली टू टाइप्स गाइस. सोनेट इज अ 14 लाइन्स पोएम. मींस गाइस 14 लाइन्स वुड बी देयर, एंड देयर आर टू टाइप्स. बेसिक गाइस टू टाइप्स. अच्छा बेसिक टू टाइप्स क्यों? बिकॉज वी हैव इटालियन that came from Italy, and the propounder was Petrarch. Dante, Petrarch, Dante ने भी कई sonnets लिखा है. Petrarch, so he also composed sonnets. And then we can see guys Shakespearean sonnet. हाँ, Shakespearean sonnet को guys हम English sonnet बोलते हैं. And guys you must be wondering, in England, sonnet was introduced by Thomas Yat, guys. This is the name. In England, the sonnet was introduced by Thomas Yat because, guys, he translated sonnets by Petrarch. Thomas Yat translated sonnets by Petrarch, and in England, he introduced sonnet pattern. But, guys, आपको wonder नहीं होता? Why Thomas Yat is not known as the guys English basically guys Thomas Yat की जो sonnet का pattern है, why guys that pattern is not considered as English sonnet? Why Shakespeare? So guys इसके पीछे एक बड़ी कहानी है and interesting है. What is that? Thomas Yat guys, he introduced the sonnet in England, but you must remember guys, without making difference between Italian and English. And Shakespeare, so he was clever enough. What he did, just guys he imitated this sonnet pattern, and yes he made a few changes. Yes guys, with the help of a few changes. What he did guys, because Petrarchan sonnet, so that was divided into 8 plus 6 pattern. Means 8 means octave and 6 means sestet. Octave and sestet.
But guys, you know, Shakespeare, what he did, so he changed the pattern. And the rhyming scheme, guys, you know, the rhyming scheme of Petrarch and Sonnet, that was A, B, B, A. You can see A, B, B, A, A, B, B, A, and C, D, E, C, D, E. 8 and 6. Then, guys, Shakespeare, so he was clever enough and just he changed the way. And that's why Shakespearean sonnets are known as English sonnets. Got it? And you can see, what is this? You can see William Shakespeare, so he composed a number of sonnets and he made a difference. How, guys? So 4 plus 4 plus 4 plus 2 means quatrain, quatrain, and quatrain. So 3 quatrains and 1 concluding couplet. In the last 2 lines of Shakespearean sonnet, you can see the gist of the sonnet or the poem. The gist of the poem that can be seen. So that's why, guys, Shakespearean sonnets are known as English sonnet. Yeah, Thomas Yat, he was also followed by one more man, Earl of Surrey. So Earl of Surrey and Thomas Yat, you know, guys, both of them, they published a sonnet collection that is known as Songs and Sonnet, published by Richard Total. And Richard Total was also, guys, clever enough. What he did, he added his name. And you know, guys, that become Total's Miscellany, the collection of the sonnet known as Total's Miscellany. How interesting it is, guys. क्योंकि सब लोग फेमस होना चाहते थे, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से. Shakespeare, so he changed the pattern. Petrarch, guys, so he adopted, basically, guys, you know, he composed, he started the composition of sonnets, guys, and then yet Thomas Yat, so he, you know, guys, imitated and just translated Petrarchan sonnets, and later on Shakespeare, he changed the way. And बहुत बाद में, guys, अगर मैं बात करूं, so Miltonic and Spenserian sonnets are also there. अगर आप जानते हो, so yes, Spenserian and Miltonic sonnets are also there. Hey guys, so वैसे मैंने तो आपको काफी अच्छी बात इंफॉर्मेशन दे दी. Now guys, थोड़ा सा और भी अच्छी इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए. I hope so guys, बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा. Sonnet is what, है ना? एक और sonnet जान लीजिए प्लीज. That is important guys. मैं देखिए बिना इंपॉर्टेंट वाली बात कभी नहीं आपसे करता. और हाँ, मैं आपको बता दूं गाइज, विलियम शेक्सपियर की सोनेट का जो राइमिंग स्कीम है ना, इट्स टू इजी गाइज. बट डू नॉट फॉरगेट गाइज, आई एम टेलिंग यू कि आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जान करके हैरानी होगी कि यस, twice on UGC net exam, yes, A B C D E F G G, twice on UGC net exam, Shakespearean sonnet, a rhyming scheme of Shakespearean sonnet. Got it? तो ऐसी बात नहीं. Now guys, I am going to talk all about curtal sonnet guys. CURTAL, curtal and sonnet. Why guys this is known as curtal sonnet? As I have already told, 14 lines are there in a sonnet, but in curtal sonnet guys, you can say 10 and half lines. One thing guys, 10 and half lines. अगर मैं guys इसको 10 and half line की जगह पर अगर इसे 11 lines कह दूं तो भी चलेगा guys. No problem. Say it, 11 lines are there. 10 and half or 11 lines guys. And curtal sonnet was developed by whom? So G.M. Hopkins. G.M. Hopkins was the man who developed different kind of sonnet that are known as curtal sonnet guys. Now finally हम इस चीज को समझ चुके हैं, sonnet pattern को. So मुझे नहीं लगता कि अब इस पर ज्यादा डिस्कशन होना चाहिए. इनफ है इतना. इसके बाद की जो चीजें हैं आगे समझिएगा. हाँ, वन मोर थिंग गाइज, आयम्बिक पेंटामीटर यहां पर यूज किया जाता है. IAMBIC, आयम्बिक पेंटामीटर. Iambic pentameter is the most, you know guys, most used meter in English poetry or in English language, है ना? Yeah. Now guys, this is the times कि हमें learn करना चाहिए एक
और इंपॉर्टेंट फॉर्म के बारे में, एंड दैट इज नोन एज लिरिक पोइट्री गाइस। अच्छा, बहुत बार आपने एक चीज सोचा होगा, इट्स अ लिरिक, इट्स अ लिरिक गाइस। अच्छा, लिरिक आप किसे कह सकते हैं? लिरिक आप किसे कहेंगे गाइस? लिरिक इट्स अ पोएम, कोई भी पोएम हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम गाइस शॉर्ट पोएम्स होती है। It is a form of poetry that is subject of being sung to the accompaniment of a musical instrument. इसकी एक और डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, that can be sung in accompaniment of a lyre. Got it? That can be sung in accompaniment of a lyre. Lyre means musical instrument. Musical instrument. Any of the poem guys, please do remember, any of the poem, देखिए, and or that expresses intense personal emotion in a manner suggestive of a song. Personal emotion. Got it? If there is a poem, तो एक गाइस मैं क्वेश्चन आपसे ही पूछ लेता हूं। आई वुड लाइक टू आस्क अ सिंगल क्वेश्चन टू ऑल माय लविंग क्यूटी डियर स्टूडेंट्स, और ये मेरा जो क्वेश्चन है ना गाइस, तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है आपके लिए, ठीक है? एंड इंटरेस्टिंग कैसे है इसको ऐसे समझिए। देखिए गाइस, आपको मैंने सारी चीजें बता दी, अब आप मुझे प्लीज ये बताएं कि क्या एक गाइस एक बैलेड लिरिक भी हो सकता है? अगर कोई मान लीजिए बैलेड है तो क्या वो लिरिक हो सकता है? ओड, क्या वो लिरिक हो सकता है? या फिर गाइस कोई अदर फॉर्म है, सो क्या वो एक लिरिक हो सकता है? यस और नो? गाइस प्लीज आप जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट, एंड आई वांट टू नो गाइस कि क्या वो लिरिक हो सकता है या नहीं। मुझे जानने की बहुत जरूरत है, एंड प्लीज डू लाइक द सेशन और शेयर कर दीजिए, एक शेयर गाइस। आज आपकी 1.5 आवर क्लास चलेगी। यस, सो आई एम आस्किंग गाइस कि क्या वो, इफ इट इज अ बैलेड, तो क्या वो लिरिक हो सकता है? या गाइस देखिए, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लाइक सॉलिटरी रिपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, इज इट अ लिरिक, ओड और बैलेड, और वॉट एवर गाइज इट इज? ओड है, बैलेड है, लिरिक है, क्या है ये गाइज? ऐसा पूछा गया है। सो बेसिकली गाइज, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें एनालाइज करना होता है गाइज। गॉट इट? एनालाइज करने की जरूरत होती है कि क्या है एग्जैक्टली ये। अच्छा, एक चीज देखिए गाइज, इंटेंस पर्सनल इमोशन। If there is a poem, it's a short one poem, longer ना हो, and having intense personal emotions, okay, and its subject, guys, the poem that can be sung with in accompaniment of lyre, तो उसे हम कह सकते हैं कि yes, it's a lyric। और आपके एग्जाम में गाइज इंस्टीड ऑफ बैलेड, ओड, लिरिक को आंसर माना गया था कि yes, it's a lyric। और देखिए, मैं नहीं कुछ कह सकता इसके मामले में, बट ये डिसीजन था फाइनल आयोग का गाइस। गॉट इट? या ये आयोग का डिसीजन था कि इट्स अ लिरिक। गॉट इट? इट्स अ लिरिक। बेसिकली देखिए, जब मैं किसी फॉर्म की बात करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यस गाइज, जो ये पोएम है, अगर फॉर्म्स के साथ में देखूं, सो पोएम इज गाइज इज अ बैलेड एंड अ लिरिक एज वेल। मैं ये आंसर देता हूं, और कई बार स्टूडेंट्स मुझसे डिस्कशन करते हैं, सर व्हाई दिस इज बैलेड एंड एज वेल एज लिरिक? सो देन मेरा जो आंसर है, सो मैंने आंसर किया कि हे प्लीज, इट्स टॉक इट, यू कैन सी गाइज, इंटेंस पर्सनल इमोशंस आर देयर इन द पोएम सॉलिटरी रिपर। वर्ड्सवर्थ इज टॉकिंग अबाउट डू नॉट डिस्टर्ब हर। yes guys, behold her single in the field, and then he is talking about do not disturb her, pass gently from there without creating any kind of disturbance। guys, टेनिशन का ब्रेक guys, ये एलिजी भी से आप कंसीडर कर लीजिए गाइस।
बिकॉज यहां पर एलेजाइक टोन है, यस, but as well as guys it's a lyric, because guys the poem can be sung in accompaniment of a lyre. याद रहेगा प्लीज, बिकॉज यहां पर गाइज एलेजाइक टोन है. ही वॉज टॉकिंग ऑल अबाउट द डेथ ऑफ हिज डियरेस्ट फ्रेंड AHH अर्थर हेनरी हैलम. मे बी गाइज आपको क्लियर हो और मे बी आपको क्लियर ना हो, दोनों कुछ हो सकता है, बट मैंने गाइज अपने बेस्ट एंड बेस्ट व्यूज, जो भी मेरा बेस्ट व्यू है, सो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया. गॉट इट? क्लियर? AHH इट्स अ लिरिक. आगे चले थोड़ा सा. नाउ गाइज वी हैव अनदर वन फॉर्म एंड दिस इज नोन एज ओड. वाओ गाइज, ओड. हाँ, बेसिकली गाइज ओड इज व्हाट? ओड इज रियली एन ऑसम फॉर्म गाइज. जैसे ही हम ओड को याद करते हैं, हमारे सामने कई सारे नाम आते हैं. एंड गाइज अमंग द मोस्ट फेमस नेम्स, जॉन कीट्स का नाम जरूर आता है गाइज. ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू वेस्ट विंड बाय शैली. एंड गाइज वी हैव अ नंबर ऑफ पोएम्स, बट स्टिल हम कई बार परेशान रहते हैं, यार क्या है ओड गाइस? गॉट इट? व्हाट द ओड इज, ये कई बार हमारे लिए क्वेश्चन बन जाता है गाइस, है ना? यस. बेसिकली ओड इज अ लिरिक पोएम गाइस. अ पोएम, लिरिक पोएम बेसिकली गाइस, with moderate length. You must remember guys, moderate length. याद रखिएगा guys. It's a lyric poem, moderate length, subject. So guys, you know, subject should be serious one, and the style, elevated style. You know guys, a kind of, you know guys, elevated style, बहुत ही ज्यादा, you know guys, descriptive best style should be there. And stanzaic pattern, so जो elaborate करेगा, बहुत सारी चीजों को guys elaborate करता है. Yes, means an ode is going to praise a thing, art, और हो सकता है guys किसी person के लिए हो guys. Got it? Clear? Yeah. So ओड बेसिकली गाइज, ये जो ओरिजिन की अगर मैं बात करूं, ओरिजिन ऑफ ओड्स, ओड आप समझ गए होंगे गाइज. इट्स ऑल अबाउट प्रेज, कि जहां पर गाइज आपके लिए प्रेज होगा किसी के लिए, मतलब वो प्रेज हो सकता है, या फिर किसी थिंग्स के लिए हो सकता है गाइज, या फिर हो सकता है किसी अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के लिए. या और देखिए जो ओड होता है गाइज, वो दो टाइप का ओड बेसिकली देखा गया है. इन इंग्लिश लिटरेचर यू कैन सी टू टाइप्स ऑफ गाइज, टू टाइप्स ऑफ ओड्स. अच्छा गाइज, ये दो टाइप की जो ओड हैं तो कौन कौन सी हैं, मैं यहां पर नाम लिख देता हूं गाइज. एक तो है होरेशियन, HORATION, होरेशियन. अनदर वन ओड, सो दैट इज गाइज PINDARIC, पिंडारिक ओड. होरेशियन एंड पिंडारिक, दो टाइप की गाइज ओड होती है. ओड कम्स फ्रॉम ग्रीक एइडेन गाइज. अच्छा, ये वर्ड याद रखने की जरूरत है आपको, है ना? AEIDEIN, एइडियन, है ना? अच्छा, क्यों याद रखना है इसको? आपके एग्जाम में ट्रेजेडी गाइज किस वर्ड से आया? TRAGEDY. कॉमेडी गाइज ग्रीक वर्ड क्या है उसका? ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी. गॉट इट? सो दैट्स व्हाई इस ग्रीक वर्ड को भी याद रख लीजिए. एंड व्हाट डज इट मीन? सिंग और चैंट, एंड बिलोंग्स टू लॉन्ग एंड वेरिड ट्रेडिशन ऑफ लिरिक पोइट्री, एंड ओरिजिनली अकम्पनीड बाय म्यूजिक, डांस and all. And during romantic time period, a number of poets was there. A number of poets, Keats, Shelley, Wordsworth. A number of poets was there, guys. You know, Collins, Ode to Evening. A number of poets was there. Those who composed poems.
ओड्स गाइस, है ना? या सो ओड बेसिकली मैंने आपको बताया, जैसे आप एक अच्छा सा एग्जांपल लीजिए, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ये वाला एग्जांपल लीजिए प्लीज। अ पोएम इज देयर ऑफ मॉडरेट लेंथ, ना ज्यादा बड़ी है और ना ही ज्यादा छोटी है। Elevated style, guys, praise all about urn. Those encrypted paintings. There are two paintings, guys. Basically, there are two paintings. One, so that is of sacrifice, and another one, mad pursuit of lover. The mad pursuit of lover. There are two paintings, and guys, the poet is describing those two parts of the urn. And finally, Keats is describing immortality of art and mortality of human being. Isn't it? Yeah, it is. So guys, ओड एक मॉडरेट लेंथ की पोएम होगी, न ज्यादा छोटी न ज्यादा बड़ी, एलिवेटेड इन स्टाइल, एंड गाइज यहां पर सीरियस सब्जेक्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम गाइज, यू विल फाइंड। या it can be generalized as a formal address to an event, person, thing that is not present, basically that is not present, उसके लिए भी इसे एड्रेस किया जा सकता है। You can see guys, ये जो सब्जेक्ट है, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, basically this is a poem by William Wordsworth, and William Wordsworth in this poem, what he is going to discuss, he is talking all about child guys and his life, which kind of pattern is there, बहुत सारी चीजों के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ बात करते हैं। सो ओड के बारे में बेसिकली आपकी कुछ चीजें तो क्लियर होंगी ही गाइज। यस, नाउ गाइज माय क्वेश्चन इज कि होरासियन ओड बहुत पॉपुलर है या पिंडारिक ओड बहुत पॉपुलर है? और एक और टाइप आपने सुना होगा ओड्स का गाइज, रेगुलर REGULAR and irregular IRREGULAR, irregular odes। अगर आपने सुना है सो प्लीज गाइज, मेरा रिक्वेस्ट है कि बताएं व्हाट आर दीज रेगुलर एंड इरेगुलर। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज वन मोर थिंग, पिंडारिक ओड का जो कंस्ट्रक्शन होता है ना गाइज, that is also different. What you can see in Pindari code? In Pindari code, guys, एक चीज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, and that is strophe, antistrophe, and epode. These are the steps. These are the steps that can be seen in a Pindaric ode. और गाइज ये रेगुलर ओड और इरेगुलर ओड्स क्या है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है गाइज, कीट्स रोट विच काइंड ऑफ ओड्स, रेगुलर, इरेगुलर, और ए एंड बी, और नन ऑफ दीज। सो गाइज आप प्लीज लर्न कीजिएगा व्हाट आर रेगुलर ओड्स एंड व्हाट आर इरेगुलर ओड्स। मैंने आपको यहां पर छोड़ दिया कि आप खुद लर्न करें। अब आगे चलें, आ जाइए गाइज। Then guys, we have another one form of poems, and this is known as ballad guys. Now guys, what are ballads? So ballad basically guys, इनको आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे फोक कल्चर में आपको सॉन्ग्स मिलते हैं, है ना? अगर आप फोक कल्चर को देखें या फोक सॉन्ग्स को देखें, that are basically known as ballad. Ballad is a type of poem that is sometimes set to music, and ballads have a long history and are found in many culture. And the ballad actually began as a folk song or continued today in popular music guys. Yes, ballad. Now, ballad की अगर मैं बात करूं guys, so ballads बेसिकली एक वर्ड है इनके लिए, बैलर, BALLRE, बैलर गाइज एक वर्ड है। यस, एंड दीज ट्रांसमिटेड ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, वन जनरेशन टू अनदर वन जनरेशन गाइज। बैलेट जो पास हुए, सो यस, generation to generation. And what are the common themes? What are the common themes of ballads? Common themes like
लव, लव गाइस। अच्छा कैसे, एक एग्जांपल दूं मैं आपको। ला बेल डेमसन्स मर्सी, द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम इज लव। द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम इज लव। गॉट इट? Religion, guys. Religion. So, religion, that can be also the subject of the poem. And tragedy. Any tragic event that takes place. Like, क्योंकि guys जैसे आपके जो विलियम वर्ड्सवर्थ है एंड सॉलिटरी रीपर गाइस, सॉलिटरी रीपर। सो सॉलिटरी रीपर में विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक बात कही थी, अगर आपको याद हो गाइस, है ना। सॉलिटरी रीपर में विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक बात कही थी, दो आई रियली डोंट नो द लैंग्वेज द लैश हाईलैंड लैश इन सिंगिंग, बट आई कैन गेस सी मे बी टॉकिंग अबाउट समथिंग. What she may be talking about? She may be, singing about some legendary incidents or some legendary stories and all. So guys, yeah, you can see legends are also there, and domestic crime, and sometime the subject political, it may be too, guys. Then you have, guys, the rhyme of ancient mariner. You can see supernatural elements are there. In rhyme of the ancient mariner, you can see supernatural elements are there. What I mean, guys, so different ballads are there and having a religion, crime, love and other kind of subject matters. Basically जो ballad का construction होता है guys, वो होता है quartane में. Quartane means, guys, having 1, 2, 3, 4 lines, guys. Quartane means having 4 lines. Okay, guys? Yes. And the meter जो इसमें यूज किया जाता है always, most of the time, guys, you can say iambic pentameter. Iambic pentameter, as I have already told, this is the commonest meter. बिल्कुल common meter है, मान लीजिएगा इस मेरी बात को. Got it? Common and common meter it is. Got it? एक चीज और आपको याद रखना है प्लीज, रिफ्रेन कैन बी ऑल्सो सीन. आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्लीज रिफ्रेन, एंड व्हाट डज रिफ्रेन मीन. तो जब हम गाइस रिफ्रेन की बात करते हैं, सो रिफ्रेन इज व्हाट, रिपीटिशन ऑफ सेम लाइन्स, सम लाइन्स गाइस. जैसे कि होता ना, आपने जो बॉलीवुड सॉन्ग सुने होंगे, तो जैसे 2 लाइन ऐसे चलेगा, फिर इसके बाद रिपीट होगा, फिर 2 लाइन ऐसे चलेगा, फिर इसके बाद रिपीट होगा. Isn't it? Yeah, it is. And that is known as refrain. And the rhyming scheme of ballad stanzas, that may be different. But most of the time AB can be seen. But ये जो rhyming scheme है guys, it may be A B guys, ऐसे भी हो सकती है. और इट मे बी गाइज लाइक कि जैसे एक और डिफरेंट हो सकता है इसका पैटर्न, जैसे ए बी हो गया गाइज. सम टाइम गाइज की पूरी लाइंस को मैच कराया जाता है. सो डिफरेंट पैटर्न, बट द मोस्ट कॉमन राइमिंग स्कीम इज ए बी गाइज. ये सबसे ज्यादा पॉपुलर राइमिंग स्कीम है. Got it? Popular rhyming scheme. And you can see कि ये जो ballads है, ballad example, John Keats, La Belle, Jameson's Mercy, guys. अच्छा, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया, है ना guys? तो मैं आपको एक दूसरी वाली चीज बता दूं फटाफट से. बैलेड जो होती है वो डायरेक्टली गाइस एब्रप्ट ओपनिंग होती है उनकी. प्लीज डू रिमेंबर कि जो बैलेड होती है गाइस, उनकी एब्रप्ट ओपनिंग होती है, ABRUPT, एब्रप्ट ओपनिंग. क्लियर? एब्रप्ट ओपनिंग. एंड गाइस, जैसे अब आप देखिए जो ला बेल डेमसन्स मर्सी है, व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म, इजंट इट? Isn't it guys, कि a kind of opening की जो abrupt opening हो, directly open हो रहा है guys. Yes.
एंड यू कैन ऑल्सो सी गाइज कि यहां पर जो इफेक्ट है सो बहुत अच्छा है. इफेक्ट गाइज, गॉट इट? या इफेक्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको देखने के लिए इन बैलेट गाइज. नाउ बेसिकली मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया. बैलेट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी, जो भी मुझे पता थी मोस्ट प्रोबेबली. सो बैलेट के बारे में मैंने आपको बता दिया गाइज. प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट वन. सो गाइज अब मैं थोड़ा सा कुछ डिफरेंट फॉर्म्स की बात करूंगा गाइज. दो वी हैव एपिक, फ्री वर्ड्स, मॉक एपिक, है ना, बहुत सारे हमारे पास हैं. सो उन सारी चीजों की बात करेंगे, बट एक्रोस्टिक की बात करते हैं गाइज. व्हाट इज एक्रोस्टिक? Acrostic, guys, it is a poem in which the first, last, or other letters in a line spell out a particular word or phrase. The most common and simple form of this type of poem is where the first letter of each line spell out the word or phrase. जैसे गाइज आपका जो एक्रोस्टिक है, इट्स अ काइंड ऑफ गाइज पोएम कि जहां पर आपको बहुत सारा वेरिएशन और सिमिलरिटी भी देखने को मिलती है. See, in which the first and last or other letters in a line spell out a particular word or phrase. किसी एक particular word or phrase की if you want to see, so Lewis Carroll के Alice Adventure in Wonderland में acrostic आप देखिएगा. Then you will find words. Basically guys, ये जो acrostic है आपके एग्जाम में पूछा बहुत कम जाता है. Acrostic आई हैवंट सीन कि कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हो, बट स्टिल आपको जानने की जरूरत है. इट डजंट मीन कि ये आपके एग्जाम का पार्ट नहीं हो सकता. गॉट इट? या. सो अक्रॉस्टिक इज अ काइंड ऑफ पोएम गाइस जहां पर देखिए फर्स्ट एंड लास्ट और अदर लेटर्स इन अ लाइन स्पेल आउट अ पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज. किसी पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज के साथ चलेंगे. And the most common and simple form of this type of poem is where the first letter of each line spell out the word or phrase. कि जहां पर सेम आपको मिलते रहेंगे. इसके बारे में कहीं ज्यादा नहीं जानेंगे, बट हाँ मैं आपको दूसरे फॉर्म्स के बारे में जरूर बताने वाला हूं. गाइज ये जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन में, एक्लॉग, ECLOGE गाइस. और कई बार आपने ऐसे भी देखा होगा इनको ECOLOGUE. इसको हम ऐसे ही समझते हैं. गॉट इट? इसको हम ऐसे ही समझने की कोशिश करेंगे. एक्लॉग क्या होता है गाइस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो इको एसोसिएटेड विद नेचर and log associated with conversation, isn't it? Yeah, it is. And pastoral means guys जहां पर भी natural setting हो, natural. So eclogue guys, short pastoral poems, usually in dialogue. जो मैंने आपको यहां पर समझाया ना, echo and log. Echo associated with environment. Got it? Echo associated with environment. And first appeared in idyls of Greek poet Theocritus and all. And guys आपको पता होना चाहिए, कई बार आपने देखा होगा, the work was influenced from Virgil's 7th eclogue, 6th eclogue, 5th eclogue, ऐसा करके आपने देखा होगा guys. एंड यहां पर एक चीज और भी आपको याद रखना है, जब भी गाइज आपको पैस्टोरल दिखे, क्योंकि आपने पैस्टोरल वर्ड को बहुत अच्छे से देखा होगा गाइज. पैस्टोरल, हैव यू सीन? आई थिंक गाइज आपने देखा होगा पैस्टोरल वर्ड. कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, पैस्टोरल, PASTORAL, पैस्टोरल. एंड गाइज PASTORAL, pastoral elegy, and ELEGY, and then you can see only PASTORAL, sorry, not pastoral, it's only elegy guys, है ना? Yeah. So थोड़ा सा इरेजर लेकर के only elegy के बारे में बात करना चाहिए मुझे. ELEGY गाइज आपने ये वर्ड बहुत ऑफन आपने देखे होंगे लिटरेचर में. कई बार कंफ्यूज होकर के हम लोग गलत कर लेते हैं ना. pastoral means नेचुरल और रूरल सेटिंग.
गॉट इट। नेचुरल और रूरल सेटिंग जहां पर आपको मिलेगी, दैट इज बेसिकली पैस्टोरल। जैसे कहा जाता है ना, पैस्टोरल सॉन्ग, गॉट इट, पैस्टोरल सॉन्ग इट इज, पैस्टोरल सेटिंग इट इज। पैस्टोरल सेटिंग मीन्स गाइज ट्रीज, यू कैन सी गाइज ग्रासलैंड, फील्ड्स, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सो दैट इज नोन एज पैस्टोरल। अनदर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, या नेचुरल सेटिंग के साथ इसको हमेशा रखिएगा, NATURAL and SETTING, सेटिंग्स। अगर किसी पोयम की है नेचुरल सेटिंग, सो या यू कैन से इट्स पैस्टोरल, इट्स पैस्टोरल वन। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलिए, इसको देखिए, पैस्टोरल एलिजी। पैस्टोरल एलिजीज आर पॉपुलर इन इंग्लिश लिटरेचर। और मुझे नहीं लगता गाइस कि कोई ऐसा एग्जाम है जहां पर यहां से क्वेश्चन एलिजी और पैस्टोरल एलिजी से क्वेश्चन ना आता हो। इस बात का मेरा भरोसा कीजिएगा प्लीज गाइस, ऑल ऑफ यू गाइस, इट्स माय हम्बलेस्ट रिक्वेस्ट कि यह पैस्टोरल एलिजी एंड एलिजी से जरूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और देखिए प्लीज, एलिजी एंड पैस्टोरल एलिजीज, हाउ बोथ आर डिफरेंट। यू नो, पैस्टोरल एलिजीज देखिए बहुत सारी लिखी हुई हैं। अगर आपने कभी नाम सुना है एस्ट्रोफेल, ASTROPHEL, गाइस, कैन यू प्लीज टेल मी हु इज द राइटर ऑफ एस्ट्रोफेल? हे गाइस प्लीज, एस्ट्रोफेल, दिस इज एन एलिजी, है ना गाइस? And I think this is the pastoral one elegy. So then who is the composer of this one, Astrophel? Can you please tell me? Yes. Can you please tell me who is the composer, the poet? Answer is, guys, Spenser. Okay, guys? Spenser is the answer. Spenser, guys. And Spenser ने लिखा किसके लिए था? Answer is Sydney. Please to remember. Sydney. Astrophel, an elegy by Spenser for Sydney, on death of Sydney. Clear? Wrote for Sydney and composed by Spenser. बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहां पर, है ना? And don't be confused. यहां पर क्लियर रखिए अपने कॉन्सेप्ट को। अच्छा, आपने गाइस और भी पढ़ा होगा, जैसे आपने एक पोयम पढ़ी है, मैं आपके लिए कुछ पैस्टोरल एलिजीज के नाम लिखूंगा, एंड या गाइस आप मुझे इनमें से बताएंगे कि इनमें से कौन सी ऐसी एलिजी है जो एक पैस्टोरल एलिजी नहीं है। ओके, आई एम गोइंग टू राइट अ फ्यू नेम्स, जिनमें से आप मुझे ये बता दीजिए कि इनमें से क्या कोई पैस्टोरल एलिजी नहीं है। अगर सब है तो आप बता सकते। देखिए गाइस, ADONAIS, एडनिस, LYCIDAS, Lycidas. Okay, guys, Lycidas. And then, guys, मैं आपके लिए एक और वर्क लिखूंगा, and the work is in memory of W.B. Yeats. In memory of W.B. Yeats. And one more name, guys. So मेरे पास है it's THY Thyresis. Thyresis, guys. So these are the 4 poems. And among these poems, guys, कौन सी ऐसी poem है जो pastoral नहीं है? It's not a pastoral elegy. I would like to tell you guys कि ये सारी elegies हैं, सारी ELEGIES, guys. These all are elegies, but which one is not a pastoral elegy, guys? Okay, so देखिए मैं आपके लिए guys बता दूं, Adonis, it was written on whom? So guys, on death of John Keats, and it's by Shelley. ये तो सब लोग जानते हैं. Lycidas, guys, it was written on death of Edward King, and it was by Milton, guys. Okay, another one poem, guys, in memory of W.B. Yeats. It was written for W.B. Yeats by Auden.
और एक गाइज मैं और आपके लिए यहां पर शामिल कर दूं, मेमोरियल वर्सेस। मेमोरियल वर्सेस गाइज, इज इट एलिजी or whatever guys it is elegy or pastoral elegy? Memorial verses guys, this is my question to all of you. It's elegy or guys pastoral elegy. ये memorial verses की मैं बात कर रहा हूं। Verses, this is by Arnold, Matthew Arnold. Theresis, this is also written on Arthur Hugh Clarke guys, AHC, and you can see guys Theresis by Arnold, Arnolt guys. So yeah, memorial verses, it's elegy or not please? Elegy, pastoral, I think guys memorial verses, is it an elegy or a kind of work guys that was written, okay, guys, for Wordsworth, and it was a kind of tribute to Wordsworth only, isn't it? Memorial verses guys, it was written for William Wordsworth, Goethe, Wordsworth and Byron, and it's a kind of work कि जिस वर्क में आपको एक चीज देखने को मिलती है, what is that? Tribute. Is it an elegy? प्लीज आप सर्च करके आइएगा, फिर जरूर आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा, ठीक है गाइज? या मैं देखूंगा कि आप में से कितने लोग हैं गाइज जो इन सारी चीजों को सर्च करके मुझे बता पाएंगे। ओके, यस। हे गाइज, सो देखिए इनमें से जो पैस्टोरल एलिजी है वो थायरसिस है, लिसिडस, एडेनिस, these three are pastoral elegies. And according to me guys, memorial verses and in memory of W.B. Yeats, in memory of W.B. Yeats, it's elegy but not pastoral one. And memorial verses guys, is it an elegy or pastoral elegy? ये आप लोग मुझे कभी बताइएगा, ठीक है? So guys, मैंने एक क्लास ऑलरेडी ली भी थी। जैसे गाइज आप एक पोएम देखिए, elegy written in a country churchyard, elegy written in a country churchyard. Is it an elegy or anything else? क्या ये एक elegy है? Elegy written in a country churchyard. Is it an elegy or pastoral elegy or anything else? क्या है guys ये? So आपको पता ही होगा, by Thomas Gray, elegy written in a country churchyard, and this is a pastoral or only elegy. It's a pastoral elegy. Why guys? A rural setting is there, natural atmosphere is there. Yes. है गाइस, तो अब थोड़ा सा आगे चलेंगे। इसके बाद मैं थोड़ा सा एपीग्राम की बात करूंगा गाइस। एपीग्राम, इसके बारे में गाइस आपने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। व्हाट इज एपीग्राम? Epigram, it's a very short poem, usually 2 or 4 lines long, with a simple rhyme scheme. The goal of an epigram is to encapsulate a brief bit of wit or wisdom in poetic form. Guys, what is an epigram? Epigram के लिए कुछ words. Epigram मतलब समझ लीजिए guys, a short, witty statement or lines that is packed with wit, wisdom and guys जो knowledge है वो packed होता है, that is known as epigram. और epigrams को कहां पर यूज किया जाता है guys? epigrams को कहां पर यूज किया जाता है? बहुत सारे वर्क्स में guys आप देखेंगे, in the beginning of the works you can see epigrams को यूज किया जाता है। जैसे आपने एक गाइस थोड़ा सा प्लीज याद रखिएगा मेरी बात को। कैसे? देखिए मैं कुछ चीजें आपको और क्लियर करूंगा। जैसे एपीग्राम हो गया, चलिए ये तो ठीक है। जैसे यहां पर मैं आपको बता दूं, प्रोलॉग, एपीलॉग, प्रोलॉग, एपीलॉग गाइस, है ना? सो इनमें से कौन बिगिनिंग में होता है? ये आप सभी लोग जानते हैं, बिगिनिंग गाइस। सो बिगिनिंग में कौन होता है? प्रोलॉग और एपीलॉग। इसी तरह गाइस, इसी तरह जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, लाइक एपीथेट, EPITHET, एपीथेट जैसे हमें कंफ्यूज करते हैं, एपीथेट, ट्रांसफर्ड एपीथेट गाइस, है ना?
ट्रांसफर्ड एपिथेट। और इसी तरह से गाइस जैसे आप ये समझ लीजिए कि बिगिनिंग वाले भी कई सारे वर्ड्स होते हैं, अब मुझे याद नहीं आ रहे हैं बहुत सारे, बट या देखिए जैसे प्रोलॉग है गाइस, प्रोलॉग एंड एपीलॉग। देखिए गाइस जो प्रोलॉग होता है वो हमेशा कहां पर होता है, बिगिनिंग में, इट्स एसोसिएटेड विद बिगिनिंग, एंड एपीलॉग इट्स एसोसिएटेड विद एंडिंग। गॉट इट? एपीलॉग एट द एंड, प्रोलॉग इन द बिगिनिंग। और भी गाइस कुछ वर्ड्स हैं जो जैसे एपीग्राफ, एपीटैफ, जैसे गाइस एपीथेट और एपीटैफ, TAPH, मतलब गाइस ये एंड से मतलब होता है ना, एपी। ये देखिए यहां पर भी एपी है, यहां पर भी एपी है गाइस। एपीथेट ये भी देखिए लास्ट में ही आता है, EPI है ना, यस। एपी गाइस ये लास्ट में ही आएगा। कैसे? जैसे गाइस एपीथेट मतलब किसी वर्ड के साथ उसकी प्रेज को जब एड कर दिया जाता है। गॉट इट? यस, ये समझ लीजिए एपीथेट। ट्रांसफर्ड एपीथेट जब किसी गलत के साथ कोई गाइस जो नहीं लगाना चाहिए था वो हम एडजेक्टिव लगा देते, दैट इज बेसिकली ट्रांसफर्ड एपीथेट। सो इनको याद रखिएगा गाइस। एपीथेट मतलब जब किसी की एंडिंग हो जाती है लाइफ की, तो लाइफ के एंड में वो सारी चीजें, जैसे इनक्रिप्टेड वर्ड्स, दैट इज एपीथेट, है ना। एपीटैफ, दैट इज एपीटैफ। एंड एपीथेट गाइस जैसे किसी महात्मा गांधी के लिए कुछ एडजेक्टिव्स एंड ऑल डाल दिए गए, दैट इज बेसिकली गाइस। सो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें कई बार कंफ्यूज करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इन सारे वर्ड्स को बहुत ही अच्छे से जानें गाइस, है ना। आगे चलेंगे थोड़ा सा। गाइस आपने हाइकू का नाम सुना होगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो आपके एग्जाम में हाइकू से क्वेश्चन आता है, HAIKU, सो मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। इट्स अ काइंड ऑफ पोइटिक फॉर्म, ये सब लोग जानते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ पोइटिक फॉर्म। या ओरिजिन गाइस, ओरिजिन, सो इसके ओरिजिन को लेकर के क्वेश्चन आता है हाइकू गाइस। सो इट्स द ओरिजिन इज जापानीज। गॉट इट? इट्स द काइंड ऑफ जापानीज फॉर्म ऑफ poetry guys, yeah, and accepted or adopted in English as it is. Most of the time guys, short poem clarifying language to convey the essence of an experience of nature, probably linked to the human condition. Got it? So जो आपका हाइकू होता है guys basically, so it's a Japanese form of poem. इतना बस आपको याद रखने की जरूरत है गाइस, और ज्यादा नहीं। फ्रेंड्स यहां पर मेरे पास एक और बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपके लिए। दो चीजों के बारे में यहां पर मैं और बात करना चाहूंगा आपसे, लाइक एपिक एंड मॉक एपिक। देखिए गाइस ये दो हैं, एपिक एंड मॉक एपिक, ठीक है। इन शॉर्ट मैं बताऊंगा, ज्यादा लॉन्ग नहीं। एपिक इन एनी सिविलाइजेशन गाइज, ये कंसीडर कीजिए ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग। एपिक, महाभारत, रामायण, एंड गाइज बेवुल्फ, एनीड, और यू कैन से गाइज इलियड एंड ओडिसी। या ये बहुत सारे जो गाइज आपके वर्क हैं। एपिक ऑलवेज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम। आइडियल लेंथ जो एपिक की होती है वो 12 बुक होती है गाइस। आइडियल लेंथ ऑफ एन एपिक, सो ये होती है गाइस 12 बुक्स। लॉन्ग नैरेटिव पोएम हैविंग ग्रेट सब्जेक्ट, ग्रैंड्योर मैनर, ग्रैंड स्टाइल। ये जो ग्रैंड स्टाइल वर्ड है, ग्रैंड स्टाइल, ओके गाइस, सबलाइम ट्रीटमेंट। ग्रैंड स्टाइल जो गाइस आया है ये अर्नोल्ड ने दिया था, M अर्नोल्ड ने, मींस मैथ्यू अर्नोल्ड ने ग्रैंड स्टाइल कहा था इसे, है ना। यस। इनवोकेशन कैन बी सीन, मीडिया रेस कैन बी सीन। मीडिया रेस मींस इन द मिडिल ऑफ द थिंग्स। होमरिक सिमली और एपिक सिमली, HOMERIC, होमरिक और एपिक सिमली गाइस, ये दो चीजें आपको देखने को मिल जाए। What does epic simile means? Means guys, यहां पर एक सिंपल मतलब होता है बहुत, कि एक ऐसा कंपैरिजन दैट इज बियॉन्ड आवर थिंकिंग। बस ये समझ लीजिए, हमारी और आपकी सोच से बाहर।
There are basically two types of epic. So guys, in epics को हम दो types में divide करते हैं, primary and secondary. Primary epics को guys classical भी कहा जाता है and secondary epic literary epic. I would like to tell you guys, Paradise Lost is a secondary epic, blend of fact with fiction. Got it? Yes. Blend of fact with fiction. अच्छा, जो गाइस जो देखिए हीरो होता है एपिक का, वो ऑलवेज एक यूनिवर्सल पर्सोना होगा, यूनिवर्सल पर्सोना होना ही चाहिए गाइस. यस, सुपर नेचुरल एलिमेंट वो होना ही चाहिए. जो सब्जेक्ट होगा गाइस वो ग्रैंड सब्जेक्ट होगा, कुछ बड़ा सब्जेक्ट होना चाहिए. इट शुड बी ऑफ यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस. कोई भी काम मतलब नॉर्मल नहीं हो सकता. गॉट इट? छोटी छोटी चीजें नहीं दिखाई जाती. या सो you know guys, supernatural machineries, role of supernatural machineries, that can be also seen. Good, bad. Examples like Mahabharat, Ramayana, Iliad and Odyssey and Aeneid. Then you can see Beowulf, Paradise Lost. These all are the example guys. Long narrative poem. अब जब हम गाइज इसकी बात करते हैं ना, मॉक एपिक, तो मॉक का मतलब ये होता है मॉकरी करना, मतलब एपिक का मजाक बना देना गाइज, है ना. एपिक को का कहीं ना कहीं मजाक बना देना गाइज. इमिटेशन ऑफ एपिक पैटर्न, इमिटेशन ऑफ एपिक पैटर्न, बट किसी ट्रिवियल गाइज इंसिडेंट को लेकर के, ट्रिवियल इंसिडेंट को लेकर के उसे इतना लंबा चौड़ा बताना कि गाइस वो बिल्कुल अब्सर्डिटी की हद को पार कर डालेगा. एपिक पैटर्न गाइस, लॉन्ग नैरेटिव पोएम, तो लॉन्ग लिखा जाएगा, बट सब्जेक्ट देखिए, जैसे कटिंग ऑफ लॉक ऑफ हेयर इन द वर्क रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप. कटिंग ऑफ गाइस, है ना. यस. There is a great epic, if you have ever heard, The Frog and Mice. The Frog and Mice guys. The Frog and Mice बड़ी interesting कहानी है. There was a battle between frog and mice, and how does it takes place? How does it takes place guys? So mice and frogs का जो बैटल था, ये रियली इंटरेस्टिंग है गाइस, है ना. रियली इंटरेस्टिंग वर्क है, मास्टरपीस आप कह दीजिए. कभी आपको मौका मिले तो फ्रॉग एंड माइस वाले इस मॉक एपिक को जरूर पढ़िएगा गाइस. यू विल गेट समथिंग, you will get something and you will learn. And Rape of the Lock, another one masterpiece, जो है वो है guys Rape of the Lock. Supernatural machineries are there, supernatural machineries, grand style, division, but trivial incident. Guys, the game of Umber, जो गेम है guys, जो उम्बर का गेम खेल रहे हैं ये लोग. So, a game of Umber that has been depicted similar to the Battle of Troy. Battle of Troy, it was a kind of guys, बहुत बड़ा battle था. And ये क्या था? Umber का game guys, So you can see this is what की ये बड़ी मतलब trivial को बहुत ही ज्यादा grand style में treat किया जा रहा है. So that's why guys जिसे नाम ही दिया गया है mock epic. Mocking of epic convention. There are supernatural machineries like gnomes, salamanders, okay, Ariel. ये सारे गाइड्स आपके वो हैं supernatural machinery. And those supernatural machineries इतनी सी हैं, एक थप्पड़ मार दो गिर जाए. Those are the supernatural machineries. And basically what they are doing, how they are playing their roles, protecting. Got it? Protecting whom? बेलिंडा को प्रोटेक्ट करने के लिए. यस गाइस, सो मॉक एपिक इज ऑल्सो देयर. आफ्टर मॉक एपिक गाइस, देखिए यहां पर मैंने कुछ और भी फॉर्म लिए हैं. दीज आर द अदर फॉर्म्स, और अदर फॉर्म्स को देखिए प्लीज. देयर इज वन मोर पैटर्न ऑफ पोएम एंड दिस इज नोन एज टंका. TANKA गाइस, टंका. एंड इट इज नोन एज अ जापानीज पोएटिक फॉर्म.
and written in 5 lines. And the theme of Chanka tends to lean towards personal feeling and complexity of human interaction. An Island Within by Mamta Agrawal. This is one of the example. I don't know much about guys Chanka, but I know this is a Japanese form. So एक तो haiku मैंने पढ़ा है HAIKU, and another one is TANKA Chanka. These are the two forms. These are the two forms of poems. Rubaiyat. So Rubaiyat pattern, guys, you know, this one came from where? So this pattern came from Rubaiyat of Umar Khayyam, guys. Got it? Yeah. Rubaiyat of Umar Khayyam. So, and he was basically imitated by different poets. Rubaiyatist. ये guys एक stanzaic pattern है ना? Yes. So, जैसे कि ये जो गाइस डिवीजन है ना, so आप ये समझिए स्टेंजाइक डिवीजन भी आप इसे कंसीडर कर सकते हैं. लाइक टंका गाइस, सो जैसे 5 लाइंस वाली जो पैटर्न है, दैट इज रुबाइयत गाइस. रुबाइयत स्टेंजा इज देयर, जहां पर 4 लाइन वाली सिर्फ और सिर्फ होती है गाइस. एडवर्ड फिट्जजेराल्ड से आया है. ले गाइस, आपने सुना होगा जैसे ब्रेटन ले सुना होगा गाइस, जैसे 9 लाइन की जो पोएम्स एंड ऑल होती हैं बेसिकली. यस, narrative poem of 9 lines written in octosyllabic couplet, so that are known as lay, LAI guys, है ना? Yes. Limerick is also guys a kind of poem जहां पर 5 लाइन आपको ह्यूमरस, बहुत ज्यादा 5 लाइंस का ह्यूमरस पैटर्न मिलेगा. यस. कर्टल सोनेट मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था गाइस, 11 लाइंस. एक्सप्रेसिस, व्हाट डज इट मीन? एक्सप्रेसिस पोएम जहां पर आप ये समझ लीजिए कि किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया जा रहा हो, दैट इज. जैसे रुबाइयत स्टेंजा गाइस, यू नो, फ्रॉस्ट की स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. रुबाइयत, रुबाइयत स्टेंजा, सो दिस वाज आल्सो इमिटेटेड बाय T.S. Eliot, थॉमस स्टर्न एलियट. याद रखिएगा गाइस. वैसे मैंने आपको काफी सारे गाइस पैटर्न के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ पोएम्स एंड काफी सारी चीजों के बारे में तो वैसे मैंने बता दिया. अब मैं कुछ और इंटरेस्टिंग गाइस आपके लिए है मेरे पास, और इंटरेस्टिंग आप जान लीजिए. वैसे आप सभी लोग पोएम्स पढ़ते ही हैं, और जब पोएम्स पढ़ते हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या है गाइस. गॉट इट? ये बहुत बड़ी समस्या है. आप ये समझिए, What is meter in poetry? ये कई बार हमारा सर खा जाती है, आप ये मान लीजिए. Believe me, most of the students वो बेचारे इसी में परेशान रहते हैं. What is this? What is this? What is this? What is this? और वो बेचारे गिरते पड़ते स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर आप चाहें इस पेज का, या एक स्क्रीनशॉट बनता है, ठीक है. बेसिकली देखिए, जो पोएम्स हैं तो पोएम गाइज, यू नो, कि डिफरेंट स्ट्रक्चर में होती है. पोएम्स इन डिफरेंट स्ट्रक्चर. सो गाइज, डिफरेंट स्ट्रक्चर, लाइंस. हर एक पोएम तो देखिए 4 लाइंस में होती नहीं है, 3 लाइंस में भी नहीं होती, 2 लाइंस में भी नहीं होती. कहीं पर आपको 4 लाइन मिलेंगी, कहीं पर 5 लाइंस मिल जाएंगी, कहीं पर 6 लाइन मिलेंगी, कहीं पर 8 लाइंस. फिर क्या करेंगे? कभी कभी देखते हैं गाइस, पोएटिक लाइंस इतनी छोटी हैं, कभी कभी इतनी बड़ी हैं, कभी कभी इतनी छोटी है. तो फिर हम क्या करें? वेरिएशन कैन बी सीन. Now guys, in poetry, meter is one of the important part. और कैसे हम इसे डिसाइड करेंगे? Yes, बहुत सारे वर्क हैं, and how we are going to decide. So इसके लिए आपको सिंपल लर्न करना होता है कुछ, कि पोयम किस मीटर में लिखी हुई है गाइस. And this metric pattern is based on a different pattern I'm going to introduce. देखिए गाइस, सबसे पहले आप याद रखेंगे मोनोमीटर गाइस. सो मोनोमीटर क्या होता है? जब 1 फुट हो. फुट गाइस सिंगुलर होता है और फीट प्लूरल होता है. डू रिमेंबर गाइस, फुट सिंगुलर एंड फीट प्लूरल. 2 feet means dimeter, 3 feet means trimeter, 4 feet means tetrameter,
5 feet means pentameter, and 6 feet means hexameter, 7 feet means heptameter, 8 feet means octameter, 9 feet means nonameter, and 10 feet means decameter. अब आप सोच रहे होंगे सर मैथमेटिक्स में पहुंच गए हैं क्या? नो गाइस, you are in a literature class. You are not watching a mathematics class. This is basically a literature class, guys. और फिर एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है गाइस, है ना? जैसे कि आपने किसी पोयम को देखा और वहां पर लिखा होता है द पोयम इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, गाइस. IAMBIC एंड PENTA पेंटामीटर, है ना गाइस? और फिर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती है. क्या है ये आयम्बिक पेंटामीटर? अब हम लोग सर खुजला लेते हैं कभी कभी, और फिर वहां पर लिखा रहता है गाइस 10 syllables, SYLLABLE syllables are there. और अब हम और पागल हो जाते हैं. पता है क्यों? क्योंकि हमने आयम्बिक और पेंटा जब पढ़ा था तो पेंटा का मतलब तो हमने 5 पढ़ा था, और ये 10 कहां से आ गया? बड़ा कंफ्यूजन है भाई. इट्स अ काइंड ऑफ बिगेस्ट कंफ्यूजन जो दूर करने की जरूरत है आपको. सो आयम्बिक पेंटामीटर मींस 10 syllable. ये कैसे हुआ भाई? कब हुआ? कहां हुआ? यस, सो अब इसे लर्न कीजिए गाइस. जब हम बोलते हैं ना आई एम, जब भी हम बोलेंगे गाइस आई एम और या फिर हम बोल दे मीटर, सो देखिए जैसे हम बोलते हैं ना मोनोमीटर, डाईमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, हेप्टामीटर. सो गाइस ये तो हो गया 5. लेकिन जो आई एम है, जैसे अगर हम आई एम बोलेंगे मीन्स 2 syllable. अच्छा, ये कहां से नया पैटर्न आ गया? इसको ऐसे समझिए, आई एम को अलग समझ लीजिए और पेंटा को अलग समझ लीजिए. आई एम अलग समझे, गॉट इट, और पेंटा को अलग समझे. तो आई एम में होते हैं गाइस 2 syllable. कैसे 2 syllable? देयर आर 2 syllables इन अ सिंगल आई एम, इन वन आई एम. देखिए, one stressed syllable followed by, yes, one unstressed syllable followed by stressed one. 2 हुए कि नहीं हुए? सो आई एम की जगह पर लिख दीजिए 2 एंड पेंटा की जगह पर लिख दीजिए गाइस 5. 2 into 5 कितना हुआ गाइस? 10 syllable हुआ कि नहीं हुआ? Isn't it 10 syllable? आयम्बिक एंड पेंटा. बाय द वे गाइस, यहां पर ट्रॉकी पेंटा हो जाए सो फिर क्या करेंगे आप? सो आयम्बिक का उल्टा ट्रॉकी होता है, वो 2 से ही मल्टीप्लाई होगा. देन गाइस बाय द वे डैक्लिक हो जाता है गाइस. सो 1 is stressed followed by 2 unstressed means 3, and 3 into 5, so you will find 15 syllables are there. अगर गाइस ये डैक्लिक हो जाएगा so it means 15 syllables are there. And if it's anapestic guys, so 2 unstressed, 1 stressed means 15 syllable. Spondy guys, 2 stressed syllable together, it means guys सिर्फ और सिर्फ 2 stressed syllable मिलेंगे. 2 से मल्टीप्लाई कीजिए. जरूरत होती है समझने की आपको, ये लर्न करने की और ये पैटर्न लर्न करने की. Isn't it? जब आप ये लर्न करेंगे तब आपको यहां से लर्न करना. थोड़ा सा इसको और इजी करते हैं, है ना गाइस? चलिए लेट्स मेक इट इजी, और इसे इतना इजी करते हैं कि बहुत इजी कर देते हैं. यूट्यूब एंड ऑल में गाइस कोई नहीं इतना पढ़ाता ना कोई बताते हैं. बस ये बताते हैं कि हमसे बड़ा मतलब विद्वान कोई नहीं. गॉट इट? ज्यादातर लोग ये बता देते हैं कि हमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं. बस छोटा छोटा बता दिए, बाकी जो डिटेल है जहां से आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं वो नहीं बताते हैं. ये देखिए, ये वो वे है कि जहां से आप खुद बाय यूजिंग योर रीजन आप आंसर कर सकते हैं. देखिए यहां पर आप देख लीजिए फिर से एक बार, आइए और इसको और इजी करते हैं. देखिए गाइस, 1 foot मीन्स मोनोमीटर, डाईमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, हेप्टामीटर. मींस गाइस कि अगर 3 feet है ट्राईमीटर है. आपने कहीं कहीं देखा होगा 6 feet हेक्सामीटर. आपने देखा होगा, देखिए जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूं स्पेंसरियन स्टेंजा, SPENSERIAN, स्पेंसरियन, एंड देन STANZA.
स्पेंसरियन स्टेंजा में 8+1 का कॉन्सेप्ट माना जाता है, मींस 9 लाइन, मींस 9 लाइन्स है ना, मींस 9 लाइन्स है ना। अब ऐसे समझिए, देखिए कहा जाता है 8 इन पेंटामीटर है ना एंड 1 इन हेक्सामीटर। और जैसे ही गाइस इसको हेक्सामीटर बोला जाता है, हमें समझ में आए ना आए, बट यस यू नो आयम्बिक पेंटामीटर में 8 लाइन्स एंड आयम्बिक हेक्सामीटर में 1 लाइन, 1 लाइन इन हेक्सामीटर एंड 8 लाइन इन पेंटामीटर। सो गाइस जब आयम्बिक पेंटामीटर की बात आती है, सो हम इसको क्या करते हैं, आयम्बिक एंड पेंटा 2 into 5, और जब ये हेक्सा की आ गई बात, सो 2 into 6 कर देंगे हम लोग, मींस 12 सिलेबल, मींस 10 सिलेबल। क्लियर हुआ? गॉट इट? आई होप सो कि अब आप समझ गए होंगे इस बात को कि ये कैसे होता है। देखिए आयम्बिक है गाइस, यहां पर 2 सिलेबल होते हैं, इसे आप किसी से भी मैच करेंगे गाइस, 2 से ही आपको मैच करने की, 2 से ही आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। ट्रॉकी गाइस, इसको भी 2 से ही आप मैच करेंगे। डैक्लिक गाइस, तो इसे हम किससे मैच करेंगे, 3 से गाइस, डायरेक्टली से 3 से मैच किया जाएगा, इसे 2 से, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और इसे गाइस किससे, सो ये देख लीजिए गाइस 3 से होगा, और इसको ओनली 2 एंड ओनली 2, दिस इज व्हाट। अगर ये चीज आपको याद हो गई तो इट मीन्स कि आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा बेहतर कर ही सकते हैं, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग है ना, एज वेल एज प्रॉब्लमैटिक भी है, मानिए मेरी बात को। यस, और इसके बाद भी गाइस मैं और भी आपको कुछ बताने के मूड में था, बता ही दिया जाए आज, क्यों मतलब वो करना गाइस, ज्यादा नहीं परेशान करना आपको, लेकिन बताना जरूर है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई गाइस? अगर आपको क्लियर है सो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं यस। ओके, बाय द वे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है सो देन प्लीज लेट मी नो। किसी को कोई प्रॉब्लम, इफ यू आर थिंकिंग एनीथिंग एल्स, या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही, देखिए आपके एग्जाम में आता है आयम्बिक से क्वेश्चन, ठीक है, आयम्बिक, और जैसे ही आयम्बिक लग जाए मीन समझ लीजिएगा अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड। जो नेचुरल स्पीच है दैट इज आयम्बिक, ठीक है। अब आगे चलेंगे गाइस, और थोड़ा सा हम स्टेंजा के पैटर्न के बारे में जानेंगे। स्टेंजा पैटर्न, सो गाइस अब स्टेंजा पैटर्न की जब बात आ ही गई है तो हम स्टेंजा पैटर्न को समझ लेते हैं। यू कैन सी गाइस स्टेंजा पैटर्न, जैसे पोइट्री में मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा 2 लाइन वाली पोइट्री भी नहीं मिलती, एवरी टाइम गाइस 3 लाइन्स वाली भी नहीं मिलती, 4 लाइन्स, देन अनदर वन 6 लाइन्स, ऐसा भी नहीं आपको मिलता, तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है गाइस। मींस आपने देखा होगा कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है पोइट्री, जैसे आपने प्रोज को देखा होगा कि उसमें पैराग्राफ होते हैं, ऑन द सेम वे इन पोइट्री यू कैन सी स्टेंजास, और ये जो डिवीजन है इसे स्टेंजा बोला जाता है। द डिवीजन ऑफ दोज ब्लॉक्स दैट इज कंसीडर्ड एज स्टेंजा गाइस, है ना? यस, सो पैराग्राफ इन प्रोज एंड स्टेंजा इन पोइट्री गाइस। And in every single stanza in poems you can see उनका अपना एक यूनिक कॉन्सेप्ट होता है। स्टेंजा रिपीट नहीं होता, कि गाइस सेम स्टेंजा को कई बार रिपीट किया जाए, नहीं, ओनली अ फ्यू लाइन्स कैन बी रिपीटेड, और जब किसी लाइन को रिपीट किया जाता है दैट इज नोन एज रीफ्रेन। रीफ्रेन मीन्स रिपीटिशन, दैट इज नोन एज रीफ्रेन, मतलब रिपीटिशन आप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए गाइस, नाउ सी जो स्टेंजाइक डिवीजन है, सो 1 2 3 4 5 6 7 ये सारा डिवीजन है। गॉट इट? क्लियर? देखिए लाइक मोनोस्टिच, व्हाट इज दिस? मोनोस्टिच इट कैन बी इंटायर पोएम और अ सिंगल लाइन, 1 लाइन गाइस, ये समझिए इसे 1 लाइन
ये इंटायर पोयम भी हो सकती है, और सिंगल लाइन स्टेंजा दैट इज नोन एज मोनोस्टेज। मोनो का मतलब ही होता है सिंगल भाई, मोनो का मतलब ही होता है सिंगल। सो नो नीड टू थिंक एनीथिंग एल्स। कपलेट, कपलेट मींस कपल गाइज जो होता है वो डबल ही होता है। कपल, कपलेट गाइज मींस टू लाइन्स जो स्टेंजाज होते हैं, टू लाइन स्टेंजाज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइम एंड ऑल गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेंजाइक पैटर्न। राइम में भी डिफरेंट, ए बी, बी सी, सी डी, ए वट एवर गाइज। राइम की मैं बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइन्स। सो टू लाइन्स इन कपलेट मींस कपल जो होता है वो डबल ही होता है, कपल। Then see tercet. Tercet guys 3 associated with 3. 3 lines stanzas are known as tercet. और इसे terza rima भी बोलते हैं, terza rima. And you know Ode to the West Wind by P.B. Shelley. I think you have heard about Ode to the West Wind by P.B. Shelley in terza rima. Dante's Divine Comedy. So Dante ने guys इसे यूज किया था in Divine Comedy to terza rima. Means 3-line stanza. Got it? 3-line stanza, terza rima. Quarten? Quarten means 4 lines. 4-line stanza. 4-line stanza is known as quarten, guys. Most of the time quarten में क्या होता है? ऐसे होता है guys quarten में कि A B ये फॉलो करेगा गाइज, A B B C C D E F G है ना, सॉरी E F एंड G H लाइक दिस गाइज। ऐसा टाइप का पैटर्न डिवाइड किया जाता है, ठीक है। यस, क्वेंटेन, देखिए जब 5 लाइन हो किसी स्टेंजा में, सो दैट इज नोन एज क्वेंटेन, QUINTAIN। क्वेंटेन मीन्स 5 line, 1 2 3 4 5. Sestet means 6 line, 1 2 3 4 5 6 means sestet. If there are 6 line in a stanza, so then it is known as sestet. Septet guys, septet को rhyme royal भी बोला जाता है प्लीज। Septet और rhyme royal ये सेम है। Rhyme royal means 7 line. 7 line stanza is known as septet और राइम रॉयल गाइज, है ना। 6 लाइन स्टेंजा जो आप ये सेस्टेड देख रहे हैं गाइज, यस 6 लाइन वाला होता है, जैसे आपने देखा कि जो पेट्रार्क एंड ऑल ने यूज किया है। देन वी हैव ऑक्टेव। ऑक्टेव मींस गाइज 8 लाइन। 8 लाइन स्टेंजा इज नोन एज बेसिकली ऑक्टेव। ओके गाइज, देन स्पेंसरियन स्टेंजा के बारे में अगर आपने सुना होगा, so 9 lines are there in Spenserian stanza. Okay? Yes. और इस चीज को समझने के लिए मेरे पास एक बहुत ही सिंपल ट्रिक होती है, SROS 6 7 8 9। 6 sestet, R rhyme royal guys means yes, sestet के बाद क्या आता है guys? Septet. So septet means 7 lines. Octave means 8 lines and Spenserian stanza means 9 lines. So this is the pattern कि आप इन चीजों को याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं और बहुत अच्छे से गाइज इन चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। हमेशा याद रहेंगी गाइज आपके लिए पूरी लाइफ में। नाउ गाइज आपने इतना सब कुछ लर्न किया आज मेरे साथ। आई थिंक कि मैंने पोइट्री के पार्ट, पैटर्न, लिरिक, सोनेट, बैलेड, एवरीथिंग गाइज, मैंने बहुत सारी चीजें आपके लिए कवर की, isn't it? Yeah guys, I have covered. और मैंने ये सारा कुछ कवर करने के बाद अब मैं दोस्तों आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। यस, अब ये मेरी विश होगी कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। Are you ready guys? And if you have queries and all, so do not forget to ask your queries. और अगर आपकी queries नहीं है, so then I'm going to ask something. I would like to ask कि मैं आपसे पता करूं कि भला आपको कुछ पता है या नहीं। You know guys, अभी मेरे आपके पास 10 मिनट होंगे, मैं आपके साथ लाइव 10 मिनट्स और रहने वाला हूं। So stay tuned with me
अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक भी कीजिए, शेयर नहीं किया तो कैसे स्टूडेंट्स हो यार। 1.5 घंटे से कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट गाइड जो जनरल ज्यादातर टीचर्स आपको नहीं पढ़ाते। गाइज आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो ज्यादातर टीचर्स आपको नहीं पढ़ाते। पढ़ाते तो होंगे ही, यूट्यूब में बहुत सारे टीचर हैं पढ़ाते हैं, बट गाइज कॉमनली नहीं पढ़ाते, है ना। बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी नहीं पढ़ाते। तो मैंने उन टॉपिक्स को आपके साथ 1.5 आवर डील किया। एंड नाउ गाइज द थिंग इज कि प्लीज आप एक काम कीजिए कि अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी पूछ लीजिए। एंड लाइक एंड शेयर मस्ट, शेयर ऑन योर व्हाट्सएप स्टेटस। दिस इज गाइज गुरु दक्षिणा, कि जो अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हैं, और अगर गुरु नहीं मानते तो फिर जो भी आप मुझे मानते हैं उसके लिए जस्ट वन शेयर ऑन योर व्हाट्सएप स्टेटस, एंड देन गाइज आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। या सो गाइज काफी अच्छा भी लगता है, काफी बुरा भी लगता है। जो चीजें होती है ना लाइफ में बड़ी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। आज तो मेरा थोड़ा गला भी बैठ आया है, मैंने पानी भी नहीं पिया, कि आज थोड़ा पिया होता ताकि अच्छा लगता फिलहाल में। बट यू डोंट वरी गाइज। एंड हाँ प्लीज, जल्दी से आपके लिए कुछ सरप्राइज भी आने वाला है। बिलीव मी कि मैं आपको इतनी बढ़िया क्लासेस प्रोवाइड करने वाला हूं, इतनी बेहतर क्लासेस, इतनी जबरदस्त, कि आपके मुंह से निकलने वाला है वाओ सर, वाओ वाओ निकलेगा, बिलीव मी। तो उसके लिए मैंने क्या सोच रखा है, उसके लिए तो मैं आपको बता दूं कि है कुछ प्लान, जल्दी ही गाइज आपके सामने आ रहा है वो प्लान, और वाओ वाली फीलिंग आएगी आपको ऑन यूट्यूब एंड ऑन माई अनअकैडमी क्लासेस एवरीवेयर गाइज। तो कुछ चेंजेस करने वाला हूं मैं, और उस चेंजेस के लिए मतलब मैं चाहता हूं कि अब कुछ और भी चेंजेस लाने चाहिए। क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना एग्जाम में गाइस, जो क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं आपके एग्जाम में, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट एंड पैटर्न वाले आ रहे हैं। यस, Sprung rhythm too is associated with G.M. Hopkins. Is that different from Curtal sonnet? If yes, then in which way? देखिए जो स्प्रिंग रिदम है बेसिकली सुरेंद्र, सो दैट इज एसोसिएटेड विद जीएम हॉपकिंस, यू ऑल आर फैमिलियर। एंड कर्टल सोनेट, सो दिस इज फॉर्म ऑफ राइटिंग, गॉट इट। ये जो सोनेट का पैटर्न है, तो ये फॉर्म है, मतलब एक पोइट्री का फॉर्म है। फॉर्म मीन्स टाइप, है ना। बट अगर स्प्रिंग रिदम की बात करें, सो स्प्रिंग रिदम दैट इज इंपैक्ट ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग सिलेबल्स, है ना। दैट इज स्प्रिंग रिदम, कि वो स्प्रिंग वाले रिदम किस पैटर्न में चलती है, दैट इज स्प्रिंग रिदम। सो बोथ आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यस, अक्षिता घोटिया, ऑलरेडी आई एम डूइंग द, ये जो मैं काम कर रहा हूं, जो मैंने आपको ये पढ़ाया ना, एटलीस्ट आप अपने एग्जाम में जाइएगा। 3 वीडियोस गाइज मैंने अपलोड किए हैं। एक वीडियो है मेरा ड्रामा वाला, एक वीडियो है गाइज पोइट्री वाला यानी आज का, एक है नॉवल वाला। सो मैंने गाइज आपको फॉर्म्स ऑफ नॉवल, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, ये सब पढ़ा दिया। अब बचा वैसे जो भी है तो वो आपको आगे पढ़ाता रहूंगा। एंड बिलीव मी गाइज, एक बात मेरी याद रख लीजिएगा। यस, एक बात आप याद रखेंगे हमेशा कि जो डिटेल आपने ये पढ़ लिया है, ये आपकी हेल्प हमेशा करता रहेगा लाइफ टाइम। जब क्वेश्चंस हम लोग कराते हैं तो डिटेल जो क्वेश्चन में कराते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। एमसीक्यूज तो सबको ही कर लेता है, एमसीक्यूज तो आपके पास रखे होंगे, बुक्स होंगी तो आप उनसे पढ़ लेंगे, है ना। सो जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट बिहाइंड दोज ऑल थिंग्स, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, इंपॉर्टेंट होता है। या और उसी कॉन्सेप्ट की ये जो सारी चीजें होती है ना, सारी कॉन्सेप्चुअल ही होती हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होती हैं। जैसे बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग इतने सेटिस्फाइड होते हैं, आई वॉन्ट जस्ट नोट्स, नोट्स के लिए वो पागल रहते हैं, ठीक है। नोट्स के लिए देखिए गाइस, नोट्स मैं कह सकता हूं बेस्ट वे है, आपका टाइम नहीं ज्यादा कंज्यूम करते, आप बहुत कुछ कवर कर लेते हैं। बट अगर मुझे लगता है कि सिर्फ नोट्स से ही सब कुछ हो जाता, तो आप एक बात सोचिए ना कि यूनिवर्सिटीज में इतने सारे गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज
अपने टीचर क्यों रखते गाइस, क्यों रखते अपने टीचर और क्यों इतना पैसा देते उन टीचर्स को, है ना? यस सर, in La Belle Damson's Mercy, first and last stanza is repeated. It's not all about stanza, it's all about lines. Do remember English classes, ठीक है? Do remember कि वो रिपीटेशन होता है लाइंस का, ठीक है? सर, सिलेबल्स को समझने में दिक्कत आती है सुधा। सिलेबल्स को मैंने एक क्लास लिया था, मैंने उस क्लास में सिलेबल्स को समझाया था। या सो मैं क्या बता रहा था आपको, कुछ बता रहा था या नोट्स एंड लेक्चर्स। तो देखिए लेक्चर की जो इंपॉर्टेंस होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। गॉट इट? रिटन सब कुछ है आपके पास, बुक्स हैं, गाइड है, इंटरनेट सोर्सेस हैं, बट उन चीजों को आपके माइंड में याद कराने का काम लेक्चर करते हैं, विजुअलाइज कराते हैं जो चीजों को, यू नो, जब हम बताते रहते हैं तो उनको विजुअलाइज कराते हैं, समझाते हैं। That is the best thing, the most important, you know guys, समझ लीजिए the most important thing that is कि आप उन चीजों को विजुअलाइज करके समझते हैं, चीजों को और अच्छे से अपने माइंड में लाते हैं और न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते हैं, एक चीज को दूसरे से कनेक्ट करते हैं। दैट इज, जैसे आपके गाइज बुक में अगर कोई चीज लिखी है, अगर मान लीजिए बुक में आपके लिखा हुआ है कि इट्स एइडिन, AEIDEIN, है ना? तो आपकी बुक में कहीं ये मेंशन नहीं होता कि आपके यूजीसी नेट एग्जाम में ट्रेजेडी का जो गाइस TRAGEDY, ट्रेजेडी का ग्रीक वर्ड, कॉमेडी का ग्रीक वर्ड, आपकी बुक में कहीं नहीं ऐसा मिलेगा कि इनका ग्रीक वर्ड क्या है, ये आपके एग्जाम में आया है, क्या मिलेगा? ये सिर्फ आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा कि यार एक बार आया था, अगर आपने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा तो आप नहीं जानते उसके बारे में। भरोसा कीजिए मेरी बात का, मैं आपको 100% सही वाली बात बता रहा हूं, एग्जैक्टली, ठीक? वहां पर आपको सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कि टीचर है आपका क्लास में, तो आपका जो टीचर है वो क्लास में चीजों को लर्न करा देता है, समझा देता है, इसके साथ इसे भी याद रख लीजिए, है ना? बुक्स में कुछ चीजें लिखी होती हैं जिनको आप डायरेक्टली समझ सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर ही नहीं हो पाते। क्या है ये, कैसे इसको समझें, पता चले उसमें एक यू नो गाइस की जैसे बुकिश लैंग्वेज में लिखी होती है तो बुकिश लैंग्वेज कभी कभी नहीं समझ में आती। सो प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल होते हैं गाइस, है ना? यस, सो दिस इज या मोना मौर्य, यू कैन वॉच दिस वन क्लास फॉर LT grade 2, व्हाई नॉट? फॉर्म्स ऑफ पोइट्री चाहे किसी भी एग्जाम के लिए आप देखिए, फॉर एवरी सिंगल एग्जाम गाइज। 4 मिनट्स हमारे पास और हैं, एंड इफ यू वांट टू वॉच सो देन गाइज वॉच कीजिए। और एक इंफॉर्मेशन लास्ट में मैं आपको दे दूं, सो गाइज फॉर्म्स ऑफ पोइट्री आई वाज कवरिंग, एंड इफ यू वांट टू वॉच माय फ्री स्पेशल क्लास ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, सो कल मुझसे मिलिएगा गाइज। कल कौन सा डे है? सैटरडे। कल मुझसे मिलिएगा आप लोग, एंड डाउनलोड अनअकैडमी द लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, और फिर इसके बाद गाइज साइन इन कीजिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के। ये कोड है फ्री स्पेशल क्लासेस को अनलॉक करने का, ठीक है? एंड देन यू कैन एंजॉय माय क्लासेस बाय विजिटिंग माय प्रोफाइल, सर्च माय नेम देयर, AKS राजवीर सर्च कर सकते हैं, और यू कैन सर्च अंकित कुमार साहू राजवीर, ओके? और फिर आप कोर्सेज को परचेज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, पेड कोर्सेज। अगर आप नहीं पेड कोर्सेज चाहते तो आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की फ्री स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं। बहुत कुछ होता है गाइज ऑन दोज फ्री स्पेशल क्लासेस, बहुत कुछ आपको लर्न करने को मिलता है। एंड दिस इज द कोड फॉर 10% डिस्काउंट टू, अगर आप पेड कोर्सेज लेते हैं सो देन गाइज आप समझ लीजिए ये वाला, है ना? बिल्कुल। सो दिस इज व्हाट गाइज, एंड देन एक और इंफॉर्मेशन है लास्ट वाली गाइज, क्योंकि आज 17th ऑफ सितंबर है। आई होप सो गाइज आज 17th ऑफ सितंबर है, और आज 12 बजे गाइज, यानी 11:59 आज हमारा एक जो मतलब एक आपके लिए जो प्राइस थे भी, जैसे 3 मंथ और 1 मंथ सब्सक्रिप्शन वाले, तो ये कुछ चेंजेस होने वाले हैं। थोड़ा सा अमाउंट गाइज इनका इंक्रीज होने वाला है, 2900 से 3100 रुपए, और ये गाइज
6875 होने वाला है 622550 से। सो इनके प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं गाइस, ठीक है। सो यू मे टेक अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, या फ्री क्लासेस के लिए जिनको भी फ्री क्लासेस मेरी चाहिए ना अकेडमी पर, सर्च कीजिएगा मेरा नाम और वहां पर फॉलो पर क्लिक कर लीजिएगा। फॉलो पर अगर आपने क्लिक कर लिया तो मतलब आपने मुझे फॉलो कर लिया, और फॉलो करने का मतलब है कि फिर मेरी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी गाइस, ठीक है। चलिए, so thank you so much guys, always stay tuned with me, keep on learning, keep on doing good work, and you have learned in today's class forms of पोइट्री और बहुत कुछ मैंने आपको सिखाया गाइस, बिल्कुल। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। फिर से मिलेंगे अगली क्लासेस में, और तब तक के लिए गाइस आप अपना बहुत ही अच्छे से एंजॉय कीजिए और ख्याल रखिए, बिल्कुल गाइस। एंड या दिव्या सक्सेना टीजीटी पीजीटी, इसके लिए अगर आप मेरा नंबर जानती हैं तो आप मुझे डायरेक्टली वहां पर मैसेज कीजिए। यहां पर मैं सिर्फ यूजीसी नेट के लिए हूं, तो यूजीसी नेट की ही मैं यहां पर बात कर सकता हूं आपसे, ओके। फॉर मोर इंफॉर्मेशन, इफ यू आर यू नो माय नंबर, सो देन गाइज यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी देयर, और मैं वहां पर आपको रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय गाइज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गाइस जय हिंद, नमस्कार, गुड नाइट। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, एंड यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। वेलकम टू अन अकेडमी लाइव इन TA UGC net with AKSRajveer. So hey guys, is it clear or not please? Audio and video. Let me check, and please you can also confirm by dropping your message on comment box. All the learners, so hey guys, let's get started with this one session. In this session I'm going to cover major types of dramas in English literature. Going to cover from very beginning, I mean from Greco-Roman period till modern and post-modern period. So you all are most welcome, and guys please do join the session and share with your friends, share on your WhatsApp status, so that guys your other friends or your whatever guys, whoever they are, so they can also join. You can also share the link of the class on WhatsApp group or on social media platform like Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, anywhere guys. Just one share. One more information guys for you. I'm also taking daily free special classes on Unacademy platform. The timing of my daily free special classes is 9 a.m. guys. Yes, I'm taking daily free special classes, and the time is 9 a.m. every day guys. So how you can join my free special classes on the platform? For watching my free special classes on Unacademy, the learner app, you have to download Unacademy app from Google Play Store. And then you have to sign in by using your mobile number and email ID. And after that, you have to select NDA UGC net category as your goal and apply code Rajveer Live. This is the code for unlocking free special classes on Unacademy platform. By using this one code, you may also avail 10% discount on Unacademy platform, guys. And after watching my free special classes, you will receive credits, and those credits, guys, you can use during taking of paid classes. Like if you are going to take Unacademy plus subscription, so then by applying those credits, you may also receive 10% more discount. So guys, 10 for my referral code Rajveer Live, and 10% guys for what? So 10% for credit. So you may avail up to 20% discount on your Unacademy courses.
And these are the courses on Unacademy Plus going on, guys. Course of UPHESC. And you know, guys, what you are going to get. So in this course, you are going to get complete coverage of your syllabus, doubt session, and you can see, guys, batch learning is also there. You will get UGC net previous year paper solution, weekly quiz. Everything is there, guys, for you on Unacademy platform. And if you are targeting GRF on upcoming 2021 exam, like in October 2021, that is going to be held. So guys, you can also join my crash course on the platform. This is all about Unacademy, the learner app, and you know, guys, the program we are doing, or whatever, guys, we are doing on Unacademy platform. Now, this is the right time to start with the session, because I think right now, guys, I can see 27 students are there and they are watching my classes, guys. And I am going to cover forms of drama. In my previous class, guys, I have already covered forms of novel. Guys, you know, forms of novel. And guys, I have covered the novel like Gothic novel, epistolary novel, okay, and philosophical novel, different kind of novel like dystopian novel, utopian novel. बहुत सारे guys मैंने topic previous class में cover किए. This class is held for every single UGC net aspirant, PGT aspirant, PGT aspirant, or you are preparing for any exam, guys. Forms of drama is one of the important part. So first of all, to my all dear students, to all my dear learners, I would like to ask one question. Can you please tell me what the drama is? What is drama, guys? And can you please define drama in your words, or guys, you know, the words by someone else, like by any other playwright or any other critic, what they define, what is drama according to them. So guys, please do write your answer on comment box. What is drama basically, guys? Yes, hurry up please. What is drama? I want to know. और guys, इसके बाद हम इस क्लास को बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टार्ट करेंगे, guys. Yes. Hey guys, so now I think drama mean to be performed. Okay, Rama Rajsekharan. Okay, Sahnaz Parveen. Okay, guys, here. No one is answering. Only and only Rama Rajsekharan. Okay, guys. Drama basically, guys, as you have seen, different forms of writing are there, like poetry. Then you have, guys, drama, then non-fiction, okay, guys, non-fiction, and you can see, guys, fiction or novel, guys. So these are the forms of writing, guys. Got it? These all are the forms of writing. So drama, guys, it's the specific form of writing. Got it? It's the specific form of writing, and written for what, guys? Written for performance purpose. It may be a radio play. It may be a play on stage or in a theater, or sometime, guys, it may be a ballet, or sometime, guys, it may be a drama only to be read, guys. That is known as closed drama. Finally, guys, you can say drama means one thing, guys. Closely associated word, guys, with drama is to act. Because, guys, जैसे मैंने नाम लिया, like it's for theater performance. So then, guys, actors should be there, and actors जो होंगे वो actor performance करेंगे. ये भी बात आप समझ रहे हैं, guys. So the actor, they will perform. So guys, it means act. एक चीज, guys, जो ड्रामा के साथ बहुत ही अच्छी आती है, and that is, guys, always and always to act. Action and conflict, guys, these are the two most important part in a drama, guys. Without conflict, no development of drama. Without action, guys,
ड्रामा एग्जिस्ट नहीं करता. द ओनली एक्सेप्शन इज क्लोजेड ड्रामा गाइस. क्लोजेड ड्रामा. Closet drama is a kind of drama that basically guys the basic purpose behind writing closet drama is to only for reading, not for performance purpose. Now guys, let's get started with this one session. And guys, drama जो है सो ड्रामा में दो फॉर्म्स बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं. Inside drama you can see there are two forms. Okay, major forms guys like drama. एंड ड्रामा के अंदर गाइज आपको मिलेंगे दो फॉर्म्स. वन इज कॉमेडी एंड अनदर वन इज ट्रेजेडी गाइज. गॉट इट. एंड ट्रेजेडी इज नोन एज द ओल्डेस्ट फॉर्म जो गाइज इनमें से है. लेटर ऑन यू कैन सी कॉमेडी. एंड देयर वर ग्रेट ट्रेजेडियन इन ग्रीक ड्यूरिंग ग्रीको रोमन पीरियड. देयर वर ग्रेट ट्रेजेडियन गाइज. क्लासिकल पीरियड और Greek period guys. So there were three great tragedians: Aeschylus, Sophocles, and Euripides. Got it? Aeschylus, Sophocles, and Euripides. And the comedian like Menander and all was there guys. Aristophanes was there and Menander was there. So these are basically comic and tragic playwrights guys. And during Greek time period एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है guys. So there were two kind of masks. जो guys ग्रीक ड्रामा था so उसमें दो टाइप के मास्क होते थे. One mask guys so having face like this, another one mask guys having face like this. This symbolizes guys comedy and this symbolizes tragedy. Clear guys? And these dramas were performed during, after guys harvesting and all, in the worship of god Dionysus, the god of wine, or guys you can say the god of fertility. Okay guys, Greek god Dionysus was there और Dionysus की guys उसी के लिए perform किया जाता था in place. So then later on guys, after these plays and all, a critic came जो guys आपके लिए बहुत important है. Yes, the most important critic, क्योंकि ड्रामा की guys मैंने बात कर लिया. And Aeschylus, Sophocles, Euripides, these were the three great tragedians. And guys इन लोगों ने tragedy लिखी. Sophocles की guys Oedipus is one of the most important tragedy guys. Sophocles की Oedipus जो है Oedipus, Oedipus Rex, Oedipus the Rex guys or Oedipus the King is one of the important tragedy और इसी को guys Aristotle ने analyze किया. And then guys you can also see Orestia trilogy is also there guys. Orestia trilogy, Orestia and Trilogy guys, trilogy. I don't know guys who is the author of Orestia trilogy. If you are familiar with Orestia trilogy, so then do write on comment box और मुझे भी पता चलेगा. Now guys, this one definition is the backbone. If you are a UGC net aspirant or you are preparing for exam like GIC lecturer or any other competitive exam, so at least guys you should know what is this and what is tragedy, who defined tragedy and where he defined, and what are the other elements. At least आपको जानना चाहिए. And guys कि आपको हो सकता है believe now, Aristotle I think guys in every single exam what I mean guys, every single exam I mean like exam like UGC, GATE, SET and BGT exams, TGT exams, you can see a question. एक क्वेश्चन गाइस इनसे बड़ा फिक्स रहता है एरिस्टोटल से. Aristotle he defined tragedy where guys in his work Poetics. And how many chapters are there guys? Yes, how many chapters are there in Poetics? Guys आप मुझे बता सकते हैं. How many chapters are there guys? And this is the definition जहां पर guys आपके जो एरिस्टोटल है, so he defended basically tragedy or
वर्स और पोइट्री गाइस। ये कहानी तो बहुत बड़ी है गाइस, कि प्लेटो वॉज देयर एंड प्लेटो सो मास्टर ऑफ एरिस्टोटल, यानी इनके गुरु जी थे प्लेटो एरिस्टोटल के। एंड प्लेटो ही क्रिटिसाइजेस पोइट्री। अब देखिए गाइस, बहुत सारे लोग जब ये सुनते हैं पोइट्री कि प्लेटो ने पोइट्री को क्रिटिसाइज किया, तो उसका ट्रेजेडी से क्या कनेक्शन है गाइस? इफ प्लेटो ही क्रिटिसाइज्ड पोइट्री एंड पोएट्स, सो भाई कनेक्शन एरिस्टोटल और एरिस्टोटल की ट्रेजेडी से क्यों बनता है गाइस? इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर। Poetry, guys, you all are familiar, is known as the oldest form of writing. Got it? And during classical time period, most of the works, so those works were written in poetic format, guys. And that's why, guys, these tragedies were also part of verses, or these tragedies were known as poetic plays. Poetic plays. आपको पता होगा गाइस, ड्यूरिंग मॉडर्न टाइम पीरियड T.S. Eliot, W.B. Yeats, W.H. Auden, Christopher Fry, and also guys, these all revived this kind of pattern or plays. Got it guys? I hope so कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। Now guys, I'm going to tell you something more special. Basically guys, you can see that this one definition, और इस definition को थोड़ा सा guys अगर आप समझ गए तो आप समझिए एक क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हैं ऑन अपकमिंग एग्जाम। ये मेरा गाइस भरोसा है कि एटलीस्ट वन क्वेश्चन जरूर होगा आपके एग्जाम में, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम गाइस आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है, जरूर से जरूर मिलता है गाइस। ट्रेजेडी देन इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एन एक्शन। According to Aristotle, it is not possible to depict the whole life of anybody. Got it? किसी की भी पूरी जिंदगी को डिपिक्ट नहीं किया जा सकता। That's why an action, and that is serious. It should not be comic one, क्योंकि एरिस्टोटल ने गाइस कॉमेडीज को एक्सेप्ट नहीं किया। Complete, it should also be complete. Guys, the deed of your life, the action of your life, कि उसका रिजल्ट भी होना चाहिए गाइस। And certain magnitude in language embellished with each kind of artistic ornament and other things guys, ornament several kind being found in the separate part of the play in form of action, not of narrative, and through pity and fear affecting proper purgation guys. This is important, proper purgation of these emotions. So ये तो guys एरिस्टोटल की बात होगी। Catharsis guys, this is what is it proper purgation of these emotions, कि जो हमारी impurity है, impurity of heart, impurity of mind, impurity in thoughts and all, whatever it is guys, so वो wash out हो जाती है in theater। चलिए ये सारी बातें हम मान लेते हैं गाइस, और एरिस्टोटल को एटलीस्ट हम यहां तक सपोर्ट कर लेते हैं। विद एरिस्टोटल देयर आर अ फ्यू टर्म्स जिनके मैं नाम लिख दूंगा, बताऊंगा नहीं ज्यादा गाइस, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा guys, like catharsis, catharsis, imitation guys, imitation में इनका क्या आइडिया था गाइज, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। पेरीपीटिया को जरूर गाइज पढ़ना चाहिए, PETEIA गाइज है ना, पेरीपीटिया। एंड एनाग्नोसिस गाइज है ना, ये जरूर आप पढ़ लेंगे एटलीस्ट किसी भी एग्जाम में जाने से पहले। एनाग्नोसिस गाइज, पेरीपीटिया है ना, यस। एंड कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल प्लॉट के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, बाकी आपको ज्यादा जरूरत नहीं। नाउ गाइस, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अगर हम फॉर्म्स ऑफ ड्रामा पढ़ रहे हैं, सो एटलीस्ट हमें जानना चाहिए ड्रामेटिक स्ट्रक्चर के बारे में। बिकॉज गाइस, अ ड्रामा, सो इट आल्सो हैज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर इन इटसेल्फ। बात मेरी मान लीजिए गाइस, यस। ड्रामा, सो जो गाइस ड्रामा होता है, इसमें एक कंप्लीट इसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है गाइस, और इस स्ट्रक्चर को आप क्या कह सकते हैं, सो मैं आपको बताने वाला हूं। बेसिकली गाइस थोड़ा सा मैं टेस्ट कर रहा था, गॉट इट, यस। सो देखिए, जो ड्रामा का स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए वहां पर प्लॉट की जरूरत होती है गाइस, प्लॉट वाली जरूरत। एंड व्हाट इज प्लॉट?
देखिए भाई, अगर कोई कहानी हो और कहानी आप कहीं से भी बताना शुरू कर दो, फिर कहीं चले जाओ, फिर कहीं से कहीं आ जाओ। कुछ लोग होते हैं जैसे आपको बताते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए आपका छोटा भाई है ना, छोटा भाई बहुत इमेच्योर हो, और इमेच्योरिटी में वो क्या करेगा, जैसे आप पूछेंगे कहाँ गए थे, है ना, लाइक दिस। जैसे ही आप उससे पूछेंगे अच्छा ये बताओ तुम कहाँ गए थे, तो आपका छोटा भाई गया, मैं वहां गया था ना, फिर वहां पर मुझे ये मिल गया, फिर मुझे वहां पर ये हो गया, फिर मैंने ऐसे किया, फिर मैंने वैसे किया। मतलब झूठ ऐसे ही बोलते बोलते पता ही नहीं चलेगा गाइस वो स्टोरी बताना क्या चाहता है, लाइक दैट। बिकॉज प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट इज नॉट देयर, and if incidents, those incidents are not properly arranged, so not possible to understand it easily, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो guys, no problem. So dramatic structure is also there, plot is there and dramatic structure, कब कौन सी चीज होगी, like exposition, rising action, climax, falling action and denouement guys. मोस्ट प्रोबेबली ड्रामा गाइस, जो ग्रीक ड्रामा था, प्लीज आपको याद रखने की जरूरत है, इन ग्रीक ड्रामा देयर वाज नॉट डिवीजन ऑफ प्लेस, यू नो गाइस, प्लेस वर नॉट डिवाइडेड इनटू एक्ट्स। ये सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है गाइस। प्लेस वर नॉट डिवाइडेड इनटू एक्ट, इवन इडिपस द रेक्स और इडिपस द किंग इज नॉट डिवाइडेड इनटू एक्ट्स। एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री बाय जॉन ड्राइडन, सो इन दैट प्ले यू कैन सी गाइस कि वहां पर डिस्कशन होता है कि दोज मास्टर्स they you know guys, they never paid heed towards dividing a play into acts and scenes. उनके जो प्ले है डायरेक्टली स्टोरी की तरह लिखते हुए। ओके, सो एक्ट एंड सीन डिवीजन इज ऑल्सो। ये गाइस जो आप ये देख पा रहे हैं ना, ये 5 एक्ट का स्ट्रक्चर। फर्स्ट एक्ट एक्सपोजिशन, सेकेंड एक्ट राइजिंग एक्शन, थर्ड एक्ट क्लाइमेक्स, फोर्थ एक्ट फॉलिंग एक्शन एंड फिफ्थ एक्ट डिनोमेंट गाइस। अब थोड़ा सा इधर साइड आइए, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल गाइस, देयर आर अ फ्यू एलिमेंट्स, है ना, देयर आर अ फ्यू एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, spectacle guys. So there are a few elements of a tragedy. एक ड्रामा के गाइस कुछ पार्ट होते हैं, एंड विदाउट these पार्ट्स गाइस, ड्रामा जो होता है वो इनकम्प्लीट कंसीडर करते हैं एरिस्टोटल गाइस। गॉट इट? एरिस्टोटल उसे इनकम्प्लीट कंसीडर करते हैं। सो एक चीज और भी आप क्लियर रखिएगा, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, एंड गाइस ड्रामा में क्या क्या एलिमेंट्स होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट गाइस। गॉट इट? जैसे गाइस आप देखते हैं एक्सपोजिशन गाइस। सो एक्सपोजिशन क्या होता है, जैसे मैकबेथ प्ले ओपन हुआ, सो इन द बिगिनिंग यू कैन सी स्टोरी इज देयर, वहां पर इंट्रोडक्शन होता है, हु इज मैकबेथ, हु इज किंग डंकन, हु इज दिस, हु इज दैट, सो दैट इज एक्सपोजिशन। प्रॉब्लम और ऑब्स्टिकल गाइस, इन फ्रंट ऑफ मैकबेथ यू कैन सी अ प्रॉब्लम इज देयर, और प्रॉब्लम कौन सी है गाइस? सो प्रॉब्लम ये है, जो राइजिंग एक्शन है, मैकबेथ इज प्लानिंग कि मर्डर कर दूंगा मैं किंग डंकन का, एंड देन लेटर ऑन गाइस यू कैन सी कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट। और यू कैन से गाइस ये एक जो पार्ट आता है क्लाइमेक्स वाला, क्लाइमेक्स वाले पार्ट में गाइस ये आता है कि वो अपनी जो क्राइम करने की हाइट है उस तक पहुंच जाता है, एंड देन फाइनली फॉलिंग एक्शन गाइस, एंड फ्रॉम देयर यू कैन सी कि जो मैकबेथ है वो रियलाइज करना शुरू कर देता है कि whatever I did in my life that is not so proper, that is not so good. So realization started, and then later on guys you can see the last one part, resolution. In the last one part you can see murder of King Macbeth by Macduff, और finally guys you know story में जो poetic justice था वो आ जाता है ना। So structure is also there guys. Unity is also there according to Greek you know guys, Greek tragedies and all. And according to Aristotle, there must be 3 unities. वो तो आप जानते हैं guys. TPA means unity of time, unity of place, unity of action guys. Got it? TPA is also important, and these are the key elements guys. Unity of time, unity of place, unity of action. ये सारी चीजें guys आपको समझ में। And Aristotle always he preferred which kind of plots?
कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स गाइड जो एरिस्टोटल ने प्रेफर किया है। सो कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स को गाइड, जो कॉम्प्लेक्स होता है ऐसे प्लॉट्स को रेफर किया है। व्हाई गाइस? बिकॉज एनाग्नोसिस एंड पेरिपीडिया इज देयर इन कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स। अब थोड़ा सा गाइस आगे आएंगे और अब समझने की कोशिश करते हैं ग्रीक ट्रेजेडीज के बारे में गाइस। गॉट इट? ग्रीक ट्रेजेडीज, यहां से शुरू होती है हमारी मेन कहानी। अच्छा गाइस, ग्रीक ट्रेजेडीज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या है? एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इन ग्रीक ट्रेजेडीज, देखिए गाइस, ग्रीक ट्रेजेडीज में सबसे बड़ी बात आपको पोएटिक जस्टिस नहीं मिलेगा। पोएटिक जस्टिस, नो, से नो टू पोएटिक जस्टिस। व्हाट इज पोएटिक जस्टिस? पोएटिक जस्टिस की जहां पर जो गुड होगा उसे कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो बैड होगा गाइस उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। बट इन ग्रीक ट्रेजेडीज यू कैन सी absence of poetic justice. The term poetic justice is associated with whom? Answer is Thomas and Rhymer, Thomas Rhymer, guys. Got it? Thomas Rhymer, so he was talking about poetic justice. Greek tragedies, guys. So Greek tragedies are tragedy of a person. Of a person, guys. Yes. पर्सन, जैसे आप देखते हैं वहां पर कि गाइस आपके इडिपस को कोई गाइस, इडिपस ही वाज नॉट डूइंग व्हाट आई विल डू, वो तो उसका बर्थ हुआ, प्रोफेसी इज देयर कि तुम ऐसा करोगे, मतलब जो ये बेटा है आपका सो वो ऐसा करेगा, जब बड़ा होगा अपने फादर को मार देगा, अपनी मदर के साथ मैरिज कर लेगा। सो गाइस यू कैन सी दिस इज द रोल ऑफ फेट समवेयर। ही वाज डेस्टिनाइड बेसिकली, मतलब ऐसा कोई पर्पस नहीं मुझे लगता, आई थिंक गाइस ऐसा कोई पर्पस नहीं था। ही वॉज जस्ट डेस्टिनाइड, मतलब डेस्टिनी ही थी उसकी कि तुम ऐसा करोगे, अपने फादर को मार दोगे गाइस, एंड ही वॉज टोटली अनअवेयर। इन ग्रीक ट्रेजेडीज गाइस यू कैन सी जो हीरो होगा वो अपर क्लास सोसाइटी से कम गाइस होना चाहिए। हीरो, अ नोबल मैन गाइस। अच्छा, नोबल मैन क्यों? बिकॉज सफरिंग ऑफ कॉमनर्स, जैसे मान लीजिए गाइस कोई कॉमन मैन सफर करता है तो कॉमन मैन की सफरिंग पर बहुत ज्यादा किसी को तकलीफ नहीं होती। इवन विलियम शेक्सपियर ने एक जगह पर लिखा है कि अगर किसी प्रिंस या किंग की डेथ हो जाती है तो आसमान भी रोने लगता है, आसमान के जो तारे होते हैं गाइस वो भी रोने लगते। बट ऑन डेथ ऑफ अ कॉमन मैन, on a death of a common man, no one is going to be heat. Got it? अब एक चीज देखिएगा, जैसे जब किंग डंकन का मर्डर होता है इन प्ले मैकबेथ, सो यू कैन सी देयर इज अ थिंग एंड दैट इज नोटिसेबल कि जो गाइस एटमॉस्फियर था दैट वाज क्वाइट चेंज्ड। सुबह से लेकर के तूफानी हवाएं चल रही थी। क्रो, सो गाइस यू नो जो क्रो थे, सो क्रो वो भी अपना चिल्ला रहे थे, यू नो गाइस, यस, and different kind of activities and horrible atmosphere you can see. Horrible atmosphere, वो भी आपको चीजें देखने को मिल जाती। Greek tragedies are tragedy of a man जो सफर करेगा without existence of poetic justice. Greek tragedies were not divided into acts, and in Greek tragedies guys what you can see, suffering of hero, and at the end of the work you can see the loss of the person. वो guys, you know, finally meeting with disaster. Having 3 unities, having key elements, and having 6 main elements and all guys. So all the Greek tragedies are based on this one pattern. Like Orestria trilogy is also there. In Orestria trilogy you can see at the end of the work death of someone guys. है ना? या आई थिंक मेरे साइड से इशू है। ओके गाइज, यस। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, एंड गाइज अब थोड़ा सा आगे जब आएंगे तो अब हम जानेंगे रोमन ट्रेजेडीज के बारे में।
जब मैंने स्टूडेंट्स को क्रिटिसिज्म पढ़ाया था, ऑल माय प्लस स्टूडेंट्स और मे बी गाइस जो प्लस में नहीं है, जो लोग भी मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस भी वॉच करते हैं, so like criticism begins from where? So guys, criticism or literary criticism, so it is started with the Plato, then Aristotle, and it was shifted then Rome. On the same way, tragedies, so guys, you know, the writing of tragedies, so that was started in Greek, and then from Greek, Romans. And you must remember guys कि जो Greek ने tragedy, जो Greek playwrights ने tragedies लिखा है, so in tragedies को Roman ने copy किया, got it? But by adding a few elements, and these Romans guys, so these Romans were followed by English, you know guys, playwright. जो English playwrights थे तो उन लोगों ने Romans को follow किया था, and मैं आपको ये सारी चीजें अभी बताने. Roman tragedies guys. Roman tragedies are famous for what? Roman tragedies are famous for revenge. Roman tragedies famous for revenge guys. There was a man, and the name of man was Seneca guys. You know, the name of man was Seneca. And Seneca was a Roman playwright, and he was quite interested in writing tragedies. And these tragedies, the theme of these tragedies were based on what? So the theme of these tragedies were based on revenge. With ghostly atmosphere, personification of revenge, coffins, and other kind of macabre elements basically guys were introduced. मैंने वर्ड यूज कर दिया macabre, but guys you know macabre elements जॉन वेबस्टर ने इंग्लिश लिटरेचर में यूज किया था, and John Webster later on he was imitated by Gothic novelists guys, है ना. So Roman tragedies में guys सबसे बड़ा जो नेम है, so the name is of Seneca. And you must remember Seneca was imitated by the English playwrights guys. English playwrights. And you can see guys Christopher Marlowe, so he came up with a work. What is the name of the work? So that is Jew of Malta. In Jew of Malta you can see story of revenge is there. After Christopher Marlowe, William Shakespeare is there. And William Shakespeare in his Coriolanus and in Hamlet, he imitated this great Roman tragedy. He wrote revenge plays, and in those revenge tragedies depicted his heroes, their deeds, their action, their suffering, their, you know guys, thinkings and all, everything he represented. Revenge tragedies are packed with, as I have already told, ghostly atmosphere. And in revenge tragedies, guys, you can see revenge is there. Revenge, the personification of the revenge is there. Yeah. So a few things, guys, आप जो देख सकते हैं revenge tragedy में. And the very first English tragedy. Remember, the very first English tragedy, Garbodok, was also patterned on revenge pattern. Guys. Got it? जो Garbodok play है, so that is also based on a revenge. Garbodok or Ferex and Porrex by Norton and Shackwell. See, a revenge theme is there. Queen Videna. Okay? And two sons like Ferex and Porrex. King of England is there, guys. And yes, finally, you can see the revenge. So the very first tragedy, even that was also written in a pattern known as revenge tragedy. You know, during Jacobean time period, revenge was not considered as pious. कि जो revenge होता है ये अच्छी चीज नहीं. Even revenge is a kind of wild justice. Revenge is a kind of wild justice directly, guys,
The statement came from Francis Bacon. And Francis Bacon, he made this statement, revenge is not pious one, it's a kind of wild justice. But still, Jacobean playwrights, Elizabethan playwrights, they were focusing on revenge. There is one more revenge tragedy, Spanish Tragedy by Thomas Kidd, Duchess of Malfi and the White Devil by John Webster, and Revenger's Tragedy. A number of revenge tragedies are there. And among revenge tragedies guys, जैसे हैमलेट का नाम बहुत ही अच्छे से लिया जाता है, one of the best tragedies. लेकिन मैं गाइज इनसे पहले अगर थोड़ा सा लाइक रिवेंज ट्रेजेडीज से पहला अगर मैं इसे थोड़ा सा कवर करता, लाइक मिस्ट्री प्लेस, मिरेकल प्लेस, मोरालिटी प्लेस एंड इंटरव्यू. ये इस सीक्वेंस को थोड़ा ऐसे समझे आप, लाइक ग्रीक पीरियड गाइज है ना, ग्रीक प्ले राइट्स, देन रोमन्स, एंड देन यू कैन सी मिस्ट्री, मिरेकल, मोरालिटी प्लेस, then Elizabethan playwright, and then other playwrights. This is the right sequence कि जिससे हमें चलना चाहिए. Mystery plays, so you know guys, mystery plays they came out of liturgy guys. Means जो Bible, Psalm and all होते हैं ना guys, yes, associated with Bible. Basically mystery plays की अगर मैं guys बात करूं, so mystery plays based on holy scripts guys. Like such as creation of the world, flood, life of saints and all. Miracle plays guys, so miracle plays जो है वो saint की life पर basically based होंगे, and miracle by the saints like Saint George and the dragon, killing of dragon by Saint George. Morality plays, you can see personification of good and evil, personification of good and evil. And interlude guys, so interludes were interesting fun. छोटे छोटे guys episode होते थे interludes. Yes. And there is a play जिसका नाम है 4Ps. अगर किसी को याद है guys 4Ps. This is one of the interesting work. Every man is also there guys. Yes. Every man is also there. Every man भी बहुत ही बढ़िया work है. Now guys, अब तो मैंने बात कर ली आपसे revenge tragedies that were popular during Elizabethan time period, and other playwrights was also there, like history plays were written guys, and romantic comedies were also written during Elizabethan and Jacobean time period. But थोड़ा सा आगे आते हैं guys. Elizabethan and Jacobean tragedy. Elizabethan and Jacobean tragedy में guys एक चीज जो हमें देखने को मिलेगी, in Aristotle's work, what we can see in Aristotelian basically guys, you know, concept of tragedy, we can see hero so must be from higher rank. On the same way, William Shakespeare or Elizabethan playwright, they were also thinking कि high status का होना चाहिए. But must remember guys, जो क्रिस्टोफर मार्लोव है, CM क्रिस्टोफर मार्लोव. So क्रिस्टोफर मार्लोव, he was not of the view कि जो हीरो है सो हीरो अपर क्लास से होना चाहिए गाइस. क्रिस्टोफर मार्लो को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. इवन गाइस ही मेड यू नो हीरो ऑफ हिज वर्क लाइक सेफर्ड गाइस है ना, ज़ू ऑफ माल्टा, बेसिकली नॉट गाइस यू नो सो मच गुड मैन, बट स्टिल उन्होंने अपने मेन कैरेक्टर यू नो गाइस अ मैकियावेलियन हीरो और विलन गाइस है ना, ऐसे कैरेक्टर को आप देख सकते हैं उन्होंने अपने वर्क्स में मेजर प्लेस. बट इन एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी का जो प्रोटैगनिस्ट होगा सो हाई स्टेटस होना चाहिए, एंड दैट इज नोबिलिटी, मिलिट्री रैंक, कमांडर, किंग, प्रिंस, कुछ ऐसा होना चाहिए. एंड एट द एंड ऑफ द वर्क, ये जो गाइस नोबल मैन है, द मैन ऑफ हाई स्टेटस, क्योंकि गाइज आप एक चीज याद रखिएगा, यहां पर वुमेन्स को हीरो नहीं बनाया गया. इन ट्रेजेडीज यू कांट सी फीमेल्स आर नॉट देयर. फीमेल्स को रिवेंज ट्रेजेडीज एंड ऑल का मेन कैरेक्टर नहीं बनाया गया. हाँ, अब अगर आप कहें कि डचेस ऑफ मल्फी इज देयर, जहां पर सर एक गर्ल को लीड रोल में रखा गया है गाइज, बट देयर बोसोला प्लेड प्रोमिनेंट रोल.
Okay, Bosula, so he played prominent role basically in Duchess of Malfi. So at the end of the work, the death of hero, the death of the lead character, the death of the protagonist is important. In a play, at the end of the play, guys, death is important. जैसे पहले की मूवीज आती थी, और अगर आप देखेंगे इस पहले की मूवीज में, तो जैसे आपके अमरीश पुरी होंगे, है ना गाइस? यस. सो अमरीश पुरी अगर होंगे तो अमरीश पुरी एट द एंड ऑफ द मूवी, तो आपको तो पता है उनका कल्याणा मस्तु कर दिया जाएगा. वो तो मतलब 100% यूनिवर्सल है, कल्याणा मस्तु होने वाला है. डेड श्योर गाइस, आई एम टेलिंग, है ना? यस. So Elizabethan and Jacobean tragedies that were based on people of high rank or high status, guys. Yes. And this kind of tragedies where you can see ghosts are there and this kind of atmosphere is there. So wo revenge tragedies and all the guys is time period key. One more popular form you can see in drama during Elizabethan and Jacobean time period. And the form of writing is known as tragic comedy, guys. Got it? Yes. In form of drama, you can see one more pattern is there, and this is known as tragic comedy, guys. Tragic comedy. What are tragic comedies? So tragic comedies are fine blend of tragedy plus comedy. Tragic comedies are fine blend of tragedy and comedy, mixing of tragic and comic elements in plays. And the term basically is associated with Roman dramatist Plautus. Plautus and Terence was there. ये बहुत ही अच्छे guys, you know, comedians थे Plautus and Terence during 2nd century BC. Among the well-known tragic comedies like William Shakespeare's Merchant of Venice, this is known as one of the best guys comedy, tragic comedy ever penned by any. John Fletcher, guys. So yes, you can see the Faithful Safer Dresses. This is a work known as tragic comedy. And Samuel Beckett, अगर guys postmodern time period में देखें, so example of tragic comedy is Waiting for Godot and Harold Pinter's The Dumb Waiter. So these are the example of tragic comedies. Means tragic elements with comic elements, or you can say blend of tragic and comic elements. Both kind of elements you can see in plays. Got it? आई होप सो कि आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे जिन बातों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं. अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर इवन गाइज आपको पता होना चाहिए, इन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री ट्रैजिक कॉमेडीज को कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया. इवन जो फ्रेंच प्ले राइट्स को प्रेजेंट करने वाले आपके लिसीडियस, He said कि हमने कभी ट्रेजेडी और कॉमेडी की खिचड़ी नहीं बनाई है ना गाइस. यस, ट्रेजेडी और कॉमेडी वाली जो खिचड़ी है हमने कभी नहीं बनाई गाइस. एंड हु सेड सो? सो डायरेक्टली गाइस आपके लिसीडियस ने कहा. एंड यू नो गाइस क्राइट्स, सो क्राइट्स के भी अपने व्यूज थे कि ट्रेजेडी एंड कॉमेडीज बोथ शुड बी डिफरेंट, है ना? या गाइज आई नो ट्रेजेडी एंड कॉमेडीज बोथ आर डिफरेंट. बिल्कुल गाइज बात सही है, नो प्रॉब्लम. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू ड्राइडन, ट्रेजिक कॉमेडी इज नियर टू लाइफ. नियर टू लाइफ गाइज. यस, ट्रेजिक कॉमेडी इज नियर टू लाइफ. एंड हाउ इज नियर टू लाइफ? इट मीन्स बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल, है ना? ट्रेजेडी एंड कॉमेडी मीन्स ट्रेजिक कॉमेडी इज नियर टू लाइफ बिकॉज हमारी जो जिंदगी है ना, वो गाना ना, कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम. सुना है ना आपने? और जिन लोगों ने ना सुना हो तो आप सुन लीजिए भाई.
और सुनना बहुत जरूरी। एंड यू नो गाइस, ट्रेजिक कॉमेडी इज द परफेक्ट पैटर्न और परफेक्ट फॉर्म, है ना? यस गाइस। पता है, जल्दी आपके लिए मेरा लग जाएगा इंटरैक्टिव बोर्ड। इंटरैक्टिव बोर्ड गाइस, है ना? और इंटरैक्टिव जब बोर्ड लग जाएगा तो उसमें पढ़ाने का जो मजा होगा ना, अभी तो मैं बैठ के पढ़ाता हूँ, फिर इंटरैक्टिव बोर्ड जब लग जाएगा, सो लाइक तलवीर सर, है ना? लाइक तलवीर सर, बहुत ही मजे से मैं पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। हाँ गाइज, इम्पैशनली वेटिंग फॉर इंटरैक्टिव बोर्ड। बस गाइज, इंस्टॉल होने में कुछ ही समय बाकी है एंड सून गाइज आई एम गोइंग टू लॉन्च। मजा आ जाएगा इंटरैक्टिव बोर्ड में गाइज, पढ़ने का एक अपना आनंद है। पर मुझे लग रहा है कि मैं ज्यादा कूद फान ना करने लगूं, मैं चिल्लाता बहुत, मैं ज्यादा तेज बोलता हूँ और कूद फान ना करने लगूं, पता चले जोशीले अंदाज में आ गया तो किसी दिन पेन को ही पटक दिया, है ना? लाइक एक गाइज टीचर है ना जो यूट्यूब में पढ़ाते थे, जय महाकाल 5000 लाइव होना चाहिए, आज पढ़ाऊंगा नहीं, मैं कलम नहीं छूऊंगा जब तक 5000 लाइव नहीं आएंगे, लाइक दैट, है ना? यस। सो मे बी ऐसा ही ना मैं भी हो जाऊं, मुझे भी डर लग जाता है कभी कभी कि मतलब मैं भी वायलेंट ना हो जाऊं, बट गाइस आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं वायलेंट ना हूं, साइलेंट ही रहूं, है ना? एकदम बहुत ही गाइस, यू नो, सिंपल मैनर, लाइक दैट। थोड़ा सा गाइस, ये आपका पता है कॉमिक रिलीफ कहलाता है मेरी भाषा में। अभी तक आप ट्रेजेडी में थे गाइस, आपने जाने कितना सारा सुना होगा, आपका दिमाग बिल्कुल पैक्ड हो गया होगा। तो गाइस, ये जो मैंने अभी आपसे बातें की ना और मैंने एक एग्जांपल दे दिया, ये कॉमिक रिलीफ कहलाती है गाइस। अगर ये ट्रेजेडीज में किसी होता, लाइक किसी ट्रेजेडी का पार्ट, तो ये कॉमिक रिलीफ कहलाता है ना? लर्न कीजिए। या ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग, क्योंकि गाइस लर्न करने में ही भलाई है, बाकी और किसी चीज में कोई भलाई नहीं है, मान लीजिए इस बात का गाइस, है ना? यस। इन बिटवीन जो ये मैंने बातें कर ली, हंस लिया ना, जय महाकाल एंड ऑल बोल दिया, सो दैट इज, यू नो, पार्ट ऑफ लाइफ, है ना? कॉमिक रिलीफ से जोड़ दीजिए। डोमेस्टिक ट्रेजेडी गाइस, अब नाम से ही पता चल रहा है, डोमेस्टिक मतलब घर वाली, एंड ट्रेजेडी गाइस, तो आपको तो पता ही है कि डोमेस्टिक ट्रेजेडीज आर द ट्रेजेडीज बेस्ड ऑन, यू नो गाइस, प्रोटैगनिस्ट जो मिडिल, ऑर्डिनरी मिडिल क्लास या लोअर इंडिविजुअल मिडिल क्लास से होंगे गाइस, है ना? क्योंकि इसे अगर हमारी भाषा में कहा जाए तो इसे कहा जाता है घर की महाभारत। जो घर में ही महाभारत होती है ना गाइस, या फिर कह दीजिए ग्रह युद्ध, ग्रह युद्ध वो वाला नहीं गाइस, घर में ही जो ग्रह युद्ध चल रहा। So that is basically domestic tragedy. And in this kind of drama, protagonists are ordinary middle class or lower class individuals. And the protagonists are of aristocratic rank and sows their downfall in their affair of state as well as personal matter. और होने क्या वाला है guys? In this kind of tragedies, domestic violence can be seen guys. जो lower class people हैं guys, सो घर में होने वाली तमाम टाइप की कहानियों के बारे में शेयर करने वाले। एंड द बेस्ट वेल नोन एग्जाम्पल गाइस, है ना? यस, वेल नोन एग्जाम्पल लाइक टॉमस हेवुड्स अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस। गॉट इट? अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस, यॉर्कशायर ट्रेजेडी, द विच ऑफ एडमॉन्टन एंड ओथेलो गाइस, यस, डोमेस्टिक ट्रेजेडी। और ओथेलो को लेकर के गाइस कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया था, लाइक टॉमस राइमर ने सबको गाइस, यू नो, अवेयर किया था, टू ऑल द गर्ल्स, कि हे बडीज प्लीज बी अवेयर, प्लीज टेक केयर ऑफ योर व्हाट गाइस, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हैंकी, वरना अगर किसी दूसरे ने हैंकी मार दी तो पता चले आप हैंग हो जाएंगे, है ना? क्योंकि ओथेलो गाइस, यू नो, इंस्टेंट एक्शन, और फिर क्या, रिजल्टेड इनटू ट्रेजेडी। बाद में फिर रोना धोना होता है, अरे मैंने गलती से मार दिया, मैंने जल्दी में निर्णय ले लिया। व्हाट इज दिस जल्दी में निर्णय ले लिया? दिमाग नहीं था क्या पहले, है ना? बाद में उसे बोलते गए, यू नो, घड़ियाली आंसू। यस, सो दिस इज, सो यू नो गाइस, ओथेलो इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डोमेस्टिक ट्रेजेडी।
Domestic tragedy, where you can see, guys, a girl is there, Desdemona is there, Othello fall in love with Desdemona, and guys, both of them were living together, but later on थोड़ा सा शक कुछ है क्या गाइस, है ना। और कुछ लोग ऐसे जो शक वाला स्वभाव है ना, तो आजकल भी डोमेस्टिक ट्रेजेडीज होती है, बट गाइस डोमेस्टिक ट्रेजेडीज इन बिटवीन लवर्स, जैसे जो लवर्स के बीच में आजकल डोमेस्टिक ट्रेजेडीज होती है, उनका मतलब कुछ अलग ही टशन रहता है गाइस, है ना। कैसे, लवर एंड बिलवेड बोथ ऑफ देम गाइस, उनकी मीटिंग हुई, मान लीजिए कोई पार्क है, किसी पार्क में मीटिंग हुई, सो गाइस लवर का जो पूरा का पूरा ध्यान रहेगा, पता है कैसे, कि काश मुझे इसका मोबाइल देखने को मिल जाए, मैं जरा चेक करूं क्या क्या करती है, और उसे याद रहता है लवर को कि कब लास्ट टाइम मैंने जब लगाया था तो वो बिजी जा रहा था या बिजी जा रही थी, लाइक दिस। एंड गर्ल मे बी ऑल्सो थिंकिंग कि हाँ आज मैंने देखा बिजी जा रहा, एंड गाइस उसके माइंड में होता है मैंने 4:50 पे फोन लगाया था, 4:50 PM पे, है ना। एंड बाय द वे, अगर 12 बजे रात को आप बात करते मिल गए, भले ही आप गाइस किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, उसे ब्लड की जरूरत हो, आपका ब्लड मांग रहा हो, मतलब यू आर अ गर्ल अ बॉय वट एवर गाइस इट इज, और 12 बजे रात को अगर आप उससे खून के बारे में बात कर रहे थे ना, कि ब्लड एंड ऑल, और अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको फोन कर दिया, तो फिर क्या है गाइस, है ना। 12 बजे रात को वो किससे बात कर रही थी, लाइक दैट, शेयर स्क्रीनशॉट, प्लीज शेयर स्क्रीनशॉट, वरना कहो मोबाइल में ही महायुद्ध हो जाए। सो आजकल कुछ डोमेस्टिक ट्रेजेडीज इस टाइप की होती है। डोमेस्टिक ट्रेजेडीज गाइज चेंज नहीं हुई है, बस डोमेस्टिक ट्रेजेडीज गाइज वैसे ही है, बट पैटर्न चेंज, पैटर्न गाइज, या डोमेस्टिक ट्रेजेडीज वही चल। हाँ, साइको लवर्स, तब तो गेम खत्म, या गाइस, बिल्कुल बिल्कुल। आपको जाने कितने सारे कस्में, आपको अपना प्यार प्रूव करने के लिए कितने सारे कस्में वादे करने पड़ते हैं कि नहीं नहीं, एंड इन बिटवीन आपको ये भी बोलना पड़ता है, नहीं बाबू, आई वॉज नॉट डूइंग, है ना। ये गर्ल हो या बाबू, बाबू कॉमन वर्ड है, ये बाबू जो चलता है ना, कॉमन वर्ड है, बहुत ही कॉमन है गाइस, कॉमन, टू कॉमन। नहीं बाबू, मैं तुम्हें ऐसा नहीं कर सकता या सकती, है ना। फिर इसके बाद क्या, नहीं करो, तुम करो, कोई दिक्कत नहीं फिर गाइस। और ये वैसे ही हाल होता है ना, जैसे जब दो लोग फाइट कर रहे हो, तो वहां पर दो लोग जैसे जब फाइट कर रहे होते हैं, तो जो लोग उनको पकड़ते हैं कि अरे भाई बस बस हो गया, नहीं अब लड़ने की जरूरत नहीं है, सो उनमें से बोला, अरे छोड़, मैं इसकी आज जान ले लूंगा, मैं इसे मार के रहूंगा, लाइक दिस, है ना। अरे छोड़ मुझे, मैं इसे मार के रहूंगा, मैं आज इसकी जान ले लूंगा, लाइक दिस। और अगर छोड़ दिया, सो बी लाइक परेश रावल, ए पकड़ मेरे को, है ना, पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। तो जब तुम्हें जानता नहीं है, तुम दिखाना चाहते तुम कौन हो, सो क्यों पकड़ मेरे को, या गाइस। देन थियरी ऑफ 4 humors guys, we have theory of 4 humors. This is associated with Ben Jonson guys. Ben Jonson, a great playwright guys, and he wrote work like Every Man in His Humor and Every Man Out of His Humor guys. Got it? Every man in his humor and every man out of his humor. Guys, these are the works. So in Every Man in His Humor, Ben Jonson was talking about 4 kind of fluid in body guys, है ना। 4 type के guys fluids की बात कर रहे थे जो body में होते हैं, and these guys, these 4 patterns are associated with what guys? So classical pattern, जैसे आपने सुना होगा guys कि जैसे जो बहुत सारे बहुत अच्छे जो होते हैं ना, जिन्हें बोला जाता है विशेषज्ञ, एक्सपर्ट इन द सेम फील्ड, जैसे गाइस आपकी जो वेन का एक्सपर्ट होता है नाड़ी वाला, सो जैसे ही आपकी पकड़ा एंड फटाफट ही इज गोइंग टू गिव द आंसर, ए यू आर फेसिंग दिस वन, दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन आर देयर इन योर बॉडी, है ना। बिकॉज गाइस जो बॉडी है, सो बॉडी में चीजों का बैलेंस होना जरूरी है, like blood, phlegm, choler, melancholy guys, है ना। So blood is associated with angry, guys, yes. Blood makes one excessively optimistic, phlegm makes one excessively covered, yellow bile makes one excessively violent, and black bile makes one excessively sad. तो गाइज अब इनमें से कौन सा बाइल आपकी बॉडी में है, आई डोंट नो गाइज, है ना। बट जितने लोग मुस्कुरा रहे हैं ना, सो उनमें एटलीस्ट गाइज कोई ना कोई तो बाइल होगा, है ना। यस,
So this is, guys, blood makes one excessively optimistic, like blood and phlegm, choler or yellow bile, melancholy or black bile. So these are the biles, guys, or four fluids of body, है ना? And these are associated with Ben Johnson. And ये बताया guys कि these are the traits of a body. Traits of a body और you know guys character कि जिसमें जो भी अधिक होगा guys, जो ज्यादा होगा, excessive होगा, so उसकी वजह से उसका जो nature है, nature of the character वो affect होगा guys. Got it? Nature of the character, so वो affect होने वाला है 100% guys. Got it? So every man in his humor and every man out of his humor, in his humor guys, so he discussed these all things, 4 kind of humors guys. Yeah. Now proceeding to the next one, and we have another one important types of drama. This is known as closet drama. Guys, in this slide you must understand what is the difference between closet drama and poetic drama or poetic play. What is the difference between the both? Closet dramas, or you can say guys simply poetic plays, these are not different in writing pattern. Actually, these are not different in writing pattern. Most of the time guys same ही होते. Got it? In closet dramas you can see directly instructions are there. Instruction कि वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, outside of the stage, inside of the stage. Yes. और आपकी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है. Closet dramas, drama to be read, जिसे पढ़ा जाएगा. एक ऐसा ड्रामा जो पढ़ने के लिए, not intended to be performed on stage. Intended guys, you know, intention जो होता है, so that is not performance कि perform किया जाएगा on stage. No, not intended to perform on stage, but instead of performance guys, ये किस लिए होता है? Only read करने के लिए. But sometime closet dramas were performed, and huge guys failure, that can be also seen, huge failure of poetic drama. अभी मैंने एक चीज बताई गाइस कि लाइक क्लोजेट ड्रामा एंड पोएटिक ड्रामा गाइस, बोथ आर इक्वल, बट यू मस्ट रिमेंबर गाइस, इन पोएटिक ड्रामा यू कैन सी कोरस आर देयर and written for performance purpose. 100% guys, poetic dramas written for performance purpose. Like T.S. Eliot, Murder in Cathedral, T.S. Eliot's The Family Reunion, The Elder Statesman. These are the plays. जो guys किस type के plays? These are known as poetic plays. Closet drama. So among the most famous closet dramas, Thomas Hardy's Dynasts. And Browning's means guys Robert Browning's Pippa Passes. This is important one closet drama. And Samson Agonist by John Milton, also known as a closet drama. Samson Agonist, and that was appeared in 1671. The Borderers by William Wordsworth. Cain by Byron guys. And even Samuel Taylor called it, so he also wrote closet dramas. So closet dramas, I mean directly guys, drama to be read and rather to perform. Performance के लिए नहीं guys, read करने के लिए. Got it? रीड करने के लिए होता है, नॉट फॉर परफॉर्मेंस पर्पस. नॉट फॉर परफॉर्मेंस पर्पस, ओनली फॉर रीडिंग पर्पस गाइस. क्लियर? प्रोसीड करेंगे गाइस दूसरे टाइप के ड्रामा में, एंड दिस इज नोन एज द थिएटर ऑफ अब्सर्ड. थिएटर ऑफ अब्सर्ड गाइस, एटलीस्ट आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलना चाहिए. एटलीस्ट वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्ले or guys around the play,
किसी पर भी बेस्ड, बट एटलीस्ट आपको एक क्वेश्चन जरूर मिले। थिएटर ऑफ अब्सर्ड। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको अब्सर्डिटी समझाने की कोशिश करता हूं। व्हाट इज अब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ? So the absurdity of human life is associated with, guys, meaninglessness in life. देखिए गाइस, कभी भी जैसे अगर आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, want to live a good life, happy life, so don't be critical or philosophical. अगर आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हर पल हर समय आप ये सोचते रहें कि मेरी जिंदगी ये है, मेरी जिंदगी वो है, मेरी जिंदगी में ये हो जाएगा, मेरी जिंदगी में वो हो सकता है, लाइक दिस लाइक दैट, लाइक दिस लाइक दैट, अगर आप ऐसे सोच करके रहना चाहते हैं गाइस, सो दैट इज ऑल्सो बेटर, बहुत ही अच्छा वो भी, बट आप हमेशा उदास, निराश और ऐसी जिंदगी जिए। अब्सर्ड थिएटर गाइस आपको ये सोचने के लिए मजबूर करता है, थिंक अबाउट गाइस निगेटिविटी इन लाइफ, निगेटिविटी इन लाइफ। जैसे मैं अपनी लाइफ को गाइस अगर अब्सर्डिटी से कनेक्ट करूं, सो इट्स टोटली अब्सर्ड इन अ सेंस। एवरी डे waking up, doing yoga and all, then guys sitting on this one chair, teaching students, streaming live classes on YouTube, on Unacademy, and then picking up phone of the students and then solve solution of their problems. And what is there in my courses? I am AKSRajveer. Use this one code every day, guys. Repetition, guys. Use code Rajveer Live. Use code this one. Price is going to be high. This course is available every day, guys. Almost every day. Isn't it meaningless? Isn't it? Yeah, it is, guys. It is. Every day, guys, I am doing every day. और अगर मैं चाहूं तो ऐसे ही करते करते मेरी लाइफ खत्म हो सकती है, guys. A man working in a bank. So guys, अगर वो बैंक में क्लर्क है, so every day waking up in the morning, office time is 10 a.m. or 9 a.m. guys. So waking up, taking bath, then guys, checking out his dress, which one I should wear, and then guys going to office, walking, and then listening to the customers and all, and then absurdity is there. I think guys, absurdity is there. In my point of view, guys, absurdity is there. क्यों? क्योंकि फिर वो बंदा वहां से लौट के आएगा, guys, coming back from bank, and then guys, at home, यार आज मैं बहुत थक गया हूँ, want to sleep, सो गया, फिर सुबह जगा, then started doing same. Life is what, guys? Repetition of repetition. Yes, हमारी लाइफ ऐसे गोल गोल चलती है, बट अगर आप इसके बारे में सोचेंगे, so then आप होपलेस हो जाएंगे. So don't think on that. इसको सिर्फ आप टर्म वाइज पढ़ लीजिए बस. Basically, the term was coined by Martin Esslin. Okay, the term was coined by Martin Esslin, and basically, theater of absurd, these were popular during 1950 and 60s, and the basic philosophical background that came from myth of Sisyphus. This is an essay by Albert Camus. Albert Camus, guys, so a French philosopher, he wrote an essay entitled Myth of Sisyphus, and guys, it was written during 1942. What does myth of Sisyphus mean? Myth of Sisyphus, guys, so there is a myth in Greek mythology. Yes, in Greek mythology there was a character named Sisyphus, and he was punished. He was punished for what, guys? कि एक बहुत ही बड़ा सा गाइस रोल था, रॉक था, और इसी को रोल करके माउंटेन के पीक पर लाना था, और फाइनली फिर वो यहां से ये गाइस फिर लुढ़केगा, फिर ये स्टार्ट करेगा उसे पुश कर. दिस इज व्हाट रिपीटिशन ऑफ रिपीटिशन, गाइस, और इसे आप क्या कह सकते हैं? मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, अब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मीनिंगलेसनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ. According to me, guys, मेरे हिसाब से ये मीनिंगलेसनेस है लाइफ की. भरोसा कीजिएगा इस बात.
है ना? Okay. So guys, theater of absurd, this is associated with myth of Sisyphus, Albert Camus, Martin Esselin, guys, so who coined the term, and then later on the term becomes so much popular with the writing of Samuel Beckett and Harold Pinter, guys. Got it? Samuel Beckett and Harold Pinter. Samuel Beckett, so he was basically a French playwright. He wrote a work named Waiting for Godot, guys. Yeah, ये एक बहुत ही अच्छा वर्क है इनका. The work is Waiting for Godot. Waiting for Godot, guys. Godot, Godot. And Waiting for Godot, this is the work where you can see, guys, meaninglessness of life or a tragic comedy takes place. There are two tramps in a land, bloody Near and Stragan. They are waiting, and whom they are waiting? उन्हें खुद नहीं पता हम किसका इंतजार करें. And then, guys, you know, a kid came and said, Godot आज नहीं आएगा. And they, both of them, guys, you know, Estragon and Vladimir indulged in meaningless conversation. Got it? Busy in meaningless conversation. Both of them, they are busy in meaningless conversation. What is this? What is that? Ye kya hai? Wo kya hai? Aisa karo, like this, that. Busy in meaningless conversation. Another one example, guys. So this is of Harold Pinter. Harold Pinter, so he came up with a work named Birthday Party. And in Birthday Party, guys, you can see black humor or dark comedy, guys, you can see. Stanley Fish, a man, he was living in a boarding house that was in Seesaw. The house was managed by Meg and Betty. These were the owner of the house. And suddenly, guys, their life were going on smoothly. Stanley waking up late in the morning, and Meg, so she was preparing for him, you know, guys, cornflakes and all. She was preparing. And in the morning, guys, you can see Petty, so he came back from seashore, and Meg was crying, hey, is that you, Petty? Hey, is that you? And Petty, उसने तो कान में अपने बत्ती डालने का तो बोल ही नहीं रहा था. बत्ती डालने का मतलब समझते हैं, गाइस, यू नो, कान को ही बंद कर लेना, ऑफ कर लेना, कोई भी चिल्लाए, डजंट मैटर. बेसिकली उसने ऐसा कुछ किया नहीं था, बट वो कुछ बोल नहीं रहा था. एंड देन व्हेन ट्वाइस थ्राइस Meg cried, so then, yes, it's me. Yes, it's me. And he then came from there and then sat on chair and started reading newspaper. And he started telling, oh, there is a news. One husband did this one and one wife did that one. So guys, you know, discussion. And then later on, guys, आपको पता चलता है कि what happened. Later on, guys, so you know कि Meg जाती है उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती है स्टैनली के लिए, स्टैनली को जगाती है. वी डोंट नो, गाइस, व्हाट आर द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मेग एंड स्टैनली. हु इज स्टैनली? Is Stanley is the lover of Meg? Because, guys, when she goes inside the room, so from outside of the room, guys, you may listen their laughing and, you know, guys, their amusement inside the room. And that is, guys, a different kind of, you know, laughing and all. Yeah. So it is considered that there may be relationship between Meg and Stanley. It may be, guys. We don't know actually. And then later on, guys, two strangers entered in the play, Goldberg and Macken, and then they started disturbing the entire piece. Yes, they started disturbing. And the entire piece, so that was in air. Okay, they planned to celebrate the birthday of Stanley. And after birthday, guys, during birthday, they started playing a game, the blind man's buff. And during the game, guys, power, so cut ho jata hai power. And then what happened, guys? Stanley, so he was trying to rape Lulu in vain. And finally, Stanley was accused, and Goldberg and Macken, both of them, they started questioning from where you came, why you came here, what are you doing here, why you left that place.
Why did chicken cross the road? Guys, you can see a meaning, a number of questions are there of meaninglessness. Why did chicken cross the road? He wanted to. Why you came here? Why you came here? Yes, Agya Manta, Stanley, guys. We don't know who are these Goldberg, Makkan, why they came, what is their purpose, why they are questioning Stanley. Just guys, everything is on air और हम लोग सुन रहे होते हैं कान खोल करके अपने. So absurdity of human life, guys, मैंने एक वर्ड आपके लिए यूज किया था. The word is black comedy और guys, dark comedy. मैंने ऐसा करके guys, वो term यूज किया. Yes, है ना? Why guys? So जब हम इस प्ले को पढ़ते हैं इंटरेस्टिंग तो बहुत लगता है. Got it? Interesting, it's too much interesting. But आप एक बार सोच कर देखिए. For example, guys, I'm living in Allahabad, and guys, someone came suddenly, and then he started questioning, hey अंकित तुम यहाँ कहाँ रहते हो? घर के भीतर घुसता चला, and then guys एक और आ जाए, and then guys they started just yes, giving me different kind of pattern. This is what, this is yeah, yes आपने ये किया, आपने वो किया, and then guys they started crying और जाने क्या क्या मेरे ऊपर बहुत सारी चीजें लगा दे. फिर क्या हो? इनको ने. और ऑन द सेम वे जैसे आप हैं, आपकी जिंदगी, यू आर लिविंग समवेयर, सडनली टू मैन केम, दे सेड वी आर फ्रॉम सीबीआई, एंड देन ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग. गाइस, जो आपने किया भी नहीं है वो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ जाएगा, क्या पता. यस, सो द थिंग इज गाइस, absurdity of human life, that is improbable. अब ये समझ लीजिए गाइस, वी डोंट नो फ्रॉम वेयर ही केम. स्टैनली के बारे में आप क्या जानते हैं? वो शादीशुदा था, वो अपनी उसने वाइफ को किल किया था. व्हाई ही केम हियर, व्हाई ही वाज लिविंग देयर, इवन ही एक्सेप्टेड आई एम वन ऑफ द बेस्ट गाइस पियानिस्ट. उसने कहा मैं बहुत अच्छा पियानो भी बजा लेता हूं. आई डिड कंसर्ट इवन. सो हो सकता है गाइस ये कंसर्ट करता रहा हो, एंड गोल्डबर्ग एंड मक्कन दोनों लोग मालिक रहे हो, इनके अंडर में कंसर्ट करता रहा हो, एक दिन भाग आया हो, क्या पता. मे बी गाइज उनका यंगर छोटा बड़ा भाई हो सकता है. सो हो सकता है उसकी खबर लेने आए हो. व्हाट इज दिस? क्योंकि गाइज जब प्ले ही अधूरा है, सो दिस इज व्हाट यू कैन सी इन द थिएटर ऑफ अब्सर्ड. इन बर्थडे पार्टी, और इसी तरह गाइज जैसे मैंने आपको हैरोल्ड सैमुअल बेकेट के वेटिंग फॉर गोडो की बात. इन वेटिंग फॉर गोडो गाइज, ऑन योर लास्ट एग्जाम देयर वाज अ क्वेश्चन, व्हाट इज देयर इन द बॉक्स? सो देयर वाज सैंड. अच्छा ये बताइए गाइस कि या तो ये पागल हैं या तो ये दिखाना चाहते हैं कुछ कि हमारे बैग में कुछ है, बैग में हमारे कुछ वेट भी है. दो में से एक ही चीज तो हो सकती है ना. या तो उनके पास कुछ है या तो कुछ है ही नहीं. एंड ओनली सैंड वाज देयर. ओनली सैंड वाज देयर. एंड इन द फर्स्ट सीन, Lucky and Pozo are there, and Lucky guys, so Lucky is the servant and Pozo is the master. And Pozo having a rope on the neck of Lucky के guys गले से उसने फंदा बांध रखा, treating like an animal, and on the next scene you can see opposite of that. Yes, so ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती. Hey guys, I'm also going to take a class on GIC lecturer. Previous year paper पर भी लेना था guys, है ना? Yes. And on the next scene you can see story जो entirely, completely change हो गई थी story. This is what in theater of absurd you can see. Now focus on kitchen sink drama. What is kitchen sink drama and which kind of dramas was there? Guys, kitchen sink drama, basically this is the term closely associated with John Osborne. And there is a work by John Osborne. The name of the work is Look Back in Anger, guys. Look Back in Anger. Got it? Look Back in Anger. In this one work, you can see a man is there, and the name of the man is what, guys? Jimmy Porter. Jimmy Porter is the name of the man. He got married with Alison, है ना guys? And then Alison के साथ शादी होने के बाद guys, दोनों के बीच में fight start होती है.
देखिए कई बार ऐसा होता है गाइस, इसको मैं कहता हूं मेरे हिसाब से अनइक्वल मैरिज गाइस, है ना? यस, अनइक्वल मैरिज। जैसे मान लीजिए कि द गर्ल्स बिलोंगिंग फ्रॉम अपर क्लास, द बॉय बिलोंगिंग फ्रॉम लोअर क्लास। और कई बार गाइस शादी हो जाती, क्यों? आउट ऑफ लव, बिकॉज दे वर इन लव, और प्यार में शादी कर ली। बाद में पता चला विदाउट, जो गर्ल है वो विदाउट एसी नहीं रह सकती, बॉय है जो उसको सारी आदतें हैं। गाइस उस गर्ल का कोई दोष नहीं, क्योंकि वो ऐसे एटमॉस्फेयर में रही है। सो गाइस यू नो यू कांट से कि गर्ल की गलती, यू कांट से। समटाइम गाइस इट हैपेंस कि जैसे जो बॉय होता है वो अपर क्लास से है एंड गर्ल इज फ्रॉम लोअर क्लास, एंड देन व्हाट हैपेंड, बोथ ऑफ देम गॉट मैरिड एंड देन दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट। क्यों? क्योंकि गाइस गर्ल के पास ज्यादा मैनर नहीं है, बॉय इज थिंकिंग कि यार वो ये करे, वो करे, वो ऐसा रहे, वो वैसा रहे, लाइक दिस लाइक दैट। एंड यू नो गाइस ये जो डिस्पैरिटी है, सोशल डिस्पैरिटी, कई बार गाइस यू नो एक टाइप से गाइस यू नो कमेंट्री में चेंज हो जाती है। कमेंट्री में जैसे, अरे तुम तो बड़े अच्छे खानदान से हो, तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम है, तुमने तो बचपन से यही किया, मुझसे पूछो मैंने कितना स्ट्रगल किया, लाइक दिस लाइक दैट। फिर गई ये बात आ गई सामने, एंड देन फिर फाइट वंस मोर, है ना? यस, कभी कभी ये हो जाता, अरे यार तुम क्या जानो, तुम नहीं समझते हो, यू नो दिस वन, तुम क्या जानो इसकी वैल्यू, तुम क्या जानो उसकी वैल्यू, एंड देन फिर फाइट शुरू हो जाती। किचन सिंक ड्रामा गाइस इज बेस्ड ऑन बेसिकली यू नो लाइक डोमेस्टिक ट्रेजेडीज, लाइक डोमेस्टिक ट्रेजेडीज जैसे होती थी ऑन द सेम वे, है ना? यस, जैसे बोल देते हैं ना लाइक कि बड़े बाप की बिगड़ी औलाद हो, लाइक दैट, है ना? और जिस दिन ऐसी बात बोल दी उसी दिन दोनों की फाइट हो गई, और फाइट गाइस यू नो फिर फाइनली डाइवोर्स तक पहुंचने लगती है। सो पोर्ट्रेयल इन दिस काइंड ऑफ वर्क्स, यू कैन सी पोर्ट्रेयल ऑफ वर्किंग क्लास सोसाइटी। और एक और मैं परसेप्शन आपको बता दूं, ऐसा एक और परसेप्शन होता है। देखिए जैसे गाइस बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई है यू नो गाइस मिडिल क्लास मैन है, वर्किंग क्लास का कोई मैन है, सो उसमें एक परसेप्शन होता है, एक परसेप्शन भी होता है, बिलीव मी गाइस, हैविंग अ परसेप्शन, कि जैसे वो सोचेगा, जैसे अगर उसके कुछ ऐसे विचारधारा है कि यार बहुत लूटा इन लोगों ने हमें, बहुत लूटा हमें इन लोगों ने। गाइस किसने? मान लीजिए कि जैसे ये वर्किंग क्लास मैन है और इसका बॉस है ना, तो बॉस को गाइस वो यही सोचेगा ना, बहुत लूटा है हम लोगों से इसने, बॉस ने गलती से इससे शादी कर दी, अपनी अपनी लड़की की गलती से शादी कर ली। सो देन गाइस अब क्या करेगा? उसको तो ऑलरेडी चिढ़ है ना उस क्लास से ही गाइस। ऑन द सेम वे जो यहां पर कैरेक्टर है जिमी पॉटर, जिमी पॉटर इज नॉट ओनली एंग्री विद हिज वाइफ एलिशन, बट एज वेल एज गाइस ही इज अब्यूजिंग हिज फादर। गॉट इट? Yes, even even you know he is abusing her father and you know guys her friends too. ऐसा होता है। This is so this kind of pattern that can be seen in kitchen sink dramas, and in the play Look Back in Anger, guys, there is a game, and this is beer and squirrel game, guys. Yes, and at the end of the play you can say once more they started. ये वाला गेम गाइस बाद में फिर से स्टार्ट हो जाता है। एंड व्हेन यू नो एलिशन सेड आई एम प्रेग्नेंट, सो देन यू नो गाइस जिमी वाज सेइंग कि मुझे तो पता ही नहीं चला तुम कब प्रेग्नेंट हो गई, लाइक दिस। सो काइंड ऑफ गाइस यू नो सोशल कमेंट्री कैन बी सीन and based on domestic realism, this kind of plays guys lower middle class life with an emphasis on domestic realism, है ना guys? Yeah. So this kind of novels, dramas are there, and other big guys plays hai, like different patterns of plays, other types of plays are also there in English literature, but basically guys जो मुझे cover करना था आज के लिए वो मैंने इतने cover कर दिए। And guys this is the time you can ask your queries if you have any kind of query guys, and if you want my paid courses, so then do not forget to use code Rajveer Live. This is my code and you can use this one code and avail 10% discount. And guys आप पूरा कोर्स ले सकते हैं, इवन यूपीएचईएससी का कोर्स भी आपको मिल जाएगा गाइस। मतलब ये समझिए यूजीसी नेट कोर्स प्लस यूपीएचईएससी कोर्स, इट मींस गाइस यू नो कि बहुत बड़ा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ये डबल कोर्सेस with one payment. So now guys if you have queries, we have 10 minutes, so within 10 minutes guys you can ask your queries, whatever queries you have.
मजा आया आपको या नहीं? और मैं थक गया गाइस, बिल्कुल मेंटली रिटायर्ड, मतलब समझ लीजिए गाइस, बहुत थकी हो जाती है, मतलब बोलते बोलते कितनी एनर्जी लगानी पड़ती है गाइस। हाँ। हे गाइस, यू कैन आस्क योर क्वेरीज प्लीज। 10 मिनट अभी मेरे साथ और रहिए एटलीस्ट, एंड आफ्टर 10 मिनट गाइस आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। बट प्लीज एक बार अपनी क्वेरीज जरूर कंफर्म कीजिए। कैन यू प्लीज कवर DU MA entrance previous year exams? No, Shubham Arora, sorry for that, dear Shubham. I can't do that. Bye, dear. Take care of yourself. Properly study well. May God bless you. Oh my God, इतनी सारी blessings. अभी गाइज एक और क्लास आपकी मैं लेने के मूड में हूँ, फुल मूड में, कि एक क्लास और आपकी ले ली जाए गाइज। और ये कौन सी क्लास आपकी हो सकती है? सो आई थिंक मुझे क्लास जो आपकी लेनी है, सो दैट इज ऑफ GIC, वो वाली लेना था। देखिए मैं प्लान करता हूं, अगर होगी तो 9 बजे से लूंगा गाइस, 9 PM। यू कैन वॉच गाइस दिस वन क्लास ऑन रिकॉर्डिंग। बिल्कुल गाइस, आप ये रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है गाइस आपके लिए, बिल्कुल। Hey, Shri Krishna Academy. This is not basically a doubt कि a taste of honey is written by whom. अब डायरेक्टली ये गूगल कर लीजिए, मतलब ये बहुत छोटी सी क्वेरी है, लाइक कृष्णा। सो यस, आप ऐसी कोई भी क्वेरी हो गाइज, लाइक इफ यू वांट टू नो द नेम ऑफ द वर्क, है ना गाइज? यस। सो ऐसे वर्क्स को आप डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर गाइज, कि ये किसने लिखा हुआ है, लाइक दिस वन वर्क, लाइक दैट वन वर्क। तो ये बहुत मतलब इजी होता है गाइस। वन ऑफ द किचन सिंक प्ले राइट लिखे होंगे कोई ना कोई, है ना? यस। या गाइस, एंड प्लीज नेक्स्ट डे मैं आपको कितने बजे मिलूंगा? 9 AM भी मिलूंगा मैं आपको अगले दिन, 9 AM ऑन अन अकेडमी लाइव NTA UGC नेट। यस, इट्स बाय सिला डेलनी। यस, सिला डेलनी का वर्क है, बिल्कुल करेक्ट। ओके सो गाइज, हमारे पास अभी 4-5 मिनट है। इफ यू वांट टू आस्क गाइज, सो देन ट्रेजेडी, dramatic structure and all, if you want to ask anything, so then you all are most welcome, you can ask guys, no problem। and see, Greek tragedy आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। Roman tragedies, what is there in Roman tragedies? Mystery plays, miracle plays, morality plays, and Elizabethan and Jacobean tragedy. Then tragic comedies we have guys, and domestic tragedies, what are domestic tragedies? And theory of 4 humors even, okay, like blood, phlegm, choler, melancholy and all, so इनके बारे में मैंने आपको बताया था। and then closet dramas, what are closet dramas? then theater of absurd and all, इसके बारे में बताया। and then kitchen sink drama, और किचन सिंक ड्रामा और किचन सिंक प्लेस के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है गाइस। जितने भी मैं टॉपिक आपके कवर कर रहा हूं ना गाइस, तो बस ये समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं। यस, बहुत ही अच्छे और बेहतर टॉपिक कवर कर रहा हूं मैं गाइस। हे गाइस, सो एनीबडी एल्स? कुछ नहीं पूछेंगे आप सब लोग? चलिए कोई नहीं। मेरे पास गाइस हैं आपके लिए भी 5-6 मिनट, तो मैं वेट कर सकता हूं आपका। बाकी गाइस मैं थैंक यू भी बोल सकता हूं, और साथ में अपने पेड कोर्सेज का प्रमोशन भी कर सकता हूं। सो यस गाइस, no problem, you can join my courses and you can watch my free classes on Unacademy, the learner app too, yeah, for free by using code this one।
Othello a revenge tragedy or a domestic tragedy? Othello is not a revenge tragedy. Revenge यहां पर कहां आपको मिलता है? Hamlet is a revenge tragedy. Okay. Othello is basically a domestic tragedy. You can say, guys, yeah, a tragedy and domestic tragedy. Okay, Bernali, I think you got the answer. Welcome, Sandhya Singh. You are most welcome. Continuously, I am taking classes on such topics. It was a session, sir. Thank you. It was nice session. Hey, प्रियंका साहू, अच्छा सेशन था. मुझे तो लगा कि आप कहने वाली है इट वॉज नॉट अ गुड सेशन सर. मे बी अगर आप ऐसा भी कहती तो मुझे वो भी मानना पड़ता भाई, वो तो मानना ही. अच्छा, कोई आज तक मुझसे कुछ खतरनाक टाइप की चीजें नहीं पूछा. एटलीस्ट आई वाज थिंकिंग कि यार कोई कुछ खतरनाक टाइप पूछ ले तो फिर ज्यादा बेटर लगता है, बट कुछ खतरनाक टाइप चीजें नहीं पूछी आज तक. बीइंग अ यूजी सीनेट एस्पिरेंट गाइस, जो आपका अप्रोच होना चाहिए ना, बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग अप्रोच होना चाहिए आपका. बिलीव मी गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग और मतलब एक गाइस एक इंथ्यूजियास्टिक अप्रोच होना चाहिए. यू वांट टू लर्न लिटरेचर ना, इट मीन्स फॉल इन लव विद लिटरेचर. और इसीलिए गाइस मैं अपने आप को लिटरेचर लवर और सब आप सभी को लिटरेचर लवर्स कहता हूं, बिकॉज गाइस जरूरी है ये. और आपके पास अब रफली कितने दिन बचे हैं गाइस? 20 days और अ फ्यू डेज ओनली, है ना? सो बी अ ग्रेट लवर. सो ग्रेट लवर बनने के बाद आपको अच्छा लगेगा, और जैसे ही आप ग्रेट लवर बनेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपका जो लव है वो बहुत सक्सेसफुल भी रहेगा. एनीथिंग एल्स? नहीं, सब कुछ खत्म है. मैराथन ऑन इंग्लिश ड्रामा, टाइप्स, ट्रेजेडीज एंड कॉमेडीज, कंप्लीट रिवीजन. ये गाइज मेरी आज क्लास थी, है ना? यस. और मैंने काफी अच्छे से रिवाइज कराया. आई होप सो गाइज, जितना मैंने प्रॉमिस किया था उतना मैंने तो रिवाइज करवा ही दिया. हाँ, कुछ मिनट और है मेरे पास बाकी, तो मैं गाइज आप लीव कर सकते हैं क्लास. यू मे लीव द क्लास, बिकॉज मैं जो पूरा कर रहा हूं वो आप नहीं समझ सकते. मेरी टाइमिंग होती है, दिस इज अ क्लास ऑफ 1.5 hour, बट मैंने 1.5 hour से पहले ही खत्म कर दिया. सो दैट्स वाई जरूरी है कि 1.5 hour हो जाए. GIC टेस्ट सीरीज, नीरज क्या क्या करें प्लीज. मतलब बहुत कुछ काम करना पड़ जाता है. क्वेश्चन बनाओ, क्लास शेड्यूल करो, ये बनाओ, नोट्स मेंटेन करो, पढ़ो भी, देन सब कुछ. एग्जाम आपके मतलब ऐसे हुए है ना, लाइक यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी, डीएसएसबी, जीआईसी, यूजीसी नेट. अब यूजीसी नेट पढ़ाएं, टीजीटी पढ़ाएं, पीजीटी पढ़ाएं. गाइस, दिस इज व्हाट की सो हेक्टिक. सो अब क्या कहें उसके लिए? अब कुछ कह नहीं सकते उसके लिए, है? कहना भी बेकार ही समझिए. ऐसे टाइम पर एग्जाम है, सारे के सारे एग्जाम है. बिटवीन अगर एक एक मंथ का गैप होता तो भी मजा आ जाता. ओके, सो अब बाय बोल दिया जाए. अब ठीक है, चलिए. So guys, you can purchase my paid courses on the platform too, and these are the charges. Once more you can see, and you will get these benefits. देखिए आपको guys प्लस, और इसका मैं बेनिफिट कई बार मैं बता चुका हूं, लेकिन यस, ये guys बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं जो आपको मिलते हैं हमारे पेड कोर्सेज में. और साथ में guys जो आपको चीजें मिलती हैं अकेडमी पर, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मिलती है. यहाँ पर ऐसा नहीं है लाइक रिकॉर्डेड, कुछ ऐसा भेज दिया, कुछ वैसा भेज दिया. Every video class interactive, paper 1, 2, language according to you guys, सब कुछ like Hindi, English, all things are available on the platform.
ओके गाइज, सो चलिए अब मैं बाय बोल देता हूं और टेक केयर बोल दूं। गुड नाइट गाइज, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। गुड इवनिंग एंड यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। Welcome to Unacademy Live NTA UGC Net with AKSRajveer. So guys, if audio and video is clear, so please let me know on comment box. Hurry up. Hey guys, good evening everyone. थोड़ा सा देखना पड़ेगा भला ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है या नहीं। Yeah guys, audio and video is clear and you all are most welcome. And now let's get started with this session. A wonderful session for you all guys, and you are going to learn a lot of things in this session. As you can see the title of the class guys, this is basically a marathon class on forms of novel, because guys on every single UGC NET exam or any other exam like state exam like set exam or any other competitive exam that is associated with literature, it may be GATE exam, set exam or GIC exam or DSSB, NVS, KVS, any exam. I think this part is most important part one. Okay, forms of novel. You can simply guys title it types of novel. Which kind of novels are there, and you know guys, which kind of novels were popular during different centuries like 18th century, 19th century and then 20th century guys. Now guys, before starting of this one session, I would like to inform regarding a few changes that are going to take place within a few days on Unacademy platform. Prices of 1 month and 3 month subscription on Unacademy platform that are going to be increased. So if you are interested in my courses, so then you can join. This is the right time to join Unacademy courses. We have two types of subscription guys, as most of the students are familiar. Plus subscription and iconic subscriptions we have guys. On plus subscription, you will get classes from best educators of India, live interactive classes, and you will get PDF notes and structured classes guys. No need to go anywhere else. On the single platform, you are going to get both the papers and notes, test series, everything guys. And on iconic subscription, what you will get extra, so including these all things like personal coach, personalized doubt solving and proper study material and everything guys, you are also going to get on iconic subscription. So by using my code, you may subscribe to Unacademy Plus. These are the prices like 1 month, 3 months, 6 month, 12 month, 24 month. Any of the subscription guys timing period you may choose, and just apply code AKSRajveer. You can see here is the place for application of the code. So you just apply my code and then you will get 10% discount on your courses. And hey guys, a good news I have for you guys. Really good news. So this is the right time to mark your calendar guys. Mark your calendar for what? For the previous year papers on Unacademy Plus platform guys. 4th September guys, June 2017 paper you can easily solve. 5th of September, so yes, previous year paper solution on, you know guys, 5th of September 2021. 11th of September, so you can see 2016. Then December 2016 on 12th of September. So guys, these all PYQs are available on different courses. Yes, you can see. And English subject is also on the way. और guys, आप ये सारा कुछ आप choose करके enjoy कर सकते हैं on Unacademy platform. Would you like to know more guys? So yes, one more information for you. One by one. So see, Unacademy Championship Test on demand of the dear students. See guys, paper 1, commerce, English, computer science, geography, economics, Hindi, education. These all subjects guys, you can see. These all subjects. So ये सारे कुछ आने वाले हैं guys, championship tests. So from 5th of September, the first test is going to take place on Unacademy platform.
So this is the right time. By applying code Rajveer Live, you may unlock everything. By applying code Rajveer Live, you may get 10% discount. This is all about our program at An Academy, the Learner app. Now guys, this is the right time to start with this one session. As I have already told, I am going to cover forms of novel or types of novel. You know, the oldest form of writing among all the forms, like poetry, then drama guys, drama, and then you can see novel, okay, and non-fiction. So among these forms, poetry is one of the oldest form of writing. Oldest form of composition rather. You can see all the guys, civilizations are there, like Sindhu civilization, Maya civilization, Sumerian civilization, Greek civilization or Greco-Roman period. In every single civilization you can see poetry was there, and after poetry you can see development of drama. In India, Ramayana was composed, or you can say either written by Maharshi Valmiki. And on other countries, like in Greek, so Homer came, and Homer, so he, composed a great poem, epic poem entitled Odyssey, and then Iliad, guys. These are the work. Novel, basically, guys. So novel, drama, guys. So drama, Sophocles, Euripides, and Aeschylus. So these are the great dramatists from Greek. Then guys, in Roman history, you can see Seneca is there. And in India, you can see different guys, a short span of time period, guys. You can see performances was there, like Ram Lila and other types of performances, guys. So you can see drama is another one important form. On your recent exam, guys, that is UP PGT exam. So there was a question, I think, in TGT or PGT exam, the oldest form of writing, that is poetry. Then drama came, and novel, guys. So when novel came, I think, guys, novel se pehle non-fiction aa chuka tha aapka, and then novel came, guys, hai na? Yes. So that's why मैं थोड़ा सा ये sequence change करना चाहूंगा. Yes, eraser मैं लेकर के आ गया, guys. Yes, ये है आपका eraser. And now, guys, मैं थोड़ा change करूंगा इसमें. Yes, non-fiction, and then you can see novel was there. So novel, the development of novel takes place during what? Novel, development of novel. So that takes place during 18th century. In words of Matthew Arnold, you all are familiar with Matthew Arnold, a great critic, a poet of Victorian time period. So he made a statement that is popularly, that can be quoted as age of prose and region. The time period, transitional time period in history of English literature, known as, 18th century, age of prose and region. Now, guys, I'm going to tell you which kind of novels was there. The beginning of basic pattern of novel. So a little bit, guys, I would like to tell you about the history of novel. Basically, the very first novel. Can anybody tell me? Koi bhi, guys, comment box mein. Can you please tell me the name of the very first novel all over the world? What is the name of the very first novel? Guys, please do write on comment box. Hurry up. I want to know, and then later on, I'm going to start with the forms of novels. So can you please tell me the very first novel all over the world, guys? You must remember, I'm not asking anything, guys, that is associated with the particular one. Yeah, I want to know, guys. It's Pamela. Most of the students, they are answering Pamela. But no, guys, your answer is not right at all. Incorrect answer by you. The Tale of Genji, guys. The Tale of Genji. The Tale of Genji by Murasaki Shikibu, guys. Murasaki Shikibu. This is the work by, yes, Murasaki Shikibu.
This is the very first one work. This is the very first novel, guys. So all over the world, it's a Japanese work. Please do remember, guys, ये Japanese work है. Yeah, this is known as the very first novel all over the world. And guys, you all are writing sub Pamela. Yeah, guys, Pamela is the very first novel in English literature. Got it, guys? English literature. In English literature, Pamela is considered as the very first novel by Richardson. I hope so कि आप सभी लोग समझ गए होंगे. And most of the students, जितने लोगों ने आंसर किया था, सबने गलत कर दिया था. देखिए यही चीज होती. This is what, guys, कि हम चीजों को माइंड में रखते. I was asking the very first novel all over the world, The Tale of Genji. It's गंजी मत कह दीजिएगा, बहुत सारे लोग गंजी और गंजास है ना. Yes, and it's a Japanese one. आपको पता होना चाहिए, Japanese form of poetry is even popular. Like Japanese guys like haiku, Haiku, Hai guys, है ना. Yes. And now, guys, I'm going to start with the English novel. Novel is the most popular form of writing. In this time period, guys, you can see most of the writing. सबसे ज्यादा अगर कुछ लिखा जाता है all over the world, so that is novel. The most popular form, guys, ever. अब हम एक चीज याद रख, एक चीज को गाइज जानेंगे. द वेरी फर्स्ट वन नॉवल आ गया आपका. अब हम आते हैं गाइज, द वेरी फर्स्ट वन नॉवल पामेला इन इंग्लिश लिटरेचर. दैट इज नोन एज एपिस्टलरी नॉवल, गाइज, है ना. एपिस्टल और एपिस्टली नॉवल. अच्छा, एपिस्टलरी क्या होता है गाइज? सो सबसे पहले हम एक वर्ड को समझेंगे. दिस इज EPISTLE, एपिस्टल. एपिस्टल. आपने गाइज एक वर्क सुना होगा, एक पोयम का नाम है एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथ नॉट. सुना है ना? एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथ नॉट, दैट इज बाय अलेक्जेंडर. एपिस्टल मीन्स होता है गाइज लेटर. यू कैन सी गाइज, दिस इज अ लेटर. माई लव. हे गाइज, सी, this is a letter and you can see here, basically maybe आपको clear ना दिख रहा हो, but you can see my love. My love, the memory of your lips on mine lingers still. Got it, guys? Yes. Through time and distance. Yes, ये guys एक love letter है, ये रखा हुआ है guys. This is a love letter, basically. So epistolary novel means a novel, guys, that is made out of letters, or it may be, guys, created through diary entries. बहुत सारे लोग डायरी लिखने के बड़े शौकीन. Okay, guys, having their own diary and writing something on that. Okay, जैसे मेरे पास भी एक बड़ी क्यूट सी डायरी है, guys. Yes. And this is basically by an academy. मैं तो अपने स्टूडेंट्स को दिखाता ही रहता हूँ. Yes. So diary entries, like, you know, people's used to write their, you know, everyday events, whatever happening on their life, and sometimes through newspaper clippings. Okay. So a novel, it is a novel written as a series of documents, letters, diary entries, news clippings. Yes, and that's why these are known as epistolary novel. Okay, guys. Yes, epistolary novel. There is a work by Horace. अगर आपने नाम सुना है guys Horace का, I think you have heard the name Horace the critic. There is a work, guys, by Horace, and that is basically epistle. Can you please tell me the name of the work that is epistle by Horace? I want to know. I'm interested on the name, guys. तो चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए फटाफट. What is the name of the work by Horace that is basically epistle? Yeah. So, guys, yes, epistolary novel means it's a collection of different documents,
And see, letters and entries and newspaper, ये सारे guys non-fiction का part है. These all are part of non-fiction, you must remember. So you can see origin of fiction out of non-fiction. Interesting. Origin of fiction out of non-fiction, guys. Yes. Now see, guys. So the right answer, basically, guys, you know, the right answer of मैंने पूछा जो epistle by Horace, so that is Ars Poetica. Ars Poetica is basically epistle to Piso's family. You must remember, guys, P-I-S-O-S, Piso's family. Okay? Yes, Pisos. अब थोड़ा सा, guys, हम आगे आते हैं. Yes. These are the example of epistolary novel. Like Samuel Richardson's Pamela. Samuel Richardson's Pamela, this is one of the fine example of epistolary novel. In this one work, you can see a story of a girl, a servant girl. A story of a servant girl, and what she was doing. She was struggling to save her chastity against her master. Her master was interested in her and want to seduce her without marriage, without any, you know, guys, without any kind of promise. And she was struggling. The name of the girl is Pamela itself. Okay, guys, the name of the girl, Pamela itself. And the name of the man who was trying to seduce, what is the name of the man? I think Mr. B, whatever, guys, the name is. And later on, she was rewarded. That's why, guys, the title of the novel is Pamela or Virtue Rewarded. Because she was so good girl. Every single time when her master tried to seduce the girl, so then she, you know, guys, pretended to be faint. कि मैं बेहोश हो गई. And then उसके मास्टर ने उसे छोड़ दिया. And then, guys, you know, वो अपने आप को safe रखता है. And at the end of the novel, Pamela got married with her master. For what? Because you can see continuously Pamela was writing letters to her family. For family, guys, you know, sharing everything. And before ending of the novel, the master got all the letters, and then he came to know the honesty of Pamela. And the virtue, guys, finally was rewarded. Virtue was rewarded in which way? So Pamela got married with Mr. B. And now, guys, solution हो गया पूरी कहानी का. This is the story of Pamela. Then one more work is there by Richardson, and this is Clarissa, guys. By Samuel Richardson, there is one more work, and this is Clarissa, appeared in 1748. And then you can see, guys, one more epistolary work is there, Sorrows of Young Werther. Recently, guys, आपके एग्जाम में पूछा गया था ये Sorrows of Young Werther. I am telling you, guys, Sorrows of Young Werther. मुझे एग्जाम का नेम नहीं याद आ रहा है. I think it was a PhD exam or it was any other state exam. But Sorrows of Young Werther was there, right? Sorrows of Young Werther. And Evalina by Fanny Burnett. There is one more work. Evalina, this is also a epistolary novel. And Frankenstein by Mary Shelley. Now, guys, this is the time to stop a little bit, guys, for a while. Think on it. Frankenstein तो आपने पढ़ा था, एक गोथिक नॉवल है. Have you heard, guys? आपने मुझसे ही सुना होगा कि मैंने कहा Frankenstein is a Gothic novel. Okay? And sometime आपने Frankenstein का ये भी सुना होगा. It's a science fiction. It's a science fiction. Is it so? Is it so, guys? Is it a science fiction or a Gothic novel? And finally, guys, you can see epistolary novel. Epistolary novel, आप guys बहुत कुछ देख रहे हैं. It's epistolary one. Hey, guys, my answer is all the above, guys. 4 option मैं कर दूं, all the above, है ना? So these are the 4 options like A, B, C. So, guys, all the above is
correct regarding Frankenstein. Got it? Frankenstein, guys. Because this is a Gothic novel. Yes. A Gothic novel by Mary Shelley. A science fiction, guys. Even sometime it is considered as the very first science fiction. A very, very first science fiction. And epistolary novel it is too. It is also an epistolary novel. Because you can see in this one work, exchanging of letter between the two, brother and sister. And hey guys, don't forget ever, in English literature, brother and sisters, they have much importance. They played prominent role, guys. Always, I think. Wordsworth and Dorothy Wordsworth, Thomas Balder and Henrietta Balder, Charles Lamb and Mary Lamb. And you can see, guys, here in this particular work, Robert Walton and Margaret Walton. Yes, in this one work, Frankenstein, Robert Walton and Margaret Walton, guys. So brother and sister in literary history, they played prominent role, guys. Yes, I'm telling you. Brother and sisters. And even you must knowing, I think you all are familiar with the, George Eliot, Mary and Evans. George Eliot and or Mary and Evans. And there you can see, guys, brother also played prominent role. The brother of, George Eliot or Mary and Evans, वो अपनी सिस्टर को बिल्कुल नहीं पसंद करता था. यस, सो यू कैन सी इवन जो उनके फादर थे मैरी के, सो मैरी एंड एवंस के, सो उन्होंने डिसइनहेरिटेड कर दिया था अपनी जो भी उनके पास इनहेरिटेंस था उस. यस, दिस इज. And you can see there is one more work, Lady Susan by Jane Austen, and Dracula, guys. Dracula is a work. This is also a Gothic novel, guys. Gothic novel, and as well as an epistolary novel. Bram Stoker, guys, Dracula. Dracula series is there. If you are interested, guys, so you can watch Dracula series. And Dracula, the series of novel was written by Bram Stoker. Okay? बहुत अच्छे से गाइड जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा. आप में से कितने लोग हैं जो मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे हैं और कितने लोग ये सोच रहे हैं अरे सर कितनी बार पढ़ चुके हैं सर. हे गाइज, आई वांट टू नो प्लीज दोज हु आर एंजॉयिंग द सेशन एंड दोज हु आर सिटिंग आइडली एंड थिंकिंग कि अरे सर बहुत कुछ पढ़े हैं इसके बारे में, हम सब कुछ जानते हैं गाइज. यस. Now see picaresque novel. Guys, picaresque novel. Another one type of novel. Picaresque one. Basically guys, आपके एग्जाम में एक वर्ड बहुत अच्छे से पूछा जाता है. Like origin. मैंने कई बार देखा guys. Like picaresque novel origin guys. So you can see. Came from a Spanish word. Epistolary, guide, so derived from Greek word. Epistolary work, so epistolary novel or epistle derived from where? From Greek word, from Greek language. And you can see guys, picaresque, so derived from where? From Spanish. Okay, अभी मैं आपको गाइस बिल्डुंग्रोमा के बारे में भी बताऊंगा एंड इवन अबाउट गोथिक वन, सो सबके बारे में मैं बताऊंगा. बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी. Yeah, you will really get wonderful information. So picaresque novel derives from where? Spanish word picaro. Picaro means guys a rogue or a rascal rather. A wandering man guys, or a wandering personality. Okay, wandering from here to there. Not only man. Got it guys? Not only man. ये woman भी हो सकती है guys. Yes. So the word picaro came from where? It came from Spanish. Got it? Yes. And in this kind of novel, always you can see a story or the main character, you can see the protagonist or the lead character always facing a number of adventures. And rogue means guys a wandering picaro, wandering from this place to that place.
wandering from here to there, guys. Yes, ऐसी wandering इनकी चलती. Yes, a roguish protagonist, guys. And you know, the characters so having low birth and sometimes, guys, even satirical in nature, and the adventure of the lead character can be seen. The adventure of the lead character can be seen, guys, in this kind of, like अगर आप देखें guys, Don Quixote. So Don Quixote is the man. This is one of the best example of picaresque one. And yes, Don Quixote, this is basically a Spanish novel, guys, है ना? Don Quixote, it's a Spanish novel, okay? Yes, a Spanish novel it is. And in Don Quixote, there is a man named Don Quixote. And he is a wandering rogue, guys. And he considers himself what, guys? One of the knight of the cavalry, guys. And he used to visit tavern, hotels, motels, और वहां पर आतंक मचाना काम समझते थे ये, है ना guys? Yes. So this Don Quixote by Miguel de Cervantes, this is the very, very first one novel under the category picaresque novel. And here you can see depiction of Don Quixote. And you know, ये पागल हो जाता है, इतना ज्यादा पढ़ता है ना guys, कि ये पागल हो जाता है. And then what happened with him? He started fighting with windmill. Windmill में जाता, guys, and he considers the, you know, the windmill as his enemy. और उसी windmill में, guys, लगा रहता है, इधर उधर ये वो ऐसे ही करता. This is what. Another one example, guys, you can see this is the fortune and misfortune of the famous Mole Flandre. Mole Flandre by Daniel Defoe. And guys, you can see, as I have already told, the main character, it can be a male or it can be a female. So in this one work, Mole Flandre, you can see there is a lady named Mole, and she got married multiple times. Yes, she got married multiple times, I'm telling you guys. कई बार उसने शादी किया था, पता है, बहुत सारी शादियां की, and even gave birth a number of children, but having no stability in her life. कोई stability नहीं मिलने वाली गई उसकी लाइफ में. Yes, this is what. And in England, guys, I was talking all about, you know, the very first novel all over the world under the category picaresque novel is Don Quixote. But guys, in England, the very first novel under the category, guys, picaresque is Nash's Unfortunate Traveler, or the Life of Jack Wilton. In England, guys, this is the Life of Jack Wilton. Got it? The Life of Jack Wilton. Yes. This is the very, very first one novel in England. And then see, guys, a novel based on female Picaro. So this is Daniel Defoe's Mole Flandre and Henry Fielding's Jonathan Wild. Jonathan Wild the Great even. The title is Jonathan Wild the Great. And Joseph Andrews and Tom Jones. So guys, जो Joseph Andrews है ना, so Pamela Andrews के reaction में लिखा. And another one work, it's Tobias Smollett's Roderick Random. This is another, guys, picaresque one work. And this one picture, ये जो picture आप देख रहे हैं, guys, this one picture. So this one picture is also associated with picaresque one novel, guys. And the name of the novel is Adventure of Huckleberry Finn. Got it? Adventure of Huckleberry Finn by Mark Twain. By Mark Twain, guys, yes. So that is also under the category picaresque novel. Mark Twain, guys, yes.
And Mark Twain, you all are familiar. He was really a great novelist. Yes, he explored a lot. And someone about Mark Twain made a statement. And about this one book, basically, Adventure of Huckleberry Finn. All the literature, American literature that came from only one book. Got it? Only one book. And what is the name of the book? The name of the book is what, guys? The name of the book is Huckleberry Finn. And who made this statement? आप जानिए guys, आप जरूर आंसर करेंगे. I think it's Ernest Hemingway. It may be, guys, Ernest Hemingway. So I hope so, guys, कि इन दोनों के बारे में आप तो जान गए. Now another one term we have जो बहुत ज्यादा, guys, आपके एग्जाम में पूछा जाता है. So this is associated with Gothic fiction or Gothic novel. Gothic fiction or Gothic novel, or guys, yes, you can see Gothic horror. What is there, guys, in this kind of novels? So in this kind of fiction writing, you can see dungeon, old castles, and guys, crying crows, and different kinds of animals, blood, skulls, बहुत कुछ, guys. I think you all are familiar with the what is the name of the man? John Webster. You all are familiar with John and Webster, a great playwright who introduced macabre element in English. M-A-C-A-B-R-A, guys. Macabre element के लिए जाने जाते हैं आपके John Webster, right? John Webster, known for macabre elements. And I think these Gothic novelists were greatly influenced from him. अच्छा guys, ऐसा मैं क्यों कहता हूं पता है? ऐसा मैं क्यों कहता हूं? Because guys, आप जब रोमांटिक एज के बारे में पढ़ते हैं, रोमांटिक एज, सो रोमांटिक एज, इट वाज अ रिवाइवल एंड रिवोल्ट. Revival of Elizabethan and Jacobean writing and revolt against neoclassical pattern of writing. Got it? So John Webster, he was part of Jacobean period, and he wrote plays like Duchess of Malfi, The White Devil, and there he introduced ghostly atmosphere and different kind of voices, and guys, you can simply term as macabre elements. Gothic fiction, guys. So in Gothic fictions, what you can see, these are the novels, and John Webster, so he was a playwright. So you can see kind of novel have romance, death, dark castle, zombies, vampires, werewolves, and undead, etc, guys. Yes, बहुत कुछ आपको देखने को मिलने वाला, like and it was greatly affected from Gothic architecture, guys, है ना. ये Gothic architecture से, guys, है ना, basically बहुत ज्यादा affected. And those Romans, they created Gothic architectures and all. Okay, and most of the time you will see कि किसी castle and all में इसकी setting मिलेगी ऐसे वर्क की, मतलब completely एक भूतों वाला atmosphere. ये मेरे गाइस ऊपर ये जो गर्ल देख रहे हैं ना, यस, दिस वन, यू कैन सी, ये बहुत खतरनाक गर्ल है ना. यस, इससे आप आंखें मत मिलाइए. अगर आपने इससे आंखें मिला ली ना, तो मुझे लगता है कि शायद आपकी आंखें कुछ इधर उधर हो जाए, है ना. सो हु इज नोन एज द फादर, द मेन फिगर ऑफ Gothic novel? Answer is Horace Walpole. Horace Walpole, known as the father of Gothic novel and the very, very first Gothic novel, guys. And you must also know, guys, ये जो Goth word आता है ना, G-O-T-H, Goth, है ना? Yes. ये Goth word, guys, this is associated with the tribe even. Goth. There was a tribe और बहुत ज्यादा, guys, खतरनाक tribe थी. Yes. बहुत खतरनाक tribe, है ना? Yes. So
you can see The Castle of Otranto by Horace Walpole. The Castle of Otranto, it was titled as a Gothic story. A Gothic story. है ना? Got it? A Gothic story. And that's why, guys, the pattern, the type of novels were known as Gothic novels. Got it? A Gothic story, yes. और जो लोग कह रहे हैं ना कि इससे प्यार हो जाएगा, तो मैं बता दूं ना मीना, आपको बता दूं सच में कि जो प्यार तो हो जाएगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि आपको सीधे आमंत्रण मिलेगा, आओ कभी हवेली में। और जैसे ही आप उस हवेली में गए, आगे की कहानी में अब क्या बताऊंगा, आगे वाली जो कहानी होगी वो डिफरेंट ही होगी। प्यार तो हो जाएगा देख करके इस क्यूट गर्ल को, लेकिन प्यार के बाद जो फिर होगा, आओ कभी हवेली में, और हवेली गई उड़ने लगेगी, और फिर मुझे नहीं लगता कि आप हवेली में नहीं, फिर हवा में आप नजर आएंगे। हवेली का ली चला जाएगा और हवा में आप होंगे, और फिर वहां पर ऐसे ही चिल्लाएंगे, जान ले लिया इसने, है ना। सो ली जो है वो लिया में बदल जाएगा। ठीक, यस। The Castle of Otranto by Horace Walpole. And Frankenstein, guys. Frankenstein, as I have already told, this is epistolary novel and as well as Gothic fiction by Mary Shelley. And Bleak House by Charles Dickens. There is a work by Charles Dickens known as Bleak House. है ना? And Dracula by Bram Stoker. This is also Gothic novel. Basically है ना। और ये जो ड्रैकुला गाइस, इट्स अ काइंड ऑफ बी ग्रेड स्टोरी। बी ग्रेड स्टोरी समझते हैं, बी ग्रेड कहानी है गाइस, है ना। ए ग्रेडेड नहीं है, बी एडल्ट टाइप लाइक दैट। एंड द मॉन्क, गाइस आई थिंक यू नो द मॉन्क, मैथ्यू ग्रेगरी लेविस। There was a young man, he was obsessed with, you know, different kind of, you know, you can say different kind of sexual elements and all. The Monk, Matthew Gregory Lewis, he is the writer of the work The Monk. And Mysteries of Udolpho. Okay, Mysteries of Udolpho and Radcliffe, I think, and Old English Baron. There is one more work, Old English Baron. There is one more work that is known as Gothic Fiction. So always आपको याद रखने की जरूरत होती है the name of the work and the name of the writer. Okay, because it may be the part of like matching कीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए guys, है ना? Yes. Is Gothic or Seneca is same? No, Charu Agrawal, please. No, Gothic and Seneca both are different. And how both are different? Like Seneca, so he introduced what? He introduced concept of revenge. Yeah, ghosts are also there, but concept of revenge. And that is associated with basically, you know, Seneca is associated with the plays, you must know him. And, you know, Horace Walpole is associated with Horace Walpole, associated with fiction. Okay, so there is, and you can see this one major difference between the both kinds. है ना? Yes. Basically, there was revenge. Revenge was, you know, guys, the most important thing there. हाँ, फ्रांसिस बैकन ने जरूर कहा revenge is a kind of wild justice, but William Shakespeare and Seneca and the, you know, guys, playwright like Dr. Christopher Marlowe and John Webster, they consider revenge as a pious thing, है ना? Pious means and all. So revenge is everything. Okay? Yes. Now guys, come to the next one, and this is all about historical novel. I think guys, you are quite familiar with this one, historical novel. And the father of historical novel, Sir Walter Scott. Sir Walter Scott, guys, he was a great historical novelist. And you all are familiar. Walter Scott, so he was famous for what? Walter Scott, so he was famous for something. क्या था guys जिसके लिए famous थे Walter Scott? I think that is
Waverley novels, guys. Waverley and novels. इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है. First of all, you can see father of historical novel, then you can see Waverley novels, है ना? And you all must knowing, guys, Waverley novels. Waverley is a place. Okay, Waverley is the name of place. वॉल्टर स्कॉट के जहां से नॉवेल्स आते थे, सो वेवरली इज द नेम ऑफ द प्लेस. ओके, एंड हिस्टोरिकल नॉवेल के फादर कंसीडर किए जाते हैं. एंड अदर नॉवलिस्ट एसोसिएटेड विद द सेम जॉनरा, गाइस, सो दीज आर लाइक होनरो डी बाल्जक एंड जेम्स पेनिमर कूपर एंड लियो टॉलस्टॉय एंड वन मोर, guys, yes, writer is there. Yes, Mary and Evans or George Eliot. But you can see in historical novels. Basically, in historical novels, like history plays, as history plays are there. William Shakespeare, so he wrote a number of history plays. On the same way, historical novels are. History plays associated with, guys, a kind of pattern and all, and ये जो आपके novels, so that are also associated with a pattern. Fiction pattern it is. आपके यूजीसी नेट एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, गाइस, एंड दैट वाज फ्रॉम वेयर? सो द क्वेश्चन वाज फ्रॉम जॉर्ज एलियट. द क्वेश्चन वाज फ्रॉम जॉर्ज एलियट, गाइस, एंड जॉर्ज एलियट के इस वर्क को पूछा गया था, गाइस, रोमोला. गॉट इट? रोमोला बाय जॉर्ज एलियट. दिस इज अ वर्क based on historical events, guys, and setting of the novel, you can see Renaissance time period. Setting of the novel, you can see it's Renaissance time period, guys. And one important thing, guys, all the students, देखिए मैं हर एक फ्राइडे को 7 PM अपकमिंग एवरी सिंगल फ्राइडे, जैसे इस फ्राइडे में, गाइस, मैं नॉवल कंप्लीट कर रहा हूं. On upcoming Friday, guys, on upcoming Friday मैं 7 PM ड्रामा, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा कंप्लीट करूंगा. देन फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, एंड देन, गाइस, कुछ अदर एलिमेंट्स मैं आपके लिए कंप्लीट करूंगा. एंड बिलीव मी, ऑन योर एग्जाम एट लीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यहां से. यस, एट लीस्ट 2-3 क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोइट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉवल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा. सो याद रखिएगा ये बात. This is the information, guys. Romola by George Eliot. So this is a historical novel. Leo Tolstoy's War and Peace. This is also a historical novel. And Walter Scott, Waverley series, Ivanhoe, Bride of Lammermoor. A number of historical novels are there. और यहां पर, गए, जो आपको याद रखना है ना, रोमुला में setting during Renaissance time period, Florence is the setting. फ्लोरेंस इज द सेटिंग. ये आपको याद रखने की जरूरत है. एंड क्लाउडियस बाय रॉबर्ट ग्रेव. सो दिस इज ऑल्सो अ हिस्टोरिकल नॉवल. आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, गाइस, कि आपके एग्जाम में अगर इनमें से कुछ पूछा जाता है, सो लियो टॉलस्टॉय वॉर एंड पीस, नेम इज इनफ. हिस्टोरिकल नॉवल. वॉल्टर स्कॉट के वर्क्स के नेम एटलीस्ट याद रखिए. एंड गाइस, ये वाला जो वर्क है रोमोला, सो इसका ये सेटिंग याद रखिएगा. दिस इज इंपॉर्टेंट इन दीज ऑल्स जो मैंने आपके लिए यहां पर दिए. स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस नॉवल. स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस नॉवल. सो बेसिकली द पैटर्न ऑफ राइटिंग इज एसोसिएटेड विद 20th century. And the pattern was developed by whom? So it was developed by William James. You can see the picture. William James. The pattern was developed by William James. And where? The work is Principle of Psychology. The name of the work is Principle of Psychology. Got it? And when? In the year 1890. Who was this William James? Brother of Henry James. And who was Henry James?
one of the novelist guys. Got it? One of the novelist from modern time period. Author of Portrait of a Lady. Got it? Author of the Portrait of a Lady. है ना? Yes, Henry James. A stream of consciousness is what, guys? A stream of consciousness, this is a pattern of thinking. A stream of consciousness writing allows readers to listen in on a character's thought, feeling, memories. जैसे गाइस कोई कैरेक्टर है, वो अपने थॉट्स, मेमोरीज या फिर गाइस फीलिंग्स को इन अ लीनियर वे, इन अ फ्लो वो ऐसे डिस्क्राइब करते चलता, लीनियर वे और इन अ फ्लो, मतलब ऐसे ही डिस्क्राइब करते चलेगा. यस, if you want to know the example, so then one of the best example is To the Lighthouse. To the Lighthouse by Virginia Woolf can be considered as one of the best example of stream of consciousness technique. And do not forget guys, stream of consciousness technique, it was applied by the poets too. It was applied by the poets too, and who is the poet? T.S. Eliot. T.S. Eliot. So he applied this technique. Got it? T.S. Eliot applies this one technique in his poem Love Song of J. Alfred Prufrock. जहां पर सुसाइड कर लेने का मन करता है ना गाइस, राइट? जहां पर सुसाइड कर लेने का मन करता है, लेट्स गो देन यू एंड आई, चलो हम चलते हैं. When evening is spread against the sky like a peasant upon a table. Guys, evening भाई के लिए बिल्कुल बेकार. एंड अगर आप में से देखिए कोई भी प्रूफॉक है, बाय द वे, एनी बॉय वाचिंग माय क्लास एंड यू नो हैविंग फीलिंग्स लाइक प्रूफॉक, तो प्लीज मत रखिएगा. वो आपके लिए हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है ना. यस. So this one guys, you know, pattern was applied by Dorothy Richardson and Virginia Woolf, Marcel Proust, James Joyce in Ulysses, and Virginia Woolf. I would like to show the example. Yes, you can see these are the examples. Mrs. Dalloway by Virginia Woolf. To the Lighthouse. How many parts are there guys in To the Lighthouse? To the Lighthouse by Virginia Woolf. And Beloved by Toni Morrison. Applied Beloved by Toni Morrison. So she also applied a stream of consciousness technique. In the Love Song of J. Alfred Prufrock, this is not basically a novel. This is guys a poem. है ना? This is not a novel, but a poem. But guys, in this poem, you can also see, As I Lay Dying by William Faulkner, you can see a stream of consciousness technique is there. Henry James's work, Portrait of a Lady, guys. So this work also employed the same. And one more thing, guys. Ulysses by James Joyce. Ulysses by James Joyce. है ना? James Joyce. In this one work, you can also see stream of consciousness technique is there. Keep on thinking, keep on writing. Keep on thinking and keep on writing. This is the major purpose of this kind of novel. The major purpose of this kind of novel. Got it now, guys? Yes. And proceeding to the next one type, but guys, thoda sa break. If you want to watch the class, so then guys, आप leave ना कीजिएगा class को. By the way, अगर आपका मन कर रहा हो कि नहीं अभी भागना चाहिए, थोड़ा सा मैं water लूंगा और मुझे गले को थोड़ा सा आराम देना. मैं बहुत बोल चुका हूं ना, मैं कंटिन्यूअसली 2.5 से 3 घंटा हो गया बोलता हो गया. And I'm also going to take one more class, guys. और भी ले लूं एक क्लास. सोच रहा था मैं कि आज एक कोई
पेपर सॉल्व करवा दूं आपको, प्रीवियस ईयर पेपर। मैं आपको फ्यूचर के लिए गई जितना बेस्ट प्रिपेयर कर दूंगा, यू वॉन्ट बिलीव आई थिंक। बट अगर आप मुझे फॉलो करेंगे सो आई थिंक कि मैं आपको फ्यूचर के लिए फॉर अपकमिंग एनी एग्जाम, गेट, नेट, सेट, लेक्चररशिप एग्जाम, फॉलो मी, फॉलो AKS राजवीर, एंड देन गाइज आई थिंक आपको सब कुछ मिलेगा कंटिन्यूअसली गाइज, है ना? यस। If you want to be a literature lover, so then guys follow literature lover. Yes. या धैर्य धारण करना बहुत बड़ी बात है। देखिए सबसे धैर्य धारण नहीं होता। देखिए अभी 69 थे, देखिए 65 हो गए, एंड अभी और देखना चाहते हैं आप, सो प्लीज 2 मिनट के लिए मुझे रुक जाने दीजिए। मतलब स्टूडेंट्स को इतनी जल्दी होती है कि मतलब लगता है कि अगर 2 मिनट टीचर रुक गया ना, सो व्हाई वी आर वेस्टिंग टाइम हियर, तब तक कोई और वीडियो देखेंगे, है ना? लाइक दिस। एंड 65 आर वॉचिंग, एंड गाइज लाइक आप कितने मिले हैं? तो मुझे लग रहा है लाइक तो मुझे सिर्फ 60 ही मिले हैं, वो भी 60 लाइक मैंने अभी खुद ही किया है। तो भाई ऐसी क्या बात है सर? क्या GIC और GGIC दोनों एग्जाम प्रयाग में होंगे? कृतिका शर्मा, पहली बात की GIC और GGIC 2 एग्जाम है नहीं। GIC वाला मैंने सुना है, GGIC वाला मैंने नहीं सुना अभी तक, है ना? अब GIC GGIC एक है मान लीजिए तो वही बेटर, 2 एग्जाम नहीं है, एक कंसीडर कीजिए इनको, है ना? यस। फी बहुत ज्यादा है कोर्स की, या सोमवती चामुली, मे बी लिटरेचर इज मिरर ऑफ सोसाइटी, हम नहीं जाएंगे। हाँ गाइस चलते। अरे मेरा एक्सपीरियंस है, टीचर जैसे ही रुकता है ना, स्टूडेंट्स वैसे ही भागते। टीचर रुका, स्टूडेंट्स भाग गए, टीचर रुका, स्टूडेंट्स भाग गए, है ना? और देखिए अभी अभी 75 लाइक तो हो गए, बट गाइज किसी ने अनलाइक भी मार दिया इन बिटवीन गाइज। उसको उसका मन नहीं माना होगा किसी का, अरे यार सोचा होगा अनलाइक मारो, है ना? सो देखिए ऐसा होता रहता है, लाइफ है, लाइफ में सब टाइप के लोग मिलेंगे। किसी को गाइज सेशन पसंद आएगा, कोई बोलेगा यू आर डूइंग बकवास। पता है क्यों ऐसा बोलते हैं गाइज? क्योंकि यहाँ पर पे नहीं करना पड़ता ना, इट्स फ्री प्लेटफॉर्म। सो फ्री प्लेटफॉर्म पर बोल देंगे कि बकवास कर रहे हैं सर, लाइक दिस। कई बार मैं देखता हूं, थोड़ा ये मेरा एक्सपीरियंस है। और बहुत सारे लोग अभी टीचर्स, ये जो टीचर्स डे आ रहा है 5 सितंबर, है ना गाइस? सो टीचर्स डे पर इतनी बढ़िया बढ़िया हैट्स डेडिकेट की स्टूडेंट्स ने, रियली गाइस ऑसम हैट्स दे रोट, ऑसम एक्सपीरियंस, वी आर लर्निंग, सो वी आर गेटिंग नॉलेज, एंड एवरी डे बाय डे एंड नाइट गाइस, है ना? यस, बाय डे एंड नाइट। सो बस समझ लीजिए दे आर डूइंग देयर जॉब, बहुत अच्छा लर्न भी कर रहे हैं। सो टीचर्स डे पर इवन मैं गाइज आज शेयर करूंगा, बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक एंड ऑल मिले मुझे, दैट्स ग्रेट। नाउ गाइज गोइंग टू टॉक ऑल अबाउट साइंस फिक्शन नॉवेल्स। अच्छा ये भी गाइज आपके एग्जाम में पूछा जाता है, साइंस फिक्शन नॉवेल्स, एंड व्हाट आर गाइज साइंस फिक्शन नॉवेल्स, इनको हम क्या बोलेंगे साइंस फिक्शन नॉवेल्स को? सो बेसिकली आई थिंक कि हम साइंस फिक्शन नॉवेल में भी बहुत कुछ हम लोगों को गाइज लर्न करने का मौका मिलता है, साइंस फिक्शन नॉवेल्स में भी गाइज, है ना? यस, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जो फ्रैंकेनस्टाइन है, सो इट इज कंसीडर्ड एज द वेरी फर्स्ट साइंस फिक्शन वर्क गाइज, गॉट इट? वेरी फर्स्ट साइंस फिक्शन वर्क ऐसा कंसीडर किया जाता है, बट आई डोंट कंसीडर गाइस कि साइंस फिक्शन से एसोसिएटेड है, बट देयर आर अ नंबर ऑफ, एंड साइंस फिक्शन, दिस इज अ काइंड ऑफ न्यू जॉनरा गाइस, है ना? एंड दैट इज बेसिकली इट इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मॉडर्न टाइम पीरियड, मीन्स
19th एंड 20th सेंचुरी में से इंट्रोड्यूस किया. मोस्ट क्रिएटिव राइटिंग जॉनरा इन इंग्लिश लिटरेचर एंड साई-फाई गाइस. जैसे आपने देखा होगा ना साई-फाई टाइप मूवीज लाइक साइंस फिक्शन. ओके, साइंस फिक्शन, साई-फाई, इसी को इसीलिए शॉर्ट में बोला जाता है. यस, नॉवेल्स. And in this kind of novels, what you can see? Adventures. Adventure of galaxies, of the other planets, under the earth, underground. Adventure, guys, on different places. Yes. So you can see galaxies, underwater worlds, showing otherworldly characters like aliens and all. है ना? मूवीज आप देखिए गाइस, एलियंस हैविंग 4 हैंड, एलियंस गाइस हैविंग 4 हैंड, 3 आईज. लाइक जैसे हमारे पास गाइस 2 आंखें, उनके पास 3 आईज, एक यहां पर आंख होगी. यस. एंड हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ शेप. जैसे हम लोग का एक बॉडी शेप है, सो एलियंस हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ, समटाइम गाइस यू नो द डर्टी वन शेप, बहुत ज्यादा गाइस यू नो हॉरिबल शेप लगता है. एंड आई हैव वॉच्ड अ मूवी गाइस, और उस मूवी में जैसे यू नो जैसे पेड़ होते हैं ना, जैसे यू नो गाइड वुड, लकड़ी, सो उस टाइप के कैरेक्टर्स मैंने देखे. वाओ, ऑसम. लाइक या अवतार मूवी. सो दैट इज, सो साइंस फिक्शन novels are associated with this kind of subject, and basic components are time travel, space travel, mind control. Mind control guys, एक मूवी है माइंड कंट्रोल पर, लूसी मूवी इज देयर ऑन माइंड कंट्रोल. एंड डायनासोर्स गाइस, है ना, डायनासोर्स वाली मूवीज आपने देखी होंगी. यस, डायनासोर्स वाली, है ना गाइस. यस. एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एलियंस, लाइक एलियंस कमिंग फ्रॉम अदर प्लैनेट्स, alien they coming from other planets and all guys. Yes, so this kind of writing fiction can be categorized under science fiction. The kind of writing that can be categorized under science fiction. Okay, and guys you can see like there is a work by Francis Bacon. This can be also considered as production of science fiction and as well as a utopian work guys. देखिए अभी दो टाइप के और जॉनरा है गाइस. एक है यूटोपियन, UTOPIAN, यूटोपियन, एंड DYSTOPIAN, डिस्टोपियन गाइस, है ना. सो एक वर्क को प्लीज याद रखिएगा. देखिए कोई भी वर्क, अ सिंगल वर्क, लाइक जैसे पामेला को मैंने बताया गाइस, सॉरी पामेला नहीं, मैंने फ्रैंकेनस्टाइन बताया, फ्रैंकेनस्टाइन. सो उसके देखिए 3 टाइप का गाइस पैटर्न. इट्स अ साइंस फिक्शन, इट्स अ गोथिक नॉवल, इट्स एन एपिफ्लरी नॉवल. सो देयर आर गाइस यू नो 3 टाइप्स जिनकी कैटेगरी में हम उसे पुट कर सकते हैं. ऑन द सेम वे साइंस फिक्शन जो वर्क है गाइस, सो दैट कैन बी ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2, यूटोपियन एंड डिस्टोपियन टाइप गाइस, है ना. लाइक ब्रेव न्यू वर्ल्ड, दिस इज ऑल्सो साइंस फिक्शन वर्क. Journey to the Center of the Earth by Jules Verne. This is also a science fiction work. War of the World by H.G. Wells. Dystopian work. है ना? So, yes. और मैं आपको दोस्तों बता दूं, my all the loving students, those who are watching me right now, याद रखिएगा गाइस, डिस्टोपियन वर्क और यूटोपियन वर्क को लेकर के आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं गाइस रिगार्डिंग यूटोपियन एंड डिस्टोपियन वर्क गाइस. आई एम टेलिंग यू लाइक यूटोपियन वर्क गाइस, जैसे यूटोपिया. सो लाइक यूटोपिया में गाइस 2-3 एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं. जैसे टॉमस मूर गाइस, यूटोपियन, UTOPIAN. यूटोपियन मीन्स गाइस राम राज्य, एवरीथिंग इज गुड, where everything is good. And dystopian, जहां पर गाइस सब कुछ बेकार, सब कुछ बेकार है, everything गाइस. एंड एक और गाइस आपको कैटेगरी देखने को मिलती है. एक तो यूटोपियन हो गया, एक हो गया डिस्टोपियन, DYSTOPIAN, डिस्टोपियन. ओके, यस. एंड डिस्टोपियन के बाद गाइस मैं आपको बता दूं प्लीज कि डिस्टोपियन के साथ साथ एक चीज और आपको देखने को मिलती है. एंड व्हाट इज दैट? यूटोपियन, डिस्टोपियन, एपोकैलिप्स, है ना गाइस. एपोकैलिप्स आपने सुना होगा. एक तो हो गया यूटोपियन,
एक हो गया DYSTOPIAN, है ना, एंड वन अनदर वन इज गाइस एपोकैलिप्टिक नोवेल। सुना आपने? आई थिंक गाइस आपने सुना होगा। यूटोपियन अंडर द कैटेगरी गाइस यूटोपियन, तो देखिए मैं नाम लिख दूंगा, जैसे यूटोपियन वर्क गाइस प्लेटो का है, रिपब्लिक, प्लेटोज रिपब्लिक, एंड फ्रांसिस बैकन्स न्यू एटलांटिस, न्यू NEW, न्यू एटलांटिस गाइस, ATLANTIS, न्यू एटलांटिस बाय बैकन, फ्रांसिस बैकन आई मीन। एंड वन मोर वर्क इज ऑल्सो देयर गाइस, और इसका नाम है क्या, सो यस रिपब्लिक एंड यूटोपिया गाइस, टॉमस मूर, UTOPIA, यूटोपिया बाय मूर, MOORE गाइस, बाय टॉमस मूर। सो दीज आर द वर्क्स, गॉट इट। सो ये तो बेसिकली आपकी यूटोपियन वर्क हो गया। डिस्टोपियन वर्क गाइस, सो डिस्टोपियन वर्क, व्हाट यू कैन सी ऑन डिस्टोपियन वर्क, सो डिस्टोपियन वर्क्स आप एक चीज आपको देखने को मिलता है गाइस, है ना, यस। सो इन डिस्टोपियन वर्क्स द वर्ड वेयर एवरीथिंग इज नॉट गुड एट ऑल। जैसे आपको गाइस एक एग्जांपल दूंगा मैं, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइट्स, आई थिंक आपने सुना होगा, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइट्स, Lord of the Flies by whom? So Lord of the Flies is basically by William Golding, Lord of the Flies. So this is a dystopian work. Brave New World guys, है ना, Brave New World, Brave New World, this is also dystopian work. I think guys एक और वर्क है 1984, where you can see guys imagination about past and all. So 1984 is also associated with this one, and apocalyptic novels are associated with the destruction of the world, है ना, destruction of the world, जहां पर completely पूरी दुनिया तबाह होती, खत्म होती दिखाई देती है guys, but apocalyptic. So एक guys जैसे कि एक अफवाह उड़ी थी ना 2012, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद होगा, ड्यूरिंग द ईयर 2012, सो 2012 में क्या हुआ था, न्यूज पेपर, न्यूज सब जगह गाइस, एवरीवेयर, दुनिया खत्म होने वाली है पूरा गाइस। 2012 की बात मैं कर रहा हूं गाइस, यस, एट दैट टाइम आई वाज इन आई थिंक BA सेकेंड ईयर गाइस, आई वाज स्टूडेंट ऑफ BA सेकेंड ईयर, and people, so what guys people were thinking, दुनिया खत्म होने वाली है guys, and जाने कितने सारे references आते थे guys, like Maya civilization, this is that is. So in Maya civilization guys 2012 there was a stone, and on that stone it was written guys 2012. so लोगों का मानना था कि माया सिविलाइजेशन वालों ने 2012 को लास्ट ईयर कंसीडर कर लिया है guys, है ना, माया सिविलाइजेशन। एंड गाइज 2012 उस दिन, जिस दिन की बात चल रही थी, सो गाइज व्हाट हैपेंड, उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हुई, December 31 की बात है, December 31 की बात है गाइज, बहुत बारिश हुई है ना, यस, बहुत ज्यादा बारिश हुई, और बहुत ज्यादा बारिश होने का कारण वो गाइज रिजल्ट क्या था, सो बस आप समझ लीजिए कि रिजल्ट सिंपल था। लोग सोच रहे थे कि भाई अब बाढ़ आ जाएगी, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लाइक दिस लाइक दैट, एंड फाइनली पीपल्स दे वर सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर गाइज, है ना, यस, न्यू ईयर पीपल वर सेलिब्रेटिंग। सो व्हाट इज दिस एपोकैलिप्टिक जो नॉवेल्स होते हैं, टॉकिंग अबाउट द एंडिंग ऑफ द सिविलाइजेशन, कि वर्ल्ड जो है वो एंड होने वाला है। किसको किसको याद है 2012, याद है किसी को? सो दीज आर द कैटेगरी गाइज, एंड मेरा एक रिक्वेस्ट भी है टू ऑल द लर्नर्स, प्लीज डू रिमेंबर वन थिंग गाइज, प्लीज डू रिमेंबर वन थिंग, एंड व्हाट इज दैट, देखिए यूटोपियन नॉवेल की एक सीरीज वो बना लीजिएगा, लिस्ट यूटोपियन, एंड अनदर वन डिस्टोपियन, DYSTOPIAN, डिस्टोपियन नॉवेल्स, ओके, यस, डिस्टोपियन,
So utopian and dystopian guys make a list of both kind of novels. अगर यूटोपियन ना बने तो चलेगा, बट डिस्टोपियन इज मोस्ट 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 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, आई एम टेलिंग. नाउ गाइस, अब हम आज गए हैं एक और टर्म पर, एक और गाइस टाइप ऑफ नॉवल, एंड दिस इज Bildungsroman guys. Bildungsroman, what is this? So Bildungsroman हम डेवलपमेंटरी नॉवल भी बोलते हैं गाइस Bildungsroman को. ठीक है, प्लीज. Bildungsroman is also known as डेवलपमेंटरी नॉवल गाइस. मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूं, इसके लेटर्स को, सो दैट कि स्टूडेंट्स बहुत ही इजीली देख पाए, क्योंकि मैंने थोड़ा छोटा फॉन्ट रखा है. यस, Bildungsroman आई मीन डेवलपमेंटरी नॉवल, है ना. कमिंग ऑफ एज नॉवल एक और नाम है इसका, DEVELOP एंड MENTARY, डेवलपमेंटरी और कमिंग ऑफ एज गाइस, है ना. ये these are the types. What you can see guys. So सबसे पहले मैं Bildungsroman वर्ड के बारे में आपको बताऊंगा. Bildungsroman, the term came from German, guys, from German language. देखिए एक चीज याद रखिएगा guys, Bildungsroman from German. Okay, yes. Another one you can see Gothic guys. So Gothic fiction basically associated with Goths, a tribe. Then picaresque guys, this one came from where? It came from Spanish word. And you can see guys, epistolary novel, it came from Greek word. So देखिए इनका ओरिजिन भी याद करने की जरूरत होती है. आई एम टेलिंग यू. अभी मैं गाइज आपको बहुत कुछ इंट्रोड्यूस करूंगा, इनमें ओरिजिन भी इनका जानना बहुत जरूरी है. एंड गाइज, Bildungsroman, डेवलपमेंटरी नॉवल, कमिंग ऑफ एज नॉवल और EDUCATION एजुकेशन नॉवल गाइस. Bildungsroman, कमिंग ऑफ एज नॉवल, डेवलपमेंटरी नॉवल और एजुकेशन नॉवल, ये सब कुछ गाइज सेम है, बस ये याद रखिएगा. एवरीथिंग गाइज, ये सब कुछ बस सेम ही समझ लीजिए इसे. यस, एवरीथिंग गाइज एक ही है. What you can see in Bildungsroman, so development guys. जैसे यहां पर देखिए एक छोटा सा बेबी है, फिर और बड़ा हुआ गाइज. ये वाला तो सबसे क्यूट लगता है मुझे. आई डोंट नो कि आपको कितना क्यूट लगता है, बट गाइज क्यूटनेस ओवरलोडेड अकॉर्डिंग टू मी यहां पर गाइज. एंड देन सी दिस वन बेबी, थोड़ा सा खड़ा हो गया बेचारा. एंड नाउ यू कैन सी, यस, एंड नाउ गाइज, एंड देन फाइनल स्टेज, है ना. हाँ, but you must remember one thing. Bildungsroman is a developmentary novel, but it never claim कि गाइज बचपन से लेकर के डेथ तक दिखाया जाएगा. नेवर. ओके गाइज, यस, नेवर. ये जो नॉवल है गाइज, ये नॉवल कभी ये क्लेम नहीं करता कि बचपन से लेकर के गाइज फ्रॉम चाइल्डहुड टिल ओल्ड एज और टिल डेथ, ये शो करेगा गाइज, ये कभी क्लेम नहीं करता है नॉवल. यू मस्ट रिमेंबर. टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट मींस गाइज कि छोटे से बड़ा होता कैरेक्टर आपको दिखेगा. मेच्योरिटी गाइज, फ्रॉम चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी, ऐसा मैं कह सकता हूं, फ्रॉम चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी. बट नेवर गाइज ये क्लेम नहीं कि टिल डेथ कभी. एंड बेसिकली गाइज जर्मन वर्ड है ये Bildungsroman. Bildung means education and Roma means novel. Bildung means education and Roma means novel. Coming of age novel. Growth of protagonist is important from youth or childhood to adulthood. Okay? Yes. And you can see guys, the term was coined by Karl Morgenstern. He coined the term, yes, he coined the term basically Bildung. Example.
बहुत सारे गाइस वर्क हैं जहां पर आपको बिल्डुंग रोमा देखने को मिले। द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, फाउंडलिंग बाय हेनरी फील्डिंग, कैंडिड बाय वॉल्टेयर, and Wilhelm Meister's apprenticeship by John Wolfgang Goethe, or David Copperfield by Charles Dickens, Kim by Rudyard Kipling, and Sons and Lovers by T.H. Lawrence. These all are the example of Bildungsroman. These all are the example of development of the main character, the lead character, or you can see protagonist. David Copperfield, guys. This is one of the best work. I think you all are familiar with David Copperfield. In David Copperfield, you can see the birth of David. David takes place, and birth of David. His father was died. Then birth of David, and David's mother got married with someone else, Mr. Murdstone, a cruel man who used to beat David. Okay. Then later on you can see admission of David in a boarding school, meeting with his friends and friendship guys, and developing relationship with his own guys maid के साथ काफी अच्छे relationship develop हो जाते हैं David के. Okay, Pagety and visiting of the place, then fall in love with the girl. Okay guys, yes, a number of things you can see. Later on guys, David, so he developed from childhood to maturity. And guys, his education, everything guys, these all things can be seen in David Copperfield. And this is what the development from childhood to maturity. From childhood to maturity, this can be seen. Kim by Rudyard Kipling, guys. Kim by Rudyard Kipling. So there is a boy. The name of the boy is Kim. And Kim, guys, so development of his mind, you can see. Guys. Why you like Copperfield? Let's do it. Why you like Copperfield? Hey, guys. Sure, in childhood cuteness. Okay. Like David Copperfield by David Copperfield. What you can't understand, Preeti, do write it clearly on comment box. कि क्या आपको समझ में नहीं आया, guys? Yes. To the lighthouse भी क्या बिल्डुंग रोमा का एग्जाम्पल है. बेसिकली into the lighthouse you can't see the development. Basically you can see the narration of the story. You can see the narration of the story is there. Okay, yes, but आपने ये नहीं देखा कि जो फैमिली है रैमजे फैमिली, सो क्या रैमजे फैमिली में उसमें से किसी कैरेक्टर के माइंड एजुकेशन का डेवलपमेंट दिखाया गया है? आंसर इज नो. गॉट इट? आंसर इज नो. आंसर इज नो. Like there is a work by guys, there is a work by George Eliot. The name of the work is Mill on the Floss. Mill on the Floss. Mill on the Floss, guys. This is the work by George Eliot, and Tom and Maggie Tulliver are there, guys, है ना? Yes. But guys, this is considered as a kind of realistic novel, है ना? Yes. Got it, guys? So, Mill on the Floss. In this one work, you can see two characters, brother and sisters are there. As you can see, guys, Bildung means education and Roma means novel. Developmentary novel, novel of education, or it is known as developmentary novel. Basically, developmentary word is associated with the development of mind, education, the background, and guys, growing of the child. जो चाइल्ड है या कोई मेच्योर मैन है, सो गाइस उसकी एज का ग्रो करना और उसके साथ एक्सपीरियंसेस को दिखाया जाता है. दैट इज
basically Bildungsroman. A number of examples are there, and as I have already told कि एक novel में कई सारी categories हो सकती हैं. A number of categories. ये possible है guys कि बहुत सारी categories हो सकती है. And now guys, we have 10 minutes, and within 10 minutes I would like to ask all the students, क्योंकि बहुत सारे आपके doubts रहे हैं. First of all, anybody, if you have doubts on epistolary novel, drop your doubts on comment box, guys. Within 10 minutes, I'm going to answer each and every single question. अगर आप कुछ पूछते हैं, epistolary novel, do you have any kind of question, query? If you have, so then ask to me guys. I will try my best कि मैं आंसर कर पाऊं आपको. If possible, so then you can ask guys. And अगर नहीं है कोई query, so please do write कि no query guys. Yeah, आप write कीजिए जल्दी से. Yes, no doubt or no queries, whatever. If you have no doubts, then all clear. Yeah, let's do it again. Sure, why not? But please wait. मैं one by one आपसे पूछूं. In epistolary novel, I think no doubt. Everything is crystal clear ना? Okay, that's really great. I'm so happy कि आपको सब कुछ clear. And because guys देखिए doubts बहुत ज़्यादा raise होते हैं, so that's why मैंने एक doubt के लिए कुछ रखा है आपके लिए. We have picaresque novel guys. If you have any doubt regarding picaresque novel, so then you all are most welcome. You can ask what is picaresque novel, and do not forget to like the session and share the link of the session on your WhatsApp status, because this is really a wonderful class for all the aspirants, all the students guys. बहुत कुछ learn करने को मिला होगा आज की क्लास में. Yes, no doubt. Okay, picaresque novel is also clear, so I hope so guys. That's why next one, Gothic fiction, do you have any kind of doubt? Yes. If you have any doubt in Gothic fiction or Gothic novel or tale of horror and terror, so then you can ask guys. By the way, if you have, so then go for it. मजा आ रहा होगा guys, है ना? Keep on learning always. और मैं भी बहुत मजे की जिंदगी जी रहा हूँ. अच्छा लगता है. वैसे मुझे पढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता है. And इतना अच्छा लगता है कि बिल्कुल मैं बिल्कुल पढ़ाते पढ़ाते खुश हो जाता हूँ. Historical novel guys, I think no doubts. Historical associated with history guys. Yes. And now the next one we have, so this is stream of consciousness. Okay, अभी recently मुझसे पूछा है stream of consciousness technique के बारे में. Yes sir, I joined late. Please let me know whether I can get the video downloaded from. Yeah, you can watch recording any time guys. ये जिंदगी भर available रहेगा ये वीडियो. Any time you can watch. Yes, stream of consciousness technique. Basically stream of consciousness is what? जैसे कि आप बैठे हुए हैं, है ना? Yes. अब समझ लीजिए कि जैसे आप बैठे हैं और बैठे बैठे क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं. जैसे प्रूफॉक का एग्जांपल लीजिए. प्रूफॉक एक मिरर के सामने मान लीजिए खड़ा है, in front of mirror. And Prufok is asking, let's go then you and I. चलो यार अब हम चलते. Like you know, जैसे कि गाइस कोई पागल हो वो शीशे मतलब you know मिरर के सामने खड़ा होकर के कह रहा है अरे यार चलो चलते हैं. Like this. Let's go then you and I when evening is spread out against the sky like a patient upon a table and all. Let's go through the street, through those streets. Those are you know half deserted streets. And then finally in the room woman comes and go talking about Michelangelo, right? Then he is thinking कि उसकी सहेलियां कह सकती हैं oh my god वो bald हो चुका है, like that. This is what guys, ये ऐसा कौन करता है? मतलब कोई सोच ही रहा होगा ना जब कुछ हो ही नहीं रहा है. Directly guys he is thinking. It's a kind of monologue. Okay. Another one example. Like you have to the lighthouse. Into the lighthouse, what you can see? Into the lighthouse, you can see expression of Virginia Woolf
एंड इट्स गाइज अ फ्लो ऑफ थॉट्स, फ्लो, जो भी मन करे सोचते चले जा रहे, फ्लो फ्लो गाइज, यस, फ्लो चल रहा। लाइक इतने ईयर पास हो गए, सी वॉज पेंटिंग, सी वॉज स्टैंडिंग ऑन द विंडो, ओके, वॉचिंग दिस वन, वॉचिंग दैट वन, 5 years ago ही वॉज डाइड, ओके, बट मतलब यू नो कि वहां पर आइडियाज चलते, फ्लो। जैसे हम लोग सोचते कि यार जब मैं बीए में था तो उस समय बहुत अच्छा लगता था, मतलब कोई बर्डन नहीं होता था, हमारी जिंदगी बहुत अच्छी थी। लेकिन हाँ यार, एक प्रॉब्लम होती थी, पैसे कम होते थे। हाँ, लेकिन एक बार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, मुझे 10,000 रुपीज स्कॉलरशिप मिली एंड देन फाइनली आई डिड वॉट एवर आई वॉन्ट। फिर गाइज आपने शिफ्ट कर दिया, अच्छा यार एक लड़की भी तो थी मेरे साथ पढ़ती थी, बहुत अच्छी थी गाइज, है ना, यस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, writing allows reader to listen it on a character's thoughts, feelings, memories. These were the thoughts, these were the feelings, these were the memories. जो मैंने अभी अभी सोच करके आपको बताया, these are thoughts, feelings and memories ना, I'm sharing with you, yes, I'm sharing with you, this is what you can see, and this is one of the wonderful example guys, full of thoughts and emotions and all, right guys, है ना। तो चीजों को हम एम्फेसिस करते हैं, फोकस करते हैं। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे हम लीनियर वे में सोचते हैं, और जब ऐसे लीनियर वे में आप यू नो गाइस, व्हेनेवर यू आर थिंकिंग इन अ लीनियर वे एंड राइटिंग डाउन व्हाटएवर यू आर थिंकिंग, यस दिस हैपेंड, दैट हैपेंड, है ना, यस। लाइक यूलिसिस देखिए, यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस। So in Ulysses guys, James Joyce what is doing, जो भी उसका मन करता है, ये स्टोरी वो स्टोरी, यहां चला गया वहां चला गया, वहां से डायरेक्टली यहां गया, यू नो गाइस, फ्लो ऑफ थॉट्स। आप क्लास में मेरी बैठे, मे बी कि आपका किसी का माइंड काम कर रहा है, अरे सर जी जल्दी से क्लास एंड कीजिए, मुझे खाना खाना है, लाइक दिस, है ना। सो माइंड आपका कुछ और होगा, सामने कुछ और है। सो गाइस यू नो, थॉट्स जो होते हैं उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, वी आर कॉन्शियसनेस, but in stream we are thinking, in linear way we are thinking। ऐसा ही होता है जब आप एक सीरीज, एक थॉट को सोचते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ लेता है, जैसे आपको कोई बताता है ना कि यार आज मैं मतलब मेरा मोबाइल जो है वो चोरी होते बच गया कहीं से ना, यस, कुछ स्नैचर्स थे वो मेरा मोबाइल छीन ले जाते। तो सामने वाला भी अपना एक इंसिडेंट लाइफ का बता देता है, दूसरा भी बताएगा, तीसरा भी, मे बी कि आपके साथ पहले कभी और हुआ हो, पास्ट एक्सपीरियंस, सो यू मे शेयर, ओके। सो व्हाट आई मीन गाइस कि हम फ्लो में बहने लगते हैं, फिर फ्लो चलता है यहां पर, यस। एंड देन गाइड साइंस फिक्शन, आई होप सो गाइड साइंस फिक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यू कैन सी डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न इज देयर इन साइंस फिक्शन, यस, clear, and in science fiction you can see different pattern, and then Bildungsroman, जिसको मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। Bildungsroman guys, novel of education or work of education. It's basically the term came from basically you know guys German word, so ये आपको याद रखने की बहुत जरूरत है guys, yes। और ये इवन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, Bildungsroman, the word, this one word came, लाइक जैसे गाइज आपका नोवेला वर्ड है, नॉवल, सो नॉवल जो वर्ड है ये नोवेला से आया है, NOVELLA। एंड व्हाट डज नोवेला मीन, एंड नोवेला किस लैंग्वेज का वर्ड है, ये देखिए, ये भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपके एग्जाम में एक वर्ड आया था गाइज, लाइक ट्रेजेडी, TRAGEDY, ट्रेजेडी। सो ट्रेजेडी केम फ्रॉम ट्रैगोडोइया गाइज, DOIEA, ऐसे ही है गाइज, यस, ट्रैगोडोइया वर्ड से आया है ना। कॉमेडी गाइज, है ना, यस, कॉमेडी। सो ऐसे आपके लिए यू नो एग्जाम में पूछा जाता है ऑलवेज, कॉमेडी केम फ्रॉम विच वन वर्ड, सो ऐसे करके, एंड ओरिजिन ऑफ, सो ये पूछा जाता रहता है आपके एग्जाम में। And with this note, I'm going to say guys something else, means आपको good night बोलने वाला हूं मैं। But one thing guys, you must remember, if you all are any one of you are interested in my courses, so they can join my classes. Next day guys मैं अपनी क्लास लूंगा 8 PM
8 PM ऑन Unacademy द लर्नर ऐप। ओके, 8 PM आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट डे, और मैं कुछ अच्छा सेशन लेकर के आऊंगा, जबरदस्त रिवीजन वाला। गाइज मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, रियली, है ना? यस। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड गाइज, सो देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई पेड कोर्सेज। क्रैश कोर्स भी चल रहा है हमारा, एंड यूपीएचईएससी कोर्सेज ऑल्सो देयर। फ्लैशबैक, देखिए फ्लैशबैक का मतलब होता है कि जो बैक में ही सोचता रहता है, लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबको देखा जाता है, कुछ भी सोचना हो सकता है ना, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द फ्लैशबैक एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। एंड डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई कोड AKSRajveer। गाइस PYQ ये भी आ चुके हैं, PYP, है ना? यस, प्रीवियस ईयर पेपर्स गाइस, सो ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड यस, चैंपियनशिप टेस्ट भी गाइज आ चुका है आपका, सो चैंपियनशिप टेस्ट भी आप दे सकते हैं बहुत अच्छे से। एंड आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड गाइज ऑल द PYP। जल्दी इंग्लिश सब्जेक्ट का भी गाइज PYP आने वाला है, आपको हर एक सब्जेक्ट में PYP मिलेगा। यस, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में गाइज मिलेगा, ठीक है? यस, आई एम टेलिंग यू। ओके, सो से थैंक यू गाइज, थैंक यू फाइनली, एंड गुड नाइट मैं बोलूंगा आप सभी को, और आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिए। एंड गुड नाइट, एंड लेट्स क्रैक इट विद AKSRajveer एंड विद Unacademy। ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन डूइंग गुड जॉब। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड गाइड, सो देन प्लीज देखिए, जो भी आपके लिटरेचर से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम्स आते हैं उनको अप्लाई कर दिया करें। क्वालिफिकेशन जिंदगी में जरूरी रहती है, लाइक सेट एग्जाम जैसे आपके होते हैं, सो सेट के लिए भी अप्लाई किया करें। लाइक इफ यू आर एलिजिबल फॉर एनी गाइज एग्जाम, लाइक जैसे कोई कॉलेज लेक्चरर एग्जाम एंड ऑल होता है, जैसे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं गाइज, तो गेट एग्जाम भी अभी होने वाला है, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड माय क्लासेस आर इनफ, मोर देन इनफ गाइज, आई एम टेलिंग यू कि बहुत कुछ आपको मिलेगा। एंड 1 लाइक एंड 1 शेयर गाइज, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इस वीडियो को लगा सकते हैं, और जल्दी ही गाइज मैं आपसे मिलूंगा। एंड हु आर दीज टू गाइज, ओनली 6 लाइक्स रिमेनिंग है, जो अगर आपने लाइक कर दिया सो 100 लाइक हो जाएंगे बेसिकली। एंड ये 2 अनलाइक वाले मेरी क्लास में आए थे, बट आई थिंक दोज गॉन। ठीक है गाइज, अरे 94 के सामने 2 की क्या हिम्मत, कुछ भी नहीं होता गाइज, है ना? यस, सो प्लीज लाइक द सेशन एंड थैंक यू, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और मैं कुछ कहूँ, अब वैसे मेरा और कुछ कहने का मन नहीं है, मैं सिर्फ अब ये टाइम खत्म कर रहा हूँ, बिकॉज गाइज ये क्लास ना 1.5 आवर यानी 1.5 आवर की क्लास थी, और 1 सो लिटरेरी क्रिटिसिज्म कब डिस्कस होगा? हरा प्रिया, आई एम ऑलरेडी टेकिंग अ नंबर ऑफ क्लासेस। लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑन पेड कोर्सेज इज रनिंग ऑन। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड राजवीर लाइव, सो वहां पर लिटरेरी क्रिटिसिज्म चल रहा है ना? सो आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। ओके, चलिए, सो थैंक यू, बाय, टेक केयर। अगले फ्राइडे गाइज Unacademy लाइव NTA UGC नेट पर मेरी और आपकी मुलाकात होगी, अगले फ्राइडे यहां पर। चले, ओके, सो बाय एंड टेक केयर, और ज्यादा सोचने की कुछ जरूरत नहीं है। गुड नाइट गाइज।